नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे ओडिसी सीजन 1 के कप में। और यहाँ पे होने वाला सेमीफाइनल जो है बहुत ही खतरनाक, दो टीम के बीच। एक तरफ यहाँ पे रहेंगी फीनिक्स ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम जेपलिंग। तो इन्हीं के साथ ये जो टीम है बहुत ही खतरनाक तरीके से गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा। और ये जो दोनों टीम है आपस में लड़ते हुए दिखेगी। मैं हूँ आपका कास्टर शिनरा और मेरे साथ है को कास्टर आपके सभी के चहीते सन्नी जी। तो सन्नी भाई, क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया शिनरा जी। और इस जो क्वार्टर फाइनल्स है ना, ये बेस्ट ऑफ 3 होने वाला है यहाँ पे। एंड जो दोनों टीम्स है पूरे वीक लड़ के यहाँ तक पहुंची है। एंड देखेंगे कैसा प्रदर्शन करती है दोनों टीम्स यहाँ पे, क्योंकि टीम जेपलिन तो टॉस जीत चुकी है। इन्होंने सर्वर मुंबई चुना है एंड फर्स्ट पिक भी चुना है। तो देखते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। स्ट्रेटेजी की अगर आपने बात करी है, यहाँ पे देखना तो पड़ेगा क्या वो जाएंगे सीधा आइल ऑफ टैंक चूज करने को हमें देखने को मिलेगा पहले, या फिर देखने को मिलेगा हैरिथ। क्या वो बनाना चाहेंगे गोल्ड लाइन पे जो है, गोल्ड लेन पे वहां पे अपना दबदबा, या फिर जाना चाहेंगे अच्छे हाइपर के साथ? देखना पड़ेगा कौन मारेगा यहाँ पे बाजी, क्योंकि ये जो मैच होने वाला है ओडीसी कप में। और आप देख रहे हैं अभी इस समय मोबाइल लेजेंड्स 5v5 और बेहतरीन टूर्नामेंट का ही मजा चाहिए दर्शकों को। कुछ ही देर में हम लोग जाएंगे सिर्फ जो है ड्राफ्टिंग फेज की तरफ। बेशक शिनरा, अभी प्लेयर्स लॉबी में आ ही रहे हैं। एंड 8 टीम मेंबर जो है जेपलिन का अभी तक आया नहीं, इनको बुलाया गया है। एंड देखते हैं वो तब तक आता है। जी हाँ, जब तक वो आएंगे तब तक आपसे जानना चाहेंगे सनी, आप जो है यहाँ पे काफी दिन से देख रहे होंगे इन सभी टीमों का गेम प्ले आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कि जेपलिन का जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे फीनिक्स स्पोर्ट्स है उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट या फिर उनका स्ट्रॉन्ग गेम प्ले किस तरफ है? जो फीनिक्स ईस्पोर्ट्स है, जो इनका माइक्रो है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। लाइक वो जो सेट्स बनाते हैं, वो जो मैंने देखा है लास्ट 1-2 मैचेस में, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। जो टीम जेपलिन है वो अपना ड्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखती थी। लास्ट मैच में इन्होंने अपना ड्राफ्ट पूरा का पूरा मॉस्को के ऊपर बनाया था। इन्होंने वहाँ पे फोबियस को भी बैन किया गया था, वहाँ पे क्या तो भी बैन किया गया था। एंड देन मॉस्को फोर्थ पे उठाया था, एंड उस मॉस्को ने किया भी, समझ लो कैरी भी किया। एंड बेस चुरा के कैरी किया। लाइक टॉप लेन पुश करते रहे और निकाला बेस, अपनी टीम को वो जीत दिलाई। तो इनका जो है माइग्रो काफी अच्छा रहेगा, देखने वाला रहेगा इस मैच में किस तरह से माइग्रो का जो है प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। लेकिन उसी के साथ जो मेरे ख्याल से उनके जो है आखिरी मेंबर का भी आगमन होता हुआ, और अभी जो है सारे मेंबर जो है लॉबी में आ गए हैं। और दर्शकों से भी बिना कोई वेट कराए आप सब दर्शकों नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम आपको लगता है यहाँ पे विजेता रहेगी, कौन सी टीम का जो पड़ला है वो भारी रहेगा। तब तक अपने दर्शक लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए। और उससे पहले शुरू करने से पहले फटाफट जाइए अपने चिप्स के पैकेट ले आए, कोल्ड ड्रिंक्स ले आए, क्योंकि ये जो घमासान मैच होने वाला है ये रहेगा जैसे कि सनी भाई ने बताया बेस्ट ऑफ 3 का। तो यहाँ पे 2 विन जिसको मिलेंगे वो सीधा जाएगा आगे, और जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे यहाँ पे 1-2 से। तो देखना पड़ेगा कि कैसी पारी यहाँ पे रहेगी। एब्सोल्युटली शिनरा यहाँ पे। एंड हम क्या हमें देखने को मिलेगा जेपलिन की टीम के द्वारा फिर से मॉस्को का गेम प्ले, क्योंकि मॉस्को उनका लाइक जो इनका लाइनअप है ना, वो मॉस्को वाला वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। उसके बेसिस से खेलते हैं। पर फीनिक्स स्पोर्ट्स का जो नोलन गेम प्ले था, उससे इन्होंने लेट गेम में यामा यामा स्पोर्ट्स को भी हराया था। तो असैसिन प्ले फीनिक्स स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखना पड़ेगा किसकी तरह यहाँ पे जो है सेशन गेम प्ले दिखाएंगे और किस तरफ जाएंगे यहाँ पे। क्या हमें सुयू देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, या जो है जैसे कि आपने कहा मास को दाराशाही करने के लिए बेलरिक उठाना चाहेंगे, या फिर उनका जो है एक तरह से कहूंगा कॉम्बो जो है उनका जो कोर मेंबर है उनको टारगेट करते हुए जो है अलग यहाँ पे हीरोज देखने को हमें मिलेंगे। या फिर हो सकता है यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे पारी खेली जाएगी, कुछ अतरंगी हमें बैंड्स देखने को मिलेंगे, पिक्स देखने को मिलेंगे, या फिर बेसिकली क्या कुक करना चाहेंगे, या फिर क्या होमवर्क करके आए हैं वो जरूर देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली शिनरा ऑन राइट। और ट्रिविया यहाँ पे चैट में जुड़ चुके हैं, तो गाइस वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड बस जवाब दे दीजिए एमएलबीबी के बारे में, और आपको वो डायमंड्स मिल जाएंगे आपकी आईडी में बाय विक्सा। एंड राइट नाउ अभी भी हम टीम का वेट कर रहे हैं। 7:15 होने वाला है, थोड़ा वाईफाई इशूज लग रहा है यहाँ पे। एंड देखते हैं क्या होता है शिनरा यहाँ पे।
जी हाँ, बिल्कुल, थोड़ा-सा इश्यू लग रहा है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे जो है पारी जो है स्टार्ट होने के लिए एकदम तरतरार है, एकदम उत्सुकता से भर चुकी है, दर्शक है यहाँ पे, वो भी तैयार है, तो उसी के साथ चलेंगे हम सीधा यहाँ पे जाएँगे ड्राफ्टिंग फेज़ की तरफ, और ड्राफ्टिंग फेज़ की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे उसी के साथ जो पारी हमें देखने को मिलेगी, चाहेंगे फिनी स्पोर्ट्स को मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट पिक, और उसी के साथ यहाँ पे दूसरे जो रहेंगे यहाँ पे टीम्स, उनको देखेंगे किस तरह से यहाँ पे काउंटर ड्राफ्ट करने का प्रयास रहेगा उनका। फिनिक्स ई स्पोर्ट यहाँ पे विद दैट फर्स्ट पिक एंड शिंड्रा। ऑनेस्टली जो फर्स्ट पिक का बैन फेज आता है ना, तो उसमें टीम्स जो होती हैं वो टैंक ही सबसे ज्यादा बैन करती है, टैंक या असैसन। यहाँ पे मुझे लग रहा है फिनिक्स ई स्पोर्ट चिप क्या केलिया या हाइलोस बैन करने का सोचेंगे। ठीक है, हाइलक्स जो है काफी अच्छा टैंक माना जाता है, और उसको जो है बैन करना भी काफी अच्छा डिसीजन रहता है, लेकिन यहाँ पे पहले जॉय जॉय को बैन किया गया, यहाँ पे चुलबुली रानी को यहाँ पे बैन किया गया। जॉय भी आजकल जो है मेटा पे काफी अच्छा जो है पकड़ बना के बैठे, टूर्नामेंट्स में देखा जिस तरह से उनका जो डैमेज आता है, पीछे की जो बैक लेन है उनको जो है टारगेट करती है मीज, और खासकर जो एमएम इनके लिस्ट पे रहते हैं, हिट लिस्ट पे, तो उनको सीधा जो है यहाँ पे बाहर किया जाएगा इस टूर्नामेंट की तरफ से, और इसी का जवाबी हमला देखते हुए हमें देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ पे बैन करना चाहेंगे। मैक्स यहाँ पे लगे हैं, बैन जरूर करना चाहेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे क्या बैन करेंगे मैक्स की तरफ से। यहाँ पे टीम जेपलिंग फोबियस बैन करती है ना शिमला, तो वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि हैरिक क्या मॉन्स्टर की तरफ जाएंगे। अभी भी सोच रहे हैं क्या बैन करेंगे। आई थिंक वो फोबियस की तरफ ही जाएंगे, जिस स्ट्रैटेजी ने इनको यहाँ तक पहुँचाया वो स्ट्रैटेजी खेलना चाहेंगे, पर नहीं, यहाँ पे मटिल्डा बैन किया जाएगा जो लेट गेम पे डैशेस प्रोवाइड करती है, लिमिटेड शील्ड प्रोवाइड करती है, तो बहुत ही बेहतरीन बैन है। मटिल्डा हाई टीम्स हमेशा ही बैन करती है, एंड यहाँ पे फिनिक्स ईस्पोर्ट्स के पास सेकंड बैन देखने को मिलेगा। क्या हम यहाँ पे एक और असैसिन बैन देखेंगे शिंड्रा, क्या एक हाइलोस बैन? मुझे लगता है वो हाइलोस ले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, शायद हाइलोस या फिर जो एक असैसन, चाहे सुयू या फिर उसकी तरफ जो है असैसन की तरफ कोई और हीरो जो नहीं देना चाहते हैं। क्या फैनी में बैन देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई फैनी प्लेयर हो तो काफी अच्छा खेला जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी इसकी रानी को बैन किया जाएगा। यहाँ पे जो सलीना को उनको जो है भेजा जाएगा बैनिंग सेक्शन की तरफ, उनको इस युद्ध में जो है मौका नहीं दिया जाएगा कि उनकी एबेसलैरो जो है इस युद्ध भूमि में आके लगे उनको। उसका जवाबी हमला यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जेपलिंग की तरफ से। दूसरा बैन क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सोच विचार जरूर करेंगे अपने टीममेट्स के साथ, और ये सोच विचार, ये जो विमर्श है बहुत ही सही रहेगा। और इसी के साथ जिस तरह से सेकंड घटते रहेंगे, उत्सुकता और भी बढ़ती रहेगी, दर्शकों के रोमांचक जो है खून हो एकदम खौलता रहेगा। देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे अच्छी पारी खेलेगा। तब तक दर्शकों से निवेदन रहेगा कि नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर अपने अपने टीम्स को सपोर्ट करते रहिए, और अपने अपने टीम्स के लिए जो है चीयर करते रहिए। और कुछ ही सेकंड्स पे हमें सेकंड बैन देखते हुए मिलेगा। क्या यहाँ पे हाइलोस होने वाला है, या फिर होगा एक अच्छा खासा असैसन? नहीं जी, जैसे कि आपने कहा वहां पे फोबियस बैन करने की तरफ जाते हुए आपने हमें दिखाया, वहां पे फोबियस को उड़ाया गया सीधा इस मूवी में से। फोबियस अभी आप देखेंगे ना शिंड्रा, दोनों टीम से द्वारा जो बैन किए गए हैं वो पूरे के पूरे हाई मेटा बैन्स हैं। एंड जो फोबियस बैन किया है, तो यहाँ पे टीम जेपलिन एट मॉन्स्ट्रो की प्ले की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने सेकंड पिक चूज किया था, तो 2 पिक उठाएंगे वो। 8 मेटा पिक शायद वो फिनिक्स टीम से दे दे, एंड अपना फिर कंफर्ट पिक उठाए, मॉन्स्ट्रो, हैरिस, टोयो, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है यहाँ पे। एंड वो देखिए हाइलोस भी बैन हो चुका है यहाँ पे, तो इनको फ्रंट लेना नहीं चाहिए। हाइलोस लेट गेम में तो मेल्ट ही नहीं होता है शिंड्रा भाई, तुम कितना भी मार लो वो सामने खड़ा रहेगा तुम्हारा घोड़ा बन के। जी बिल्कुल, और अपना जो पटरी बिछा देते हैं रेल के अपने टीममेट्स के लिए, उसके साथ साथ जो मूवमेंट स्पीड भी मिलता है उनको, और मूवमेंट स्पीड के साथ साथ अगर बात की जाए तो एचपी रीजन भी थोड़ा मिलता है उनको उसके साथ। तो काफी अच्छे टैंक रहते हैं आगे खड़े रहने के लिए, काफी अच्छा जो है डैमेज सुकअप करते हैं। एक तरह से जो एनिमी टीम के रिसोर्सेज है वो इस करवाने के लिए काफी अच्छे टैंक रहते हैं यहाँ पे, तो नहीं चाहते कि ये टैंक उनके सामने है, तो इसलिए यहाँ पे बैन किया जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर देखा जाए टीम जेपलिन की तरफ से तीसरा बैन हमें देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे कोई सेशन होगा, या फिर जो है गोल्ड लेनर हो सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बैन किया जाएगा जूशिन को। नहीं देना चाहते हैं जूशिन को, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें देती हैं जूशिन, बार बार सीसी, अनोइंग सीसी, ज्यादातर जो है फ्रंट लेनर्स को आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता है। एब्सोल्युटली, एंड वो देखिए केलिया पे हो चुकी है, सीसी है केलिया के पास, हील है केलिया के पास, सस्टेन है केलिया के पास, तो एक मेटा हीरो तो जा चुका है टीम फिनिक्स के पास।
एंड यहाँ पे तो जोशिन बैन किया है, तो मुझे लग रहा है टीम जेपलिन थोड़ा फाइटर टाइप का हाइपर जाना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इनके हाइपर को उछाल उछाल के फेंका जाए। एंड यहाँ पे मैक्स उनके गोल लेना टीम जेपलिन क्या क्या हैरिथ लेंगे क्या? यहाँ पे हैरिथ एंड सोये उठाया जा रहा है। दोनों ही मेटा देखिए हीरोज है शिनरा यहाँ पे, एंड बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है टीम जेपलिन यहाँ पे। दो मेटा हीरोज अगेंस्ट वन, एंड वो भी हैरिथ एंड सोयो, अर्ली एंड लेट गेम दोनों एक साथ। जी बिल्कुल, केलिया कहीं ना कहीं काफी अच्छे एक बात में सपोर्ट टैंक जरूर हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई और हीरोज भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर चिप उठाया जाए तो हो सकता है कि काफी अच्छी पारी रहेगी, क्योंकि वो पोर्टल के अंदर जाके फिर जो है लगातार सीसी दे सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है बदांग के ऊपर अवर किया जा रहा है, शायद बदांग को लॉकिंग करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, लॉकिंग के साथ साथ थोड़ा लेट गेम को सिक्योर करने के लिए उठाएंगे सिसिलियन। चमगादड़ के देवता यहाँ पे उठा लिए गए हैं, 3 पिक अभी होते हुए दिख रहे हैं हमें। टीम जो है हमारी फिनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से काफी अच्छी टीम हमें बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, और एक तरह से जो है लीड गेम सेव जरूर करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा डर है, क्योंकि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सुयू उठाया गया है, तो स्नो बॉलिंग के चांसेस थोड़े से उनकी तरफ जाते हुए मेरे को जरूर दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर उनको जो है स्नो बॉलिंग का मौका मिलेगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारे जो मेज है उनका भी जो डैमेज है वो खासकर जो है लेट गेम में ही आता है, अर्ली गेम में इतना कुछ कर हाँ नहीं जी, पाते हैं वो। हाँ जी, जो सिसिलियन लिया है मैं उसे बोलता हूँ लेट गेम इंश्योरेंस। तो लेट गेम में तो डैमेज आता है, पर अर्ली गेम थोड़ा सा वीक रहता है यहाँ पे। एंड टीम जेपलिन के पास यहाँ पे अर्ली गेम सोयो है, एंड सोयो का एक बार स्नोबॉल आ जाता है तो भाई रोकना बहुत मुश्किल होता है। एंड शिनरा वो देखिए यहाँ पे फारसा उठाई गई है, एंड फारसा एक परफेक्ट काउंटर है यहाँ पे सिसिलियन का। तो गेम थोड़ा अर्ली गेम हैवी जा ही रहा है यहाँ पे टीम जेपलिन के अगेंस्ट। जी बहुत ज्यादा हैवी जाएगा, और इसी के साथ एयर स्ट्राइक जो पड़ने वाले हैं इस गेम में बहुत ही ज्यादा घमासान होने वाला है, क्योंकि फारसा बहुत ही पीछे से जो है स्ट्राइक वहां पे मारेंगी उनको, पूरी टीम को। उनकी जो लाइन है वो पूरा डिस्टर्ब कर सकती है वहां पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे फिनिक्स स्पोर्ट्स को, थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि हालांकि अभी जो अपडेट पैच आया था उसी में जो है यहाँ पे फारसा को अच्छा खासा बफ मिला है, और जिस तरह से अभी जो टूर्नामेंट्स में निकल के आई है काफी ज्यादा जो है हमें फारसा पिक देखने को मिले हैं, और काफी अच्छे उनके जो है आउटप्ले देखने को भी मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पे बैन किया जाएगा ग्रेंजर को, नहीं देना चाहते हैं कि ग्रेंजर आए उनके आगे लूटस जाएगा। हमारे नरूटो जी जो है उनको बैन कर दिया गया है। लूटस और रेंजर दोनों बैन हो चुके हैं, तो दोनों टीम्स यहाँ पे फिनिक्स ईस्पोर्ट्स जेपलिन और मेटा हीरोज नहीं देना चाहते एक दूसरे को। और जो टीम जेपलिन है यहाँ पे वो पोकिंग मैकेनिज्म भी नहीं चाहती, इनको पता है सामने सिसिलियन है वो पोर्ट करेगा, रेंजर भी आ गया तो वो भी लेट गेम पोर्ट करेगा। एंड इन दोनों की पोकिंग कैपेबिलिटीज इतनी है ना कि एचपी कम ही चल लेगा, तो बदान फ्लिकर मार के पूरा सेट बन सकता है यहाँ पे। एंड जो लास्ट बैन है यहाँ पे टीम जेपलिन का, क्या वो एक गटो गच्चा देखने को मिल सकता है हमें? गटो गच्चा लेट गेम सस्टेन है, उसका डैमेज भी आ जाता है, एंड परफेक्ट टैंक बनता है वो यहाँ पे। जी बिल्कुल, जो बहुत ही बेहतरीन टैंक रहते हैं गड्ढों का। और लेकिन यहाँ पे हमारे जो निंजा है उनको बैन किया जाएगा, नहीं देना चाहते हैं हाइपर में निंजा। बैक लेन पे जो है कहीं ना कहीं दिक्कत रहते हैं हायाबुसा, वो जो है अपनी शैडो का प्रयोग करके जाते हैं और सीधा जो है बैकलीन को और अपने जो मार्क लगा के उसके बाद जो है अल्ट मार के सीधा खत्म कर दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, तो वो खतरा नहीं देना चाहते हैं जैपलिंग। उसी के साथ यहाँ पे गाटो का अच्छा, जैसे कि आप कह रहे थे कि पिक हो सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बैन किया जाएगा, वो एडवांटेज उनको नहीं देना चाहेंगे वो। या हायाबुसा बैन किया गया है यहाँ पे टीम जेपलिन के द्वारा। वो जानते हैं कि इनके हीरोज थोड़े से स्क्विशी है, एंड हायाबुसा अर्ली गेम डैमेज भी प्रोवाइड करेंगे। पर देखिए यहाँ पे जो हिल्डा उठाया जा रहा है तो वो अर्ली गेम इन्वेट ले जाएंगे, तो इससे जो टीम फिनिक्स ईस्पोर्ट्स है ना उसको असैसिन लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर वो हिल्डा एक बार इन्वेट करना चलेगी ना तो अर्ली गेम बहुत ज़्यादा मैसी हो सकता है। एंड टीम जेपलिन के पास अर्ली गेम हीरोज हैं, जब आप वो सिसिलियन बदान केलिया उठाते हो तो आपका अर्ली गेम थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि ये थोड़े से लेट गेम में आता है इनका डैमेज, लेट गेम में इनका सस्टेन आता है, पर जब आता है छप्पर फाड़ के आता है भाई। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो है हिल्डा उठाई गई है, एक बहुत ही की रोल यहाँ पे अपनाएंगी, वो बार बार जो है दिक्कत जरूर देंगे यहाँ पे। लेकिन उसी के साथ क्या उठाना चाहेंगे यहाँ पे, लॉक इन करना चाहेंगे यहाँ पे अपने जो है नीरज चोपड़ा, और उनके साथ साथ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं जूलियन जी, इनको जो है लॉक इन करने का प्रयास रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे जो है
इरेथियल को लॉक इन किया गया है। काफी अच्छा पिक दोनों ही तरह से। इरेथियल जो है काफी अच्छी मोबिलिटी प्रदान करती हैं अपने आप को, उनका जो है मोबिलिटी काफी अच्छा खासा रहता है। उसके साथ ही जो है डैमेज भी है, सस्टेन डैमेज काफी अच्छे तरीके से देते हैं वो। तो काफी अच्छा एमएम पिक है। जो है हैरिस से थोड़ा सा भागने के लिए जो है प्रयास करेंगे वो, और किस तरह से जैसे रहेगा तो काफी अच्छा पिक है। लेकिन कहीं ना कहीं जंगलर में मेरे को थोड़ा सा संकोच हो रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी हम सभी को पता है कि जूलियन का जो है रोल चेंज कर दिया गया है। तो वो जो रोज गोल्ड का इफेक्ट आता था वो अभी इतना इफेक्ट नहीं करता है, और जूलियन थोड़े से वीक जरूर पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो जाएंगे जरूर, एक बंदा भी धाराशाही करते हैं, लेकिन पीछे से जो है लगातार जो डैमेज आने वाला है वो थोड़ी सी मुश्किलें बना सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको जो है थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा अर्ली गेम पे ऑब्जेक्टिव लेने के लिए भी। तो थोड़ा सा संभल के एकदम अगर खेले ये लोग अर्ली गेम पे जो है सुयू को मौका ना दे स्नोबॉल का, तो पारी थोड़ी अच्छी जा सकती है यहाँ पे। तो ये पारी जो है फिनिश अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तो देखना पड़ेगा किस तरह से ये गेम की पारी खेली जाएगी। हाँ जी, एंड जो इन्होंने इरेथियल एंड जो इन्होंने जूलियन पे उठाया तो इनकी मोबिलिटी हाई तो हो चुकी है, पर वो जॉ हेड देती है ड्रीम बैस्टियन पे। जॉ हेड इनका जीना मुश्किल कर देंगे अर्ली गेम अगर इन्होंने इन्वेट करने का सोचा था। उनके पास हिल्डा भी है, उनके पास सैयो भी है, हैरिथ भी है, फारसा भी है। तो अर्ली गेम पोटेंशियल यहाँ पे टीम जेपलिन का है। क्या वो यूटिलाइज करेंगे क्या शिनरा? क्या उनको अर्ली गेम थोड़ा सा मैसी बनाना है? क्योंकि एनिमी के पास सिसिलियन है, केलिया है, बदांग है। तो लेट गेम एनिमी का बहुत सस्टेन एंड डैमेज वाला होने वाला है यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए हिल्डा है, जो है तो सारी जो स्किल्स है, सारे जो रिसोर्सेज इन दोनों के ऊपर ही यूज हो जाएंगे, और उसी का फायदा उठा के सीयू जो है बैकलेन से जरूर आएंगे। फारसा जो है वो जरूर एयर स्ट्राइक देंगे, उसी के साथ साथ जो हैरिथ है वो जरूर आएंगे पीछे से डैमेज देने के लिए। और उसी के साथ हमारा जो है आगमन होता हुआ लैंड ऑफ डॉन की तरफ हम आते हुए, और इस लैंड ऑफ डॉन के आगमन में होते हुए अपने योद्धा जाएंगे सीधा फार्मिंग लेन की तरफ और करेंगे वहां पे खेती बाड़ी। और उसी के साथ जूलियन जाएंगे ब्लू बफ से स्टार्ट करते हुए, दोनों ही योद्धा अपने ब्लू ब्लू बफ से स्टार्ट करते हुए। और ये पारी देखनी रही कि अर्ली गेम पे कौन यहाँ पे डोमिनेट करेगा, और थोड़ा सा जो एडवांटेज यहाँ पे स्यू की तरफ जरूर रहेगा। लेकिन देखना पड़ेगा क्या हिल्डा यहाँ पे इन्वेट करने आई है। जी नहीं, बिल्कुल अभी वो सीधा गई है एक्सपी लेन पे अपना जो है फार्म वगैरह करने के लिए, खेती बाड़ी जरूर करना चाहेंगे यहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे जॉ हेड वो भी रेडी हो चुके हैं हेल्प करते हुए अपने जंगलर को। और पोक जो है यहाँ पे बदांग को किया गया है मिड लेन की तरफ। जॉ हेड वो आ चुके हैं एनिमी के जंगल एरिया में, और एनिमी के जंगल एरिया में जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। और ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी रहता है कि आप जो है अपने जंगल के अलावा जो है अगर एनिमी के जंगल में फार्म करते हैं तो उनको जो है कम दे फार्म होने का। और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही रहती है अगर उनका जो जंगल है अगर आपसे जो है कम हो फार्म उनका, तो काफी हेल्पफुल रहता है यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे मुक्को की बरसात होती हुई नीचे में देखिए है। हिल्डा को थोड़ा परेशान जरूर किया जा रहा है, और पूरी टीम वहां पे आ चुकी है हिल्डा को मार्क करने के लिए। हिल्डा अकेले यहाँ पे टावर के अंदर फंसी हुई है, लेकिन पीछे से बैकअप आता हुआ हमें जरूर दिखेगा। बदांग गए जरूर थे वॉल लगाने का प्रयास, लेकिन नाकामयाब होते हुए। और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। गए जरूर है यहाँ पे सुयू अंदर और डैमेज देने का प्रयास, लेकिन फर्स्ट ब्लड क्लियर उठाती हुई यहाँ पे ले जाएंगे सीधा, उनको भेजेंगे यहाँ पे मृत्यु दंड के द्वार। और जॉहेड को पीछे संभल के खेलना पड़ेगा, भागना जरूर पड़ेगा, लेकिन उनका पीछा जूलियन छोड़ेंगे नहीं। उसी के साथ ले जाएंगे एक बेहतरीन किल अपनी झोली में। 2-0 का स्कोर होता हुआ यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे प्ले हमें देखने को मिला है फीनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से। 2-0 का सोर्स इंड्रा, एंड अभी यहाँ पे टर्टल भी स्पॉन होगा। अगर आप लेवल डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे जूलियन का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, वो इंस्टेंटली चले गए टर्टल के पास, वो चाहते ही टर्टल मिले। यहाँ पे देखिए जोनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बेहतरीन जोनिंग आने ही नहीं दे रहा। आगे लेवल 4 हो चुकी है केलिया, तो वो जाके इनिशिएट कर सकते हैं। जॉहेड ने पीछे फेंक किया, क्या किडनैप करेंगे यहाँ पे केलिया? नहीं, टर्टल भी स्लेन हो चुका है, किडनैप किया जाए, यहाँ पे इनिशिएशन किया गया फाइट का। ड्रीम बैशन इज आउट, रिस्पॉन होने गया है वो यहाँ पे। पर यहाँ पे हिल्डा को देखिए कैसे घात लगा के बैठी है। बट देन अगेन ऊपर देखेंगे तो हैरिथ फ्री फार्म मिल रहा है यहाँ पे शिंडा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री फार्म जरूर मिलेगा उनको। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कत उनके लिए हो सकती है, और अगर जो है हैरिथ को यहाँ पे जल्दी शट डाउन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक बार फार्म हो गए तो पूरी टीम को कैरी करने का पोटेंशियल वो अपने पास रखते हैं। यहाँ पे पूरी जो है उनकी प्रतिभा रहती है अपनी टीम को जो है ऊपर ले जाने के लिए। और यहाँ पे उसी के साथ हमें देखने को मिला है आ चुके हैं दोनों खिलाड़ी। बदांग जरूर गए हैं वहां पे
फिर से दोबारा यहाँ पे स्लाइड जरूर किया, लेकिन बॉल नहीं लगा पाए। उसी के साथ अंदर जरूर गए सुयू, पीछे हटना पड़ेगा, संभल के खेलना पड़ेगा। और उसी के साथ जूलियन ने काफी अच्छा स्टन बदांग का बॉल लगाते हुए प्रयास, 2 बंदे ले जाएंगे अपनी झोली में। 5-0 का स्कोर होता हुआ। और अभी जो है जेपलिन, तो अभी जो है अर्ली गेम पे जो है हम सोच रहे थे कि यहाँ पे डोमिनेट करेगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा डोमिनेट होती हुई फिनिक्स स्पोर्ट्स से। उल्टा डोमिनेट। और जो वॉम्बो ट्रॉम्बोस है यहाँ पे फिनिक्स स्पोर्ट्स के ऑन पॉइंट है। यहाँ पे जूलियन ने 3 बंदों को उछाला था ऊपर, एंड उसके बाद जो बदान ने अपने वॉल से सेटअप दिया ना वहाँ पे, तो टीम जेपलिन के हवा निकल गई, वो कुछ कर ही नहीं पाए। उनके अपने स्किल्स ही लाए, प्यूरीफाई भी था उनके पास, इन्होंने यूज किया, फारसा पंची ही नहीं बन पाए वहाँ पे। एंड यहाँ पे टीम जेपलिन को थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा। बॉटम लेन पे एक फाइट दे सकते हैं। हिल्डा की एचपी कम है, पर फारसा पीछे से बैकअप देने आ चुकी है। यहाँ पे स्टन मारा गया है जूलियन को। यहाँ पे जूलियन को शटडाउन मिलेगा क्या? मिल चुका है जूलियन को शटडाउन। यहाँ पे 3v1 एंड जेपलिन, टीम जेपलिन धीरे धीरे करके वापस आ रही है। गोल डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 8000 का गोल डिफरेंस अभी, तो थोड़ा बहुत तो फाइट कर रही है टीम जेपलिन। मिड लेन पे घात लगा के बैठे हैं। सोयो माइट बी इन ट्रबल। पनो सिसिलोन यहाँ पे बेट करते हुए, यहाँ पे जंगल भी लिया जा रहा है। ठीक, जंगल लूटिंग, सिसिलोन को उछाल दिया गया है पीछे, पर देखिए बदान ने कैसे घात लगाया था, उसका फायदा यहाँ पे शिंगा। जी हाँ बिल्कुल, झाड़ी पे एकदम बैठे थे घात लगाते हुए। और उसी के साथ यहाँ पे किल जरूर निकाला जाएगा। सीधा रेटेल यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन एयर स्ट्राइक का प्रयोग करते हुए उनको पीछे पकेड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कछुआ मारा जाते हुए, लेकिन हिल्डा जरूर अंदर जाएंगे, टावर के अंदर अकेले फंसते हुए किल अपना देंगे यहाँ पे। और गई जरूर थी अंदर वहां पे उनका जो है किल लेने की, लेकिन साथ के साथ अपना भी किल वहां पे देके आएंगे। और इसके साथ यहाँ पे कछुआ महाराज हो आते हुए, और कछुआ महाराज बहुत ही इजीली लिया जाएगा बिना कोई दिक्कत के। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जोनिंग देखने को हमें मिल रही है। जोनिंग भी हो चुकी है। और इसके साथ यहाँ पे पोक करने का प्रयास है रित को, लेकिन पीछे हटते हुए सुयू हल्के से जो है फीके पड़ते हुए, यहाँ पे संभल के खेलना पड़ेगा उनको। जो है बार बार यहाँ पे जो है काफी अच्छा यहाँ पे बेट किया गया, तो थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत रहेगी यहाँ पे। जो यहाँ के बदान के सेटअप है ना, सोयर को खेलने दे ही नहीं रहा है। यहाँ पे हिल्डा तो किडनैप कर दिया गया है, बॉल बना दी गई है शिन्ना यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, बॉल के साथ यहाँ पे जो गैंगमैन देखने को हमें मिला है, 4 बंदे एक साथ हिल्डा को जो है मारा है इतना बुरी तरह से, पीछे हटना पड़ेगा। और उसी के साथ जो है मिड का स्तंभ खोते हुए यहाँ पे जाएंगे, लेकिन हैरी चुपके से जो है इस मौके का फायदा उठाएंगे। टॉप का स्तंभ यहाँ पे लिया जाएगा, तो काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेड ऑफ हुआ है, लेकिन मिड का स्तंभ जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा घातक हो सकता है टीम यहाँ पे जेपलिन के लिए। और उसी के साथ यहाँ पे बदाम को पोक करने का प्रयास, लेकिन पीछे हटेंगे। और आखिरी जो टावर है उनका, लास्ट का जो टावर है, वो बचाने का प्रयास करेंगे बॉटम लेन की तरफ। एब्सोल्युटली शिंगा। एंड अभी यहाँ पे टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स को इस हैरिक को शट डाउन करना पड़ेगा। 0-0 कर रहा है, चुपके चुपके फार्म कर रहा है। एंड मैक्स भाई जाने नहीं देगा गेम को। हमने इनके प्रीवियस मैचेस भी देखे हैं, जिस तरह से वो कैरी करते हैं ना अपनी टीम को, वो अलग लेवल का ही कैरी करते हैं। जब तक मैच जिंदा है, जब तक मैच के पास वो सोना है ना, तो वो अपनी टीम को कैरी कर पाएगा। यहाँ पे टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स को इस बारे में जानना चाहिए भाई। एक बार तो शट डाउन करो यहाँ पे मैच को। कितना सेफ खेल रहा है वो बंदा। जी बिल्कुल, उनका जो पूरा ध्यान है अभी सिर्फ हिल्डा की तरफ रहा है। बार बार उनको जो है पोक किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे पकड़ा जाएगा और यहाँ पे दिया जाएगा मृत्यु दंड। किलिंग स्प्रे उठाते हुए यहाँ पे काफी खूबसूरत तरीके से सिंगल टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है, तो संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुले में रहेंगे तो आपको पकड़ा जरूर जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे डैशेस देखिए किस तरह से मारते हुए हैरिस पीछे हटना पड़ेगा, और सारा समझ के एयर स्ट्राइक का खूबसूरत प्रयोग करते हुए दिया गया है उनको मृत्यु दंड। यहाँ पे वॉल जरूर लगाई है, नकल फिश क्रैक यहाँ पे मारे जरूर गए हैं, लेकिन मौका उनको नहीं दिया जाएगा। काफी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। 9-3 का यहाँ पे स्कोर होता है। उसी के साथ यहाँ पे बॉटम टरेट दोबारा बचाने का प्रयास करेंगी। फारसा वहां पे जरूर है। उसी के साथ यहाँ पे डैमेज दिया गया है हमें, वो काफी अच्छा डैमेज, और क्रोनोस डैश यहाँ पे मारेंगे जरूर। और उसी का देखिए डैमेज आता हुआ, और जैसे कि बात हम कर रहे थे इलेरिया में, अगर कैरी करेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे किल निकालते हुए टीम के लिए, और 3-0 का स्कोर होता हुआ, और यहाँ पे स्ट्राइक देते हुए बेस डैमेज इस तरह से पड़ता हुआ। और बॉटम यहाँ पे काफी अच्छा मैं प्रदर्शन देख रहा हूँ, बार बार यहाँ पे रोका जा रहा है, एक के बाद एक यहाँ पे धाराशाही होते हुए टीम एक दूसरे पे होकर हारी होती हुई, एक टीम आगे बढ़ती हुई, दूसरी पल यहाँ पे जो पलटा है, वो जो पहिया है वो घूम जाता है। यहाँ पे 9-6 का स्कोर होता हुआ टीम जो है काफी अच्छी यहाँ पे खेलती हुई, और काफी दोनों ही टीम काफी अच्छी तरीके से प्रयास करती हुई। 3-0-1 पे है मैक्स। मैक्स को आपको जो है यहाँ पे मैक्स आउट होने से रोकना पड़ेगा। यहाँ पे उनको जो है एक शटडाउन देने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा टीम ई स्पोर्ट्स, यहाँ पे जो फिनिक्स स्पोर्ट्स है उनको।
बेशक चिंरायन, यहाँ पे जैसे ही बोला था कि मैक्स कैरी करेगा, वो कैरी करने आ चुके हैं। 3-0-1 हो चुका है। गोल डिफरेंस की अगर बात करें तो 1000 है अभी भी। 9-6 का स्कोर है, 3 टोटल हारने के बाद भी 1000 का टोटल लीड। बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं यहाँ पे टीम जेपलिन। धीरे धीरे करके वापस मैच के अंदर आ रहे हैं। देखिए अभी भी टॉप लेन फार्म करवा रहे हैं सर जॉ हेड। बोले जी भाई तू फार्म कर ले, मैं विजन प्रोवाइड करूँ, ये ले तेरे खाना है। यहाँ पे जूलियन को पकड़ गया है, जूलियन ने अपना अल्ट यूज किया है। 1v2 कर रहे हैं, पीछे से फारसा भी आ रही है। क्या जूलियन बचेंगे यहाँ पे? 1 HP है पर नहीं, मैक्स को शट डाउन करेंगे। पीछे से देखिए फारसा आ चुकी थी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो शट डाउन कहीं ना कहीं उनको दे दिया गया है। फास्ट पीछे से आई और उसके साथ भी उनको जो है शट डाउन दिया गया है। 5-3 पे वो गए हैं, धाराशाही हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 3-1-2 पे यहाँ पे धाराशाही हुए थे। मिड लेन यहाँ पे संभालने का प्रयास करते हुए, टावर संभालने का प्रयास करते हुए, क्योंकि अभी जो है थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। अभी जो लेन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, मैप कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। मैप कंट्रोल थोड़ा सा यहाँ पे लाने की जरूरत रहेगी। और जिस तरह से गेम थोड़ा लेट तरफ जाता हुआ, मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मेरे को थोड़ा सा डर भी बढ़ता रहा है, क्योंकि आदित्य जो है अपने यहाँ पे सिसिलियन जो है उनका भी डैमेज धीरे धीरे बढ़ेगा। और जिस तरह से लेट गेम की तरफ गेम जाएगा, और वो डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। बेशक चिंरायन, सिसिलियन एक ऐसा हीरो है कि जैसे टाइम बढ़ता रहता है उतना पावरफुल बनता रहता है। अभी टीम जेटलिंग के पास टाइम नहीं है, 10 मिनट हो चुका है, तो इससे डैमेज आता ही होगा। यहाँ पे लॉर्ड की तरफ हम थोड़ा सा डांस देख सकते हैं। यहाँ पे बदान का इनिशिएशन है यहाँ पे सिंड्रा। या बिल्कुल, और उसी के साथ यहाँ पे स्ट्राइक का प्रयोग करते हुए, लेकिन सिसिलियन लेंगे सीधा यहाँ पे। बहुत ही अच्छा किल, क्रोनोडोय जरूर मारी जाएगी यहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे दिया गया है मिट्टू डेड। और यहाँ पे वॉल लगा के प्रयास करते हुए, लेकिन पीछे से क्रोनोस्फोर का इस्तेमाल करते हुए हैरिस लगातार नहीं छोड़ेंगे किसी को। ट्रिपल किल अपनी झोली में भरते हुए, मैनियक लेने का प्रयास करते हुए, और यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास भी जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। मिड का स्तंभ लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 4 बंदे हैं, यहाँ पे अकेले हैं, हम डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास काफी नहीं रहेगा, पीछे हटना पड़ेगा। और ये मैक्स है, यही लेके जाएंगे अपनी टीम को जो है बहुत ही अच्छी जो है विक्ट्री की तरफ। काफी अच्छा यहाँ पे टीम खाली किया गया, एक के बदले यहाँ पे 4 किल गवाए गए। और उसी के साथ यहाँ पे लॉर्ड लेने का प्रयास चालू होता हुआ। जो वो लॉर्ड की फाइट थी ना, बहुत ही उम्दा फाइट थी। एंड मैक्स के बारे में जैसे मैंने बोला, 6-1-3 स्कोर है उसका। अपनी टीम के आधे से भी ज्यादा टेल कर चुके हैं, पर जो इन्होंने मिड लेन वहां पे पुश किया ना, वहां पे इनको लॉर्ड लेना चाहिए था। 1v4 था, लॉर्ड सिक्योर करते, टावर पुश करते, गोल्ड लीड अपनी तरफ भी खींच ली थी इन्होंने 1000 की गोल्ड लीड में अब वो। एंड अभी देखिए देखिए कैसे मेल किया जा रहा है लॉर्ड। वो जानते हैं टीम द फीनिक्स, दे वांट टू टेक दैट लॉर्ड। यहाँ पे हिल्डा का जोन आउट आ रहा है शिंडा, एंड सिक्योर कर लिया लॉर्ड। जी हाँ बिल्कुल, सिक्योर बहुत ही अच्छी तरह, लेकिन ये टीम की भिड़ंत जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। डैमेज देने का प्रयास जॉयट को दिया जाएगा मिड रिटेल की तरफ से। रिटेल पीछे से जरूर आएंगे, यहाँ पे बार बार डैमेज देने का प्रयास करते हुए। जूलियन भी पीछे रहेंगे, थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। अभी जो है फाइट लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लॉर्ड ले चुके हैं। तो पीछे हट के संभल के इस लेन को जो है, इस लॉर्ड को जो है, इसके साथ साथ इनहांस मिनियन जो आएंगे उनको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा यहाँ पे। अब जो गेम है वो किल्स का नहीं है, अभी जो गेम्स है यहाँ पे वो रहेगा माइक्रो का। वो रहेगा यहाँ पे अपनी लेन्स, अपनी जो आने वाले मिनियंस है उनको कंट्रोल में रखने का। बेशक लेन सिंकिंग अभी तक नहीं देखी गई है फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स से द्वारा, थोड़ी सी लेन सिंकिंग में पीछे। पर देन अगेन लेवल 1 का लॉर्ड है यहाँ पे। देखिए बैस्टियन को कैसे विजन प्रोवाइड किया है, पकड़े जाएंगे क्या? वहां पे केलिया ने किडनैप किया है, एंड देखिए फ्लिकर मार के निकल गए हैं यहाँ से। केलिया का वेस्ट किया गया, लॉर्ड को बैकहैंड से मेल्ट किया जा रहा है, एंड बॉटम लेन से मिनियंस आ रहे हैं। उनकी एमएम धीरे पुश कर दिया, 4 मैन अल्ट मार सकते थे यहाँ पे, पर बदान थोड़े से स्लो है। यहाँ पे शिन देखिए कैसे पुश कर रहे हैं। सिसिलियन फाइनली डैमेज आ रहा है सिसिलियन का, यहाँ पे डेड बॉम्ब को शट डाउन किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे शट डाउन दिया गया। उसी के साथ यहाँ पे मिड का टावर निकालने का प्रयास जरूर करेंगे, और इजीली जो है निकाल लिया भी जाएगा। मिनियंस आ चुके हैं बेस पे, थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा, थोड़ा पीछे रह के खेलना पड़ेगा। और उसी के साथ हमें बचाया जरूर गया, लेकिन टॉप का स्तंभ वो भी टूटता हुआ। जूलियन जो है वो रेडी है यहाँ पे, वो प्रयास करेंगे सीधा यहाँ पे खाली करने का। और उसके साथ यहाँ पे बेस लॉकिंग करने का प्रयास करते हुए बेस पे अटैक किया गया है, उछाल के उनको सीसी जरूर दिया गया है। और यहाँ पे जो है मृत्यु किल भी यहाँ पे दिया गया है, मृत्यु यहाँ पे दे दी गई है, मेगा किल अपनी झोली में भर ली गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रयास करना चाहता है कि एक ही लॉर्ड के साथ यहाँ पे जो पहला सेट है वो खत्म हो जाए,
लेकिन उसका जो है यहाँ पे मौका उनको नहीं दिया गया। बाल बाल बचे हैं यहाँ पे, और इसी के साथ बाल बाल इनको जो है एक मौका दिया गया है, लेकिन जो हेड के ऊपर दोबारा से यहाँ पे मुसीबतें बढ़ सकती है। इजेक्टर का प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन पीछे से आएंगे सुयू, डैमेज जरूर देंगे, लेकिन इतना जो है डैमेज पर्याप्त नहीं रहेगा। लेकिन अपने जो मैक्स है वो जो आएंगे पीछे से एक फोर्स बन के लेके जाएंगे एक किल अपनी झोली में। और उसी के साथ यहाँ पे हिल्डा जरूर गई है वहां पे डैमेज देने का प्रयास, लेकिन बादाम वॉल लगा के उनको पीछे धकेलेंगे अपनी टीम से दूर रखते हुए। काफी अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है, दोनों ही टीम अपनी अपनी बारी पे जी जान लगाती हुई, और दोनों ही टीम जो है काफी अच्छी तरह खेलती हुई। अभी भी जो है यहाँ पे फार्म डिफरेंस ज्यादा नहीं गया है, सिर्फ 1.5 की का यहाँ पे फार्म डिफरेंस दिखता हुआ। फान डिफरेंस तो कम है, पर ये दोनों टीम ज़ेपलिन एंड फीनिक्स ईस्पोर्ट्स जो बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है, बैक एंड फोर्थ जा रहा है मैच। पर यहाँ पे एक शिकायत रहेगी मेरी टीम ज़ेपलिन के, इन्होंने लेवल 1 के लॉट पे अपने 2 मेन टावर दे दिए, तो जो सुपर मिनियंस होंगे वो तो इनको परेशानी देंगे ही, पर जो अभी लेवल 2 का लॉट जो अभी आने वाला है यहाँ पे, तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सुपर इवॉल्व मिनियंस होने वाले हैं वो यहाँ पे। बदान का यहाँ पे जोन आउट देखिए, लॉट्स आते ही आधा मेल्ट हो चुका है यहाँ पे शिंदा। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौका उनको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। देखिए जोन कितनी खूबसूरती से करते हैं यहाँ पे बादाम, और जो किलिया है उनको पता है कि किस तरह से यहाँ पे जोन आउट करना रहता है, और काफी खूबसूरती से जो है जोन आउट किया गया है। और कहीं ना कहीं जो चांसेस थोड़े से कम जरूर रहेंगे, क्योंकि सुपर मिनियंस अभी जो आने वाले हैं, और लॉर्ड का टाइम भटकाने के लिए इस बार जो है टावर भी नहीं रहेंगे, और थोड़ी सी दिक्कत तो उनको हो सकती है। तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा इस समय, क्योंकि ये जो पारी रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके साथ किलिया प्रयास करने के लिए सही जरूर थी यहाँ पे, उसी के साथ जॉयट गए जरूर थे अंदर, लेकिन यहाँ पे इजेक्टर जो है मिनियंस के ऊपर मारेंगे, पीछे हटेंगे, और उसके साथ जो लेन है वो भी सिंक होती हुई लॉर्ड के साथ आती हुई, और टॉप लेन से जो है यहाँ पे इनहेंस मिनियन ऑलरेडी आ चुके हैं, और वहां पे वो टावर पे जो है वो मिनियन लेने का प्रयास, लेकिन टॉप लेन से जो है अगर देखा जाए तो पूरे मिनियंस बेस की तरफ आते हुए लॉर्ड आ चुके हैं, वॉल लगाई गई है, बहुत ही अच्छा सीसी दिया गया है, और उसी के साथ लेके जाएंगे सीधा किल अपनी झोली में। और ये लॉर्ड डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन रहेगा इनके लिए, और उसी के साथ पहला सेट लेके जाएंगे फीनिक्स स्पोर्ट्स अपनी जेब में। Victory! पहला सेट यहाँ पे फिनिक्स ईस्पोर्ट्स जीत चुकी है। बेस्ट ऑफ 3 का मैच था, 2 गेम्स अभी बचे हैं। ज़ेपलिन के पास टाइम है कम बैक करने का, पर नेक्स्ट सर्वर इनके अगेंस्ट होने वाला है। नेक्स्ट सर्वर इज प्रॉब्ली गोना बी बंगाल, एंड देखते हैं दोनों टीम्स कैसे खेलती हैं यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, अब जो है टीम जो है खेलेंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलेंगी, और ये इनके पास जो है जी जान लगाने का एक आखिरी मौका रहेगा टीम जैपलिंग अगर वापसी करने की। मैच पॉइंट रहेगा यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स जीतती है वो जाएंगी सीधा अपने जो है तो अपने क्लीन स्वीप करके वो जाएंगे सीधा आगे, और इस घर जाएंगे अपनी जो टीम जैपलिंग है। लेना पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पे प्रयास किया जाएगा खेलने का, और बहुत ही बेहतरीन जो टीम्स है इनको थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। जॉ हेड जो है इस बार कुछ ज्यादा काम में आया नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो स्ट्रेटेजी चेंज जरूर करनी पड़ेगी। बेशक शिंद्रा, एंड सेकंड गेम भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ड्राफ्टिंग फेज पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। टीम ज़ेपलिन का होगा पहला पिक यहाँ पे, तो देखते हैं वो क्या बैन करते हैं। क्या वो सिसिलियन बैन करेंगे, क्या वो आई डोंट नो। सिसिलियन प्रॉब्लम तो दे रहा था उनको लेट गेम पर जो इन्होंने ड्राफ्टिंग की थी, जॉ हेड किसी काम का है नहीं, अर्ली गेम इन्वेजन था नहीं वहां पे। जी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इस बार केलिया बैन जरूर किया जाएगा, क्योंकि बार बार जो है केलिया एक मुसीबत बनी हुई थी, तो उनको जो है इस बार बैन करना चाहेंगे यहाँ पे टीम ज़ेपलिन। और उसकी तरफ यहाँ मैक्स की तरफ से बैन हमें देखने को मिलेगा, सीधा बैन करेंगे। पहले मैटिल्डा को नहीं देना चाहते हैं कोई भी मौका, उड़न का टोला यहाँ पे उनको जो है बैन किया जाएगा। इनको जो है मैं उड़न का टोला बोलता हूँ, कि अपने साथ साथ जो है टीममेट्स को उड़ा के ले जाती हैं काफी अच्छी तरह। और दूसरी तरफ देखा जाए तो फीनिक्स ई स्पोर्ट्स की तरफ से शिन यहाँ पे क्या बैन करेंगे, फर्स्ट बैन हमें देखने को मिलेगा। क्या लगता है यहाँ पे क्या बैन किया जाएगा? क्या यहाँ पे दोबारा से वो टैंक बैन हो सकता है? केलिया बैन करना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम टीम ज़ेपलिन ने केलिया गिफ्ट कर दिया था यहाँ पे फिनिक्स स्पोर्ट्स को, तो वो नहीं चाहते कि इस बार ज़ेपलिन पहला केलिया उठाए। एंड यहाँ पे अभी भी सोच रहे हैं टैंक ही है, पर नहीं, सलीना बैन किया गया है। वो नहीं चाहते कि स्टन मारा जाए लेट गेम पे स्पेशली। ठीक है, लास्ट गेम के बैन्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे जी सैट का बैन है यहाँ पे। शिंदा क्या बैन करेंगे वो? देखिए दोबारा से जो है हाई लॉस हमें बैन देखने को मिल सकता है, या फिर
अभी मैं कहूँ तो कि केलिया जो है उनको जो जरूर बैन करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दिक्कत रहा था। हमने देखा पिछली गेम में जिस तरह से वो किडनैप करके जो है ले जा रही थी, जैसे ही सिंगल टारगेट पकड़कर पीछे से उनको जो है धोया जा रहा था चार चार बंदों के द्वारा। तो शायद इस बार जो है वहां पे देखना पड़ेगा किस तरह से बैन किया जाएगा, क्योंकि पहला पिक जो रहेगा वो यहाँ पे जेपलिन की तरफ रहेगा, वो किस तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे बैन किया जाएगा सिसिलियन को। नहीं देना चाहेंगे कोई भी इंश्योरेंस लेट गेम के लिए, और उनको दिया गया है यहाँ पे बैन, जाएंगे सीधा जो है इस युद्ध भूमि से बाहर। दूसरी तरफ देखा जाए तो मैक्स का यहाँ पे अगर देखा जाए तो हैरिस बैन होता हुआ दिख रहा है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। या यहाँ पे सिसिलियन और हैरिड बैन किया गया है। दोनों टीम्स को लास्ट टाइम थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई थी। मैक्स का जो हैरिड था उसने कैरी करने का ट्राई किया, बट गोल डिफरेंस जो सिनर्जी थी यहाँ पे टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स की वो ज़्यादा बेहतर लग रही थी। एंड यहाँ पे जो सिसिलियन बैन किया गया है, जो पोकिंग मैकेनिज्म था, लेट गेम इंश्योरेंस था, वो नहीं देना चाहता यहाँ पे टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स को, क्योंकि पीछे से छुप छुप के मार तो रहे थे वो। जी बिल्कुल, यहाँ पे और दूसरी तरफ देखा जाएगा तो केलिया बैन हमें देखने को मिला है, जिसके मैं कह रहा था कि बैन जो है ये हीरो जरूर करने रहेगा, और वो आया भी है। तो कहीं ना कहीं जो होमवर्क है वो उन्होंने पूरा कर लिया है, वो अभी जो है सीख चुके कि ये ओपन नहीं देना चाहिए हीरो। और उसके साथ यहाँ पे तीसरा बैन हमें आदित्य की तरफ से दिखेगा कि क्या चाहेंगे यहाँ पे बैन करना, क्या वो यहाँ पे हाई लॉस रहेगा, क्या वो यहाँ पे कोई एमएम रहेगा, लेकिन यहाँ पे रहेंगे जॉय, क्योंकि ये जो है काफी अच्छा सेशन रहते ही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो इनको जो है बैन किया जाएगा। उसके साथ पहला पिक यहाँ पे उठाएंगे मैक्स, क्या उठाना चाहेंगे यहाँ पे, जूशिन अभी ओपन है, जूशिन के साथ साथ ग्रेंजर भी ऊपर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरफ जाना चाहेंगे। अगर जूशिन देते हैं दूसरी टीम को तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जूशिन जो है किसी भी फ्रंट लेनर को आगे आने देगी नहीं, बार बार जो है सीसी दे के परेशान जरूर करेगी वो। बेशक। एंड यहाँ पे केलिया बैन भी देखने को मिला है, तो लास्ट गेम का थोड़ा थोड़ा असर क्यों इस गेम पे दिख रहा है चल रहा। और जो टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स है उसने 2 बैन वही किए जो लास्ट टाइम किए थे। यहाँ पे ड्रेंजर पे आ चुके हैं मैच यहाँ पे। तो पोकिंग जो वो करने वाले हैं ना अपने अल्ट से लेट गेम पे, वो देखेंगे कितना पोकिंग करता है। ड्रेंजर एक ऐसा हीरो है ना भाई, जो गेम के मतलब जितना गेम चलेगा उतना पावरफुल होता रहेगा। 1,000 का डैमेज मारते हैं। पर यहाँ पे देखिए लूकस एंड बदान दे दिया गया है फिनिक्स स्पोर्ट्स को। दोबारा 2 मेटा हीरोज मिल चुके हैं फिनिक्स स्पोर्ट्स को। एंड लूकस ऑन दैट हाइपर भाई नहीं मरता भाई, वो जो इसका डैमेज आता है, जो इससे सस्टेन आता है, नहीं मार सकते तुम। जी बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक जो है यहाँ पे सस्टेन आता है उनका। बीच फॉर्म में भी जो है काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जाते जाते जो है एक तरह से मैं कहूंगा बैकलेन अपने साथ ले जा लेते हैं जाते जाते भी। लेकिन यहाँ पे उठाया जाएंगे, यहाँ पे हॉवर किया गया है फोबियस के ऊपर। क्या उठाना चाहेंगे यहाँ पे, फोबियस को लॉग इन करना चाहेंगे। उसी के साथ यहाँ पे देखा जाएगा हमारे जो नरूटो जी है, हमारे जो सुयू जी है, उनको जो है पिक किया जाएगा। और हालांकि अभी मैंने देखा काफी अच्छी स्किन्स आने वाली है अभी नारुतो कोलैब में, तो काफी अच्छी जो है सुयु की स्किन्स मेरे को काफी पसंद आई। दर्शकों आपको कैसी लगी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और उसी के साथ साथ बताइए यहाँ पे कमेंट करके कि कौन सी टीम का पल्ला भारी लग रहा है, क्या ये होने वाला है क्लीन स्वीप या फिर यहाँ पे कम बैक होने वाला है अपने जो है जिपलिंग की तरफ से। और यहाँ पे आदित्य तीसरा पिक लॉक इन करेंगे सीधा फारसा की तरफ। जूशिन को इस बार नहीं पिक किया गया है यहाँ पे, दोनों टीम की तरफ से अभी थोड़ा छोड़ दिया गया है जूशिन को। क्या यहाँ पे लॉक इन करना चाहेंगे या फिर सीधा बैन देना चाहेंगे। बैन किया गया है लुओ को, नहीं चाहते हैं कि लुओ सामने है। काफी अच्छा बैन मैं कहना चाहता हूँ, डाइवर्जन और जो है फ्रंट लेनर को काफी ज्यादा दिक्कत देती है ये इमेज, तो इनको जो है बैन दिया गया है। जो वो लुई बैन किया ना टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स से, मुझे लग रहा है वो एक हीलर टाइप का जाना चाहते हैं। फ्लोरिन जाएंगे क्या एस्टेस जाएंगे, क्योंकि चिपटके वाले सिनर्जी लग रहा है इनका जो अभी यहाँ इधर लग रहा है। एंड यहाँ पे जो सईओ जी सैट ने उठाया, क्या इस बार अपने आप को रिडेम्पशन दे पाएंगे क्या गेम 1 का। गेम 1 पे उतना चले नहीं, पर यहाँ पे सूट गुरु भी वो फोवियस के ऊपर है। फोवियस एक ऐसा हीरो है भाई जिससे सस्टेन आ जाता है 2 आइटम्स के बाद, नहीं मार पाते लोग यहाँ पे। तो एक पावर स्पाइक का वेट तो करेंगे यहाँ पे टीम जेपलिन, देखते हैं उनका बैन क्या रहता है। जोशिन भी ओपन है यहाँ पे शिनरा, तो अभी जोशिन क्ले भी जा सकता है, पर जोशिन वही है सीसी प्रोवाइड करती है, डैमेज नहीं आता जब तक लेट गेम नहीं होता। जी बिल्कुल, यहाँ पे और उसी के साथ यहाँ पे बैन किया गया है रिथिल को। और रिथिल के साथ यहाँ पे देखा जाएगा आखिरी जो बैन है यहाँ पे टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से वो आता हुआ दिखेगा हमें। और देखेंगे किस तरफ यहाँ पे जाना चाहेंगे, किस तरफ यहाँ पे जाते हुए देखेंगे हमें कि बैन जो है किस तरफ जाएगा।
थोड़ा सा विमर्श करते हुए अपने टीम के साथ जो है विमर्श करेंगे जरूर। आखिरी बैन रहेगा, किस तरह जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी जो है टैंक अभी भी ओपन है, तो शायद जो है यहाँ पे हमें हाइलॉस बैन देखने को मिले, क्योंकि काफी अच्छा टैंक रहेगा अगर हाइलॉस आते हैं तो यहाँ पे। और जी हाँ, बिल्कुल हाइलॉस बैन किया जाएगा, मौका नहीं देना चाहते हैं हाइलॉस पिक करने का यहाँ पे टीम जेपलिन को। और उसी के साथ टीम जेपलिन की तरफ से आखिरी बैन आता हुआ, क्या देना चाहेंगे यहाँ पे बैन, देखने वाली बात होगी। अभी भी जो है एमएम लेन की तरफ एमएम खुला है, तो शायद हो सकता है कि वहां पे जो है बैन किया जाए। जो वो गेम बना रहे हैं ना या यहाँ पे जेपलिन टीम जेपलिन, वो अपने एमएम को थोड़ा सेफ ग्राउंड देना चाह रही है। यहाँ पे रिथल बैन देख सकते हैं, वहाँ पे रेंजर बिल्कुल भी काउंटर ना हो, ये बैन भी हम अगेंस्ट रेंजर देख सकते हैं, जो रेंजर की हेल्प करेगा। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो रेंजर को यहाँ पे कौन मार पाएगा, क्या वो मॉस्को बैन करेंगे, क्योंकि मॉस्को अभी जो वो स्पेयर मारेगा, जो इसकी मोबिलिटी है वो हर्ट कर सकती है टीम जेपलिन को। यहाँ पे क्या वो मॉस्को बैन की तरफ जाएंगे? यहाँ पे सीसी बैन किया गया है शिंगा, तो वो नहीं चाहते कि लेट गेम पे ट्रू डैमेज पड़े, तो इससे लग रहा है टीम जेपलिन थोड़ा टैंकियर जाना चाह रही है। जी हाँ, बिल्कुल टैंकर जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शील्ड उठाना चाहेंगे अपने जो है नीतन के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन अभी उठाएंगे ब्रूनो। देखना पड़ेगा दोनों में से किसको यहाँ पे पिक किया जाएगा। ब्रूनो भी आते हैं तो काफी अच्छे एमएम अपने रहते हैं ब्रूनो, उनके जो बॉल्स का डैमेज रहता है काफी ज्यादा रहता है, और स्टैक होने पे काफी अच्छा खासा डैमेज करते हैं। लेकिन अभी लॉक इन करेंगे सीधा क्लिन को यहाँ पे, और क्लिन को लॉक इन कर लिया गया है। वो जो दूर से डैमेज देना चाहेंगे, काफी अच्छा पिक यहाँ पे रहेगा। और क्रेंजर के अगेंस्ट काफी सही रहते हैं क्लिंट, और अगर जो है बीट्रिक्स वो भी काफी अच्छी चलती है। बीट्रिक्स जो है काफी मतलब ज्यादातर सभी एमएम के तरफ चल जाती है यहाँ पे, तो उसी की तरफ देखा जाएगा। यहाँ पे क्या हमें गुनीवर पिक देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे लॉकिंग करना चाहेंगे गुनीवर के साथ। देखा जाए तो अगर अभी उनके जो मीज पिक अभी रहता है, तो यहाँ पे वैलेंटीना पिक करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली सुयू के लिए। और हमें पता है कि उनका जो है पूरा स्किल चुरा लेती है, पूरा स्टैक जो है वहां पे स्किल्स के साथ साथ उनका पूरा फॉर्म चुरा लेती है IMU का प्रयोग करते हुए, और सीधा लॉक इन किया जाएगा। थोड़ा सा गंभीर मामला होता हुआ यहाँ पे, लेकिन लास्ट में चूज किया जाएगा अल्फा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे पिक, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हाइपर टैंक को मेल्ट करने के काफी ज्यादा काम में रहते हैं यहाँ पे अल्फा जी। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरह से गेम जाएगा। अगर सही साइड लगा यहाँ पे तो पारी काफी अच्छी हो सकती है, क्लीन स्वीप हमें देखने को मिल सकता है जरूर। लेकिन इस समय थोड़ा सा जैपलिंग का थोड़ा सा स्ट्रांग हमें लगता हुआ, क्योंकि वो वैलेंटीना जब लेवल 4 की हो जाएगी तो उनका जो पोकिंग है वो बार बार सुई को सुई कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, यहाँ पे बार बार जो अपने नारुतो हीरो है उनको जो है बार बार यहाँ पे पोक किया जाएगा, उनकी अल्ट जो है उन्हीं के ऊपर जो है इस्तेमाल की जाएगी। और जो सीटी होगा ना वैलेंटीना का, वो ओनली 6 सेकंड्स होने वाला है, तो वो अल्ट स्पैम पे स्पैम मार सकती है। पर जब वो लूटस का अल्ट उठाती है ना, तब जो डैमेज होता है वो डैमेज नहीं आता। सीसी तो प्रोवाइड होता है, सीसी इम्यून तो प्रोवाइड होता है, पर जो डैमेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे। पर देखने की बात यहाँ पे ये है शिंडा, जो एक क्लिंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा डैमेज डिश आउट करने वाला है, वो मेरिट करने वाला है क्या, तो वो जितना मुझे लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे मेल्ट मेल्ट उनको जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ये जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहनी चाहिए कि उनको जो है फार्म करने का ज्यादा मौका दिया ना जाए, उनको जो है लीड गेम तक जो है थोड़ा सा दिक्कत दिया जाए बार बार, ताकि उनका जो फार्म है थोड़ा लेट हो सके। उसी के साथ यहाँ पे आगमन होता हुआ आ चुके हैं हम लोग लैंड ऑफ डॉन की तरफ, और दोनों योद्धा अपने जाएंगे सीधा फार्म की तरफ। अल्फा गए हैं रेड की तरफ, रेड से वो शुरुआत करते हुए हमें दिखेंगे। मिड लेन की तरफ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा परवाह में करते हुए गटो काचा यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे विजन देते हुए टीम्स का दिखते हुए हमें। और यहाँ पे वैलेंटीना छुपी हुई है उनके ब्लू की साइड पे, और पूरी जो टीम है वो आ चुकी है हेल्प करते हुए। वो जो गार्ड कर रहे हैं उनका पूरा बफ नहीं चाहते कि कोई भी इंटरेक्शन हो यहाँ पे। उसी के साथ वैलेंटीना यहाँ पे फोकस जरूर किया गया है। और बात करें अगर बॉटम लेन की, तो ग्रेंजर यहाँ पे क्रैप चुराना जरूर चाहते थे, लेकिन यहाँ पे मौका उनको नहीं दिया गया। और इसके साथ ये जो गेम है अभी थोड़ा सा संभलता हुआ, दोनों ही टीम आएंगी यहाँ पे एमएम की लेन पे जो है एंगेज करने के लिए। और इसी के समय यहाँ पे वॉल का प्रयोग करते हुए दिया गया है, सीधा दिया जाएगा मृत्यु दंड। अड का प्रयोग करेंगे, सुयू नहीं बच पाएंगे यहाँ पे फर्स्ट ब्लड लेते हुए, लेकिन ग्रेंजर सिक्योर करेंगे अपना हाइपर का बदले हाइपर यहाँ पे लिया गया है। और इसी तरह से 1-on-1 का स्कोर होता हुआ, क्या ही काबिले तारीफ यहाँ पे।
पारी खेली गई, उसके साथ वदांग दोबारा से वॉल लगा के अनोइंग करते हुए काफी ज्यादा जो है अनोइंग काम कर रहे हैं यहाँ पे। और टॉप लेन की बात किया जाए तो फोबियस वो भी लग चुके हैं, लगातार जो है यहाँ पे डैमेज दिया जा रहा है, पोक किया जा रहा है उनको अल्फा टॉप लेन से आते हुए। बॉटम लेन की बात करें तो सुयु भी आ चुके हैं टॉप लेन की तरफ यहाँ पे दिक्कत देने के, लेकिन पीछे से फारसा जरूर आई है और सीधा सुयु खाली करेंगे यहाँ पे। काफी बेहतरीन पारी खेलने देखने को मिली है, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पीछे हट जाइए, अगर आप नहीं हटेंगे तो आपको जो है मृत्युदंड जरूर दिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पे प्रयास जरूर किया गया था फारसा को जो है यहाँ पे मारने का, डैमेज देने का, और डैमेज देकर उनको जो है पीछे खदेड़ दिया जाएगा। यहाँ पे टर्टल महाराज का आगमन हो चुका है, लेकिन पुश पे अभी भी छुपे हुए हैं यहाँ पे पैनिक जी, और उनको जो है पता है कि कब निकलना है, थोड़े से संभल के रहेंगे अभी। उसी के साथ यहाँ पे डैमेज दिया जाएगा और यहाँ पे ट्रू डैमेज का प्रयोग करते हुए काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज दिया गया है। पीछे से स्ट्राइक का हमला फारसा का, और सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा डैमेज दिया जाएगा उनको। और उसके साथ यहाँ पे वॉल लगाने का प्रयास जरूर करेंगे और आए जरूर है, लेकिन सीधा जो है टर्टल लिया जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को जो है यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देंगे उस टर्टल के लिए। और बात करें अगर स्कोर की तो अभी भी 3-3 का स्कोर होता हुआ, और अगर स्वर्ण मुद्राओं की अगर बात करें तो वो सिर्फ जाता हुआ 400 का गोल डिफरेंस आता हुआ। 400 का गोल डिफरेंस है, दोनों टीम 3-on-3 यहाँ पे एक दूसरे और टक्कर की फाइट दे रही है। But the thing is, उस फाइट में लूटस का लेवल 4 की वजह से वो चेंज हुआ। बदान फिर से लाइक फर्स्ट गेम जो हमने देखा था परफेक्ट सेटअप दे रहा अपनी टीम को, वो सरियो को फार्म करने दे रहा है। सरियो भी फर्स्ट शटडाउन हुआ था, देखिए यहाँ पे फंसा दिया गया। अल्फा जब मारने ट्राई करेंगे पर नहीं मार पाएंगे। पर यहाँ पे क्लिंट भी फार्म हो रहा है, बट रेंजर का एक लेवल अप है तो क्लिंट थोड़ा तो पीछे हट रहा है। यहाँ पे फारसा जो जोन आउट प्रोवाइड कर रही है, परफेक्ट जोन आउट प्रोवाइड कर रही है। अगर आपने देखा होगा लास्ट टर्टल फाइट में यहाँ पे लेवल डिफरेंस भी आ चुके हैं। टीम जेपलिन अपने सर्वर को ना होते हुए भी अभी अच्छी फाइट दे रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए रेंजर मिड लेन में डबल गोल लेना है यहाँ पे, जिससे क्लिंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा बने और ट्रिप्स भी नहीं लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सूट गुरु आ चुके हैं यहाँ पे फोवियस के ऊपर, ठीक है। अल्फा थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहे हैं क्योंकि जानती है भाई टीम्स अपनी लेट गेम अल्फा इज अ डीमन भाई, तुम कुछ भी कर लो नहीं मरेगा वो। एंड यहाँ पे देखिए कैसे लूटस झाड़ी में छुपा हुआ है, परफेक्ट सेटअप बना रहा है, मिनियंस तो क्लैश होने दे रहा है, लेन फ्रीज करने दे रहा है यहाँ पे। फोवियस भाई तुम्हें घूमना है तुम घूमो, पर तुम्हारे मिनियंस यहाँ पे क्लैश होंगे, तुम्हारे मिनियंस यहाँ पे वेस्ट होंगे भाई यहाँ पे। एंड फोवियस तो रियलाइज हो चुका है, वो जा रहा है टॉप लेन पे यहाँ पे। एंड देखिए जो यहाँ पे गैंग हो सकता है, यहाँ पे फारसा के ऊपर गैंग देखने को मिला है। क्लिंट ने सबसे पहला आइटम स्काई पियर्सर बनाया है यहाँ पे, तो वो बेशक डैमेज ले जाना चाह रहा है। टैंक की हीरोज में बेसिकली स्काई पियर्सर चलता है। क्या तो अभी बहुत ज़्यादा मेल्ट होंगे और क्लिंट का एक और आइटम आ गया तो। एंड शिनरा जी यहाँ पे टर्टल स्पॉन हो रहा है, बदान परफेक्ट कैंप करके बैठे थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे गैतो ने इस बार विजन प्रोवाइड किया। आपको क्या लगता है ये वाला टर्टल कहाँ पे जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है मौका जरूर सुयु के पास रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मौका हमें देखने को मिला है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे स्ट्राइक का प्रयोग करते हुए दोनों इमेज लगेंगे और उसके साथ यहाँ पे मृत्यु दंड दिया गया है। लूकस बाल बाल बचते हुए जाएंगे पीछे, अल्फा को डैमेज देंगे यहाँ पे, काफी अच्छा खासा डैमेज पड़ता हुआ अल्फा को पीछे हटना पड़ेगा। दोबारा से यहाँ पे जीवन दान उनको मिलता हुआ, 3 किल यहाँ पे गंवाए अपने पीछे हटते हुए। ग्रैंजर यहाँ पे अल्ट का प्रयोग करा, दैट सुना था, मारा जरूर है, फर्स्ट किल मारी जरूर है, लेकिन डैमेज पर्याप्त नहीं और पीछे से जो है लग चुके हैं क्लिंट अपने जो है डैमेज देने के लिए। और उसके साथ यहाँ पे वॉल लगाएंगे, गए जरूर है, अल्ट का प्रयोग किया लेकिन कोई भी बंदा नहीं पकड़ेंगे। और काफी अच्छा यहाँ पे पारी फारसा को किया गया लॉक इन, उनको दिया गया मृत्यु दंड। और उसके साथ यहाँ पे पीछे से आए थे और उनको जो है भगाया जाएगा। मिड का स्तंभ की हालत बहुत ही खराब यहाँ पे, और एक अच्छा गैम्बल यहाँ पे चुना जरूर गया उन्होंने। और अल्फा का भी आगमन हो चुका है, बफ लेके आ चुके हैं वो। और अगर बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे गेम हमें देखने को मिला। 4-7 का स्कोर हो चुका है। उसके साथ अल्फा आते हुए छुड़ाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन सही समय पे पीछे हट जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो पूरी टीम है वो आ चुकी है, अभी पूरी आ चुकी है। यहाँ पे देखिए लूटस ने चुपके से टॉप लेन का टावर भी निकाल दिया था उस फाइट में जो मिड लेन पे फाइट हो रही थी। एंड यहाँ पे रेंजर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा है, रेंजर को फार्म करने नहीं देंगे। उनको पता है भाई एक बार मैच फार्म अप हो गया तो हमारे लिए टफ हो सकता है। एंड यहाँ पे अल्फा भी फार्म कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उस लेट गेम की तरफ जा रहे हैं। पर क्लिंट का अगर आप देखेंगे तो डैमेज आ चुका है, उस फाइट में उसे 2 किल्स मिले हैं तो 20 स्टैट्स ऑन दैट स्काई पियर्सर। एंड द थिंग इज चीज़ें अभी यहाँ पे टीम जेपलिन के लिए वर्स्ट ही होते जाएंगी जैसे जैसे वो स्काई पियर्सर बढ़ता रहेगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा कैंट की कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे लूटस तो देखिए परफेक्ट विजन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे फाइट ले सकते हैं पर नहीं। ड्रीम बैशन यहाँ पे चेक करते हुए सारी बुशेस, वो जानते हैं उनका गेम प्ले की फिनिक्स एस्पोर्ट्स कैसा गेम प्ले खेलेंगे यहाँ पे।
एंड जेपलिन, पांचों के पांचों बंदे एक ही बुश में बैठे हैं यहाँ पे एंड पूरा घेरा बना के बैठे थे यहाँ पे फिनिक्स स्पोर्ट्स। भाई तीसरा टर्टल भी यहाँ पे बिल्कुल। स्पॉन होने वाला है शिंद्रा। जी जी बिल्कुल, और ये टर्टल के साथ जो है ये मुठभेड़ यहाँ पे भिड़ेगी जरूर, और ये टीम फाइट यहाँ पे होगी जरूर। और इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा पोक किया गया है टर्टल को, और प्रयास रहेगा यहाँ पे, लूकस भी रेडी है अपनी हट के साथ, और पीछे से आएंगे, मारने का प्रयास जरूर करेंगे। अंदर गए हैं और यहाँ पे पीछे खदेड़ा गया है उनको दूर, लेकिन ग्रैंचर डैमेज यहाँ पे लेते हुए, लेकिन उनकी जो स्किल है कहीं ना कहीं लगी नहीं है। लेकिन ऊपर की बात करें, एजी का प्रयोग करेंगे, वहां पे गटो का चलेंगे सीधा, बदांगा किल, और उसी के साथ यहाँ पे लूकस को यहाँ पे मारने का धाराशाही करते हुए सीधा लेंगे लूकस, उनका किल। काफी अच्छी पारी यहाँ पे खेली गई है, 2 बंदे धाराशाही हुए हैं। और अगर टीम जेपलिन की बात करें तो अभी 0 बंदे धाराशाही, कोई भी बंदा जो है गया नहीं है रिस्पॉन्स स्क्रीन की तरफ। और यहाँ पे बॉटम लेन पे पकड़ा उनको जाएगा, काफी अच्छा प्रयास रहेगा क्लिंट को पकड़ने का, लेकिन क्लिंट भाग जाएंगे सही समय पे, और इसी के साथ यहाँ पे मौका उनको नहीं दिया जाएगा लेन पुश करने का। बॉटम लेन की बात करें तो काफी सारे मिनियंस गए हैं बॉटम लेन की तरफ, और अभी ये टावर लेने का प्रयास करते हुए ग्रेंजर अकेले, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि एयर स्ट्राइक वहां पे पड़ता हुआ, लेकिन एयर स्ट्राइक से बचते हुए उसी के साथ यहाँ पे पकड़ा गया है। फ्लिकर का प्रयोग करेंगे, पीछे हटेंगे, और पीछे हट के बाल बाल बचते हुए निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। यहाँ पे जो टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स साइलेंट पुशन है, टर्टल ले रही थी उसी टीम एंड यहाँ पे शिन ने बोला भाई मैं बॉटम से टावर निकाल के लाऊंगा, तो भाई 3 बंदे मरने के बाद भी गोल डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, 1000 की लीड है क्योंकि वो साइड पुश कर रहे हैं। यहाँ पे टीम जेपलिन बहुत ही अच्छा ट्राई कर रही है, लाइक तुम देख सकते हो धीरे धीरे करके टीम फाइट्स में वो ऊपर आ रही है। यहाँ पे लास्ट टीम फाइट्स में इन्होंने 3-1 का ट्रेड लिया था, यहाँ पे क्लिंट को भी पकड़ लिया था और वहाँ पे डैमेज हीलर नहीं था, तो थोड़ा सा बचियान देखें। यहाँ पे मैक्स ऑफ फार्म मिला जा रहा है, टर्रेट पुश किया जा रहा है, दोनों टीम्स ऑब्जेक्टिव स्किल्स दोनों खेल रही हैं। यहाँ पे देखिए मिड लेन पे थोड़ा सा गैंकिंग दे सकते हैं, यहाँ पे केंजी ने यहाँ पे फंसाया गया, यहाँ पे गैतो ने स्टन मारा है, वैलेंटीना यहाँ पे पॉप कर चुकी है अपना अल पर शट डाउन होगा, वही सस्टेनेबिलिटी नहीं है, लाइफ स्टील नहीं है। और गैतो का एओजी यहाँ पे 2 बंदों पे कनेक्ट कर चुका है, लूकस अभी भी जिंदा, क्लिंट बैक हैंड से डैमेज प्रोवाइड कर रहे हैं और मेजर डैमेज कहाँ है, रिकॉल मारा जा रहा है। टीम जेपलिन बिना फाइट के पीछे नहीं जाएंगी, यहाँ पे 2v3 का ट्रेड लिया गया है यहाँ पे एंड ट्रिपल किट मिला है मैच को। लास्ट टाइम जैसा अपनी टीम को यहाँ पे कैरी करने का ट्राई कर रहे हैं एंड शायद इस बार कर भी पाएंगे शिंगा। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे डेड सोनाटा हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छा। जैसे कि मैंने कहा था वैलेंटीना जो है आगे जाएंगी, वो है रिसोर्सेज अपना वेस्ट करवाएंगी और अपना जो है पारी पूरा करके पीछे से जो डैमेज देने के लिए अपने जो ग्रेंजर है वो तानाशाही रहेंगे वहां पे, और वो जो है डैमेज देते हुए भी काफी अच्छी तरह पारी उन्होंने खेली। और ये जो लॉर्ड है ये जो है सीधा लॉक इन किया गया है उन्होंने, और काफी बेहतरीन ये पारी, ये जो लॉर्ड था काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के साथ इस लॉर्ड के साथ जरूर चाहेंगे कि जो है ऊपर का जो स्तंभ है वो भी तोड़ा जाए, साथ के साथ जो मिड का स्तंभ है वो भी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। काफी अच्छी तरह यहाँ पे वैलेंटीना निकली है और खूबसूरती से यहाँ पे उन्होंने जो है बादाम के उनके जो डॉज करते हुए, लेकिन यहाँ पे उसी के साथ अंदर जाएंगे सीधा। लूकस मौका नहीं देना चाहते, एजी का प्रयोग जरूर करेंगे, गटो का पकड़ेंगे लूकस को अंदर और डैमेज देने का प्रयास करते हुए। क्रेट पीछे से यहाँ पे डैमेज काफी अच्छा देते हुए, और सुयू का आगमन होता हुआ टीम आ चुकी है इस बैटलफील्ड पे। लेन जो है थोड़ी सी सिंक होने का प्रयास करती हुई, टॉप लेन जो है वहां पे भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे गए जाएंगे जरूर, फोबियस आगे गए हैं लेकिन अल्फा अल्ट का प्रयोग करते हुए अंदर जाएंगे, सीधा बचेंगे अपने सीधा। और इसके साथ यहाँ पे मिडिल लेन की तरफ आते हुए हम देखेंगे मिडिल लेन का जो है टावर यहाँ पे पुश करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि नाइन्स विनर अभी जो है आते हुए बदान आते हुए प्रयास करते हुए कि थोड़ा सा पोकिंग किया जाए, कोई मौका दिया जाए, बेट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके साथ यहाँ पे वॉल जरूर लगाई जाएगी गाटोकाचा के ऊपर, और मार दिए हैं यहाँ पे नकल फिश क्रैक। और यहाँ पे गाटोकाचा काफी कम एचपी पे निकलते हुए लॉर्ड आ चुके हैं, यहाँ पे टॉप लेन की तरफ गए जरूर है, और इसी के साथ यहाँ पे मौका जरूर रहेगा पुश करने का। टॉप लेन यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, मिडिल लेन को ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं किया गया, टॉप लेन का इसी समय यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। पूरी टीम आ चुकी है टॉप लेन की तरफ, पीछे हटना पड़ेगा ग्रेंचर की तरफ जो है यहाँ पे बढ़ते हुए सभी लोग, और काफी अच्छी तरह जो है निकाल लिया गया। काफी मेरे को लगा था कि मिड का स्तंभ भी चला जाएगा, लेकिन काफी अच्छी तरह यहाँ पे डिफेंड किया फिनिक्स स्पोर्ट्स ने। जो यहाँ पे डिफेंस देखने को मिला ना फिनिक्स स्पोर्ट्स से बहुत ही उम्दा था, लेवल 1 का लॉट था, मिड लेन का टर्रेट भी बचाया जो बदान ने सेटअप दिया ना वहाँ पे, उसकी वजह से टीम जेपलिन को चूज करना पड़ा कि भाई अपने ज्ञातो को बचाया कि टावर को निकाला था। उन्होंने अपने ज्ञातो को बचाया ड्रीम बैक्शन, तो वो नहीं चाहते कि अब दोस्तों ज्ञातो को थोड़ा और किल मिले। यहाँ पे देखिए एओची 2 बंदे पे कनेक्ट हो चुका है सिंगा।
जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे पकड़ा जरूर है, लेकिन पर्याप्त नहीं डैमेज। पीछे से आएंगे जरूर, डैमेज देने का प्रयास दोबारा से लगाते हुए वॉल जरूर लगाएंगे बताएंगे, लेकिन पीछे हटते हुए डबल किल अपनी झोली में भरते हुए अल्फा ट्रिपल किल भरने का प्रयास, लेकिन ग्रैंजर पीछे से अनस्टॉपेबल लेते हुए वो लेंगे सीधा। काफी अच्छा डबल किल अपनी झोली में भरते हुए अपनी टीम के लिए खेलते हुए 4 बंदे धराशायी होंगे यहाँ पे लेपिंग की तरफ से। थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा जेपलिंग को इस समय, और ये जो मौका रहेगा थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। कुछ ही देर में जो है टीम्स आएंगी, लेकिन वो जो टीम्स आएंगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और इस टाइम का फायदा उठाते हुए वो लेके जाएंगे सीधा टावर अपनी मुट्ठी में करने का प्रयास। और काफी कम एचपी बचते हुए ग्रैंडर का ही खूबसूरत गेम प्ले की बात करूं मैं, जिस तरह से अल्ट कनेक्ट कर रहे हैं, दैट सोनाटा की बौछार करते हुए दिख रहे हैं हमको। काफी बेहतरीन गेम प्ले हमें देखने को मिला अभी तक। बेहतरीन जो मैच है 6-0-1 है, अपनी टीम को बार बार कैरी करने ट्राई कर रहे हैं। जो मिडलिंग का टर्रेट बचाते हैं इन्होंने यहाँ पे 2v1 बहुत ही उम्दा था। यहाँ पे देखिए 8 और किल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे 10 सुनाता है, सीधा बैट देते हुए उनको भेजेंगे सीधा रिस्पॉन्स स्क्रीन की तरफ। और इसी के साथ यहाँ पे काफी अच्छा प्रयास यहाँ पे दिखेगा हमको। अंदर घुस चुके हैं फोबियस, डैमेज देने का प्रयास रोका जाएगा पूरी टीम को। एजी का प्रयोग किया गया है, एक में जरूर पकड़ेंगे, लेकिन काफी कम मैच भी है, उनका खेल लेंगे सीधा जाएंगे क्लिंट अपने बेस की तरफ के लेते हुए। लेकिन अभी जो है लॉर्ड वो फ्री का मिल जाएगा इनको, यहाँ पे जो है जेपलिंग की टीम को काफी इजीली यहाँ पे ये लॉर्ड रहेगा, और ये लॉर्ड का प्रयास उनका काफी इजीली ले लिया जाएगा। और इस स्लॉट के साथ एक और मौका मिलेगा इनको जो है इस लेन को जो है पुश करने का, इस टावर को जो है खत्म करने का। एब्सोल्युटली लेवल 1 का लॉर्ड है यहाँ पे। मिड लेन से टर्रेट नहीं बचे हैं, तो लास्ट फाइनल मेन टर्रेट्स बचे हैं। यहाँ पे वैलेंटीना की पोजीशन देखिए, थोड़ा सा विजन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे लेट गेम पोटेंशियल थोड़ा वीक लग रहा है फिनिक्स ईस्पोर्ट्स। क्या ये जो लॉर्ड आ रहा है इनकी तरफ, लेन सिंक देखिए, टीम जेपलिन का डिसिप्लिन देखिए, लेन सिंक देखिए, कोई भी बंदा मिड लेन का नहीं मार रहा है मिनियंस। कम से कम 2 लेन्स में उनकी सिंक होगी। एंड यहाँ पे फिनिक्स ईस्पोर्ट्स शायद ये डिफेंस कर पाए। बदान सेटअप का ट्राई कर रहे थे, पर यहाँ पे सुडुरु ऑन दैट 4 इयर्स भाई मर ही नहीं रहे। जो सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी टीम प्ले लाइक इमॉर्टल है, वो भाई डैमेज जा ही नहीं रहा उनकी तरफ। एंड यहाँ पे लॉर्ड आ चुका है दरवाजे पे फिनिक्स ईस्पोर्ट्स से। क्या वो डिफेंस कर पाएंगे यहाँ पे शिंड्रा? देखिए प्रयास उनका जरूर रहेगा, लेकिन पीछे से जो फारसा काफी अच्छी जो उनके पास लेन एबिलिटी जरूर है, लेकिन एजू का प्रयोग करते हुए अंदर घुसेंगे सीधा टावर के अंदर, मौका नहीं देना चाहते हैं। और ग्रैंजर डैश सुनाता की बरसात करते हुए अपनी टीम की झोली भरेंगे। पीछे जरूर गए हैं वहां पे फोबियस, पीछे हटना पड़ेगा, टावर का डैमेज बहुत ज्यादा है, और 1 एचपी पे क्या ही कम करते हुए फोबियस आए हैं। मृत्यु को यहाँ पे टक से छू के वापिस आए थे, और उसी के साथ काफी बेहतरीन पारी हमें देखने को मिली है। क्या ही पारी खेली गई यहाँ फोबियस की तरफ से, बाल बाल जाते यहाँ पे बाल बाल बचे हैं। 4 बंदे धाराशायी हो गए यहाँ पे, अल्फा अकेले बचे रहेंगे यहाँ पे डिफेंड करने के लिए। और ग्रैंजर यहाँ पे पोक के करेंगे उनको मौका, उनको जो है पूरा रखना चाहेंगे। इसके साथ यहाँ पे बेस लॉकिंग करने का प्रयास, सीधा लॉकिंग करना चाहेंगे, लेकिन पीछे से जो है यहाँ पे अल्फा आते हुए, लेकिन पूरा पर्याप्त नहीं रहेगा, अकेले नहीं संभाल पाएंगे, और इसके साथ देंगे सीधा विक्ट्री। और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है यहाँ पे जेपलिन ने, और एक कम बैक करते हुए कि कहती हुए कि हम तो ऐसे क्लीन स्वेप में नहीं जाने वाले, हम आते हैं कम बैक करते हुए। और मैक्स इस बार कई बेहतरीन पारी खेली है इन्होंने, 10-0-3 का स्कोर होता हुआ, और अपनी टीम को एक और मौका दिलवाते हुए। और कहीं ना कहीं जो फोबियस है उनके भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो लास्ट उसमें मेरे को लगा था कि वो मृत्यु को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन 1 एचपी पे जाते जाते लेके गए अपने एनिमी हीरोज को। जो यहाँ पे शिनरा मैक्स ने अपनी टीम को कैरी किया ना, 10-0-3 8 बार भी नहीं मरे। एंड आई थिंक फिनिक्स ईस्पोर्ट्स यहीं पे चूक गए। 8 बार तो शट डाउन करना था मैक्स और किसी का ध्यान गया नहीं। एंड गेम नंबर 3 थोड़ा सा रोमांचक होने वाला है। दोनों टीम्स यहाँ पे सेमीफाइनल्स के लिए फाइट करने वाली हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे सर्वर मुंबई होगा एंड फर्स्ट पिक जाएगा टीम फिनिक्स ईस्पोर्ट्स को। एंड देखते हैं, टीम्स आर गेटिंग रेडी अप राइट नाउ। क्या ही बेहतरीन पारी चली गई थी, लेकिन ये मौका अभी जो है एकदम कड़ा हो चुका है। स्टेक्स अब जो है और भी हाई हो चुके हैं, क्योंकि अब एक ही मौका है इनके पास, ये लास्ट मौका रहेगा। कौन पारी खेल के जाएगा, कौन पारी जो है अपनी पूरी करके जाएगा, देखना रहेगा यहाँ पे। और इसी के साथ किस तरह का गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा, कई बेहतरीन गेम्स हमें अभी तक देखने को मिले हैं। और
काफी अच्छे जो गेम्स हमें देखने को मिल ही रहते हैं मैक्स की तरफ से। जो बेहतरीन पारी खेली गई थी यहाँ पे, क्या इस बार यहाँ पे मैक्स को ब्लॉक किया जाएगा? क्या पूरा फोकस जो है फिनिक्स स्पोर्ट्स का इस बार मैक्स की तरफ रहेगा? क्योंकि 2 बार हमने देखा जिस तरह से खेलते हैं वो और अपनी टीम को जो है आगे लेके आते हैं। देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। बेशक लास्ट मैच दोनों टीम्स 1-1 का स्कोर, दोनों टीम्स के उनके मेन सर्वर नहीं थे यहाँ पे। एंड द थिंग इस बार सर्वर एडवांटेज थोड़ा सा जेपलिन के पास होने वाला है। उनका होम ग्राउंड है, उनका मुंबई है, पर उनके पास फर्स्ट पिक नहीं होने वाली। एंड अगर हम मैच का प्रदर्शन की बात करें, मैच फर्स्ट गेम ने भी अपनी टीम को कैरी किया था, सेकंड गेम पे भी कैरी किया था। उसकी टीम जो सेटअप प्रोवाइड कर रही है, बहुत ही बेहतरीन सेटअप्स प्रोवाइड कर रही है फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स। दे नीड टू शट डाउन, राइट, दे नीड टू शट डाउन दैट मैच, दे नीड टू शट डाउन दैट गोल लेना, वही प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, उनको जो है वहां पे जो है मौका नहीं मिल रहा है। उनको जो है वहां पे बार बार जो है फोकस करना पड़ेगा। इस बार मैक्स को जो है पूरी तरह से शट डाउन करना जाएगा, उनको जो है कॉर्नर करना पड़ेगा, तब जाके ये मौका उनके हाथ में रहेगा। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत पाली। और दर्शक को वो बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं ओडिसी सीजन 1 और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है काफी बेहतरीन टूर्नामेंट होता हुआ। और उसके साथ यहाँ पे पहला जो बैन है वो जाता हुआ टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ। शिन करेंगे पहला बैन, क्या यहाँ पे बैन हमें देखने को मिलेगा? क्या इस बार किस तरफ जाता हुआ जो बैन है हमें देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे मटिल्डा दोबारा से बैन होते हुए दिखेगी, या फिर जाएंगे अपने जो है जॉय बैन की तरफ, या फिर करेंगे कोई टैंक बैन? जो फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स है ना, वो अपने रेगुलर बैन ही करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम सलीना बैन भी देख सकते हैं, लाइक जिन्होंने 2 गेम लगातार सलीना बैन किया है। देखिए जॉय बैन किया है, जो तीनों गेम बैन हुई है फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। जी बिल्कुल, मौका नहीं देना चाहेंगे उनको। और दूसरी तरफ देखा जाएगा केलिया, उनको जो है बैन किया गया है, नहीं मौका चाहता है कि केलिया इस बार दोबारा से आए यहाँ पे। और काफी अच्छा गेम यहाँ पे चलता हुआ हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ यहाँ पे देखते हैं सेकंड बैन, पैनिक क्या बैन करना चाहेंगे यहाँ पे? क्या यहाँ पे फूबियस बैन किया जाएगा इस बार? फोबियस बैन हो सकता है, स्पेशली आफ्टर द लास्ट गेम। हमने देखा फोबियस कैसे टैंक कर रहा था, कैसे सेटअप बनाया गया था। टीम फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स के पास फोबियस का जवाब ही नहीं था, डैमेज तो जा ही नहीं रहा था उसके ऊपर। पर देन अगेन हम देखें तो इन्होंने सलीना दोनों गेम पे बैन किए, तो शिंड्रा यहाँ पे सलीना के चांसेस बैन होंगे ज़्यादा हैं। और यहाँ पे देखिए लूकस बैन किया गया है, वो नहीं देना चाहते क्योंकि 2 पिक्स मिलेंगे यहाँ पे टीम जेपलिन को अगर फिनिक्स पहला मेटा पिक उठाती है तो। जी बिल्कुल, यहाँ पे उनको जो है मौका नहीं देना चाहेंगे, लूगस बैन किया गया है। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो टीम जैपलिन की तरफ से दूसरा बैन आता हुआ हमें दिखेगा कुछ ही देर में। और क्या बैन करना चाहते हैं यहाँ देखेंगे। यहाँ पे बैन किया गया है चमकादड़ जी को, तो यहाँ पे कोई भी लेट गेम इंश्योरेंस नहीं देना चाहती है टीम जैपलिन। और हो सके तो जितना जल्दी अर्ली जो है इस बार गेम फिनिश करना चाहती हैं वो। और आदित्य इस तरफ से हमें दिखेगा फिनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से तीसरा बैन आता हुआ। क्या करना चाहेंगे यहाँ पे बैन? देखते हैं क्या वो जाएंगे हाईलॉस की तरफ, क्या वो जाएंगे फोबेस की तरफ, या फिर जाएंगे वो जो है अपनी मटिल्डा की तरफ, या फिर जैसे कि आपने कहा सलीना की तरफ। सलीना तो मुझे अभी भी लग रही है। एंड जो यहाँ पे जेपलिन ने सिसिलियन बैन किया है, तो वो नहीं चाहते कि लेट गेम तक गेम खींचे, किसी को भी लेट गेम इंश्योरेंस नहीं देना चाह रहे। एंड यहाँ पे आदित्य हैरिस भी बैन कर सकते हैं, हैरिस भी स्ट्रॉन्ग है टीम जेपलिन का। पर देखते हैं, वो सोच रहे हैं डेफिनेटली कि क्या बैन करना चाहिए, क्या क्या ऑन है अभी आर्सेनल में। एंड अभी भी सोच रहे हैं, लास्ट बैन पे इन्होंने फार्स का बैन किया जाए तो एक रेंज मेज, क्या मतलब थोड़ा सा पोकिंग मैकेनिज्म वाला सोच रहे हैं, क्या वो रेंजर उठाएंगे यहाँ पे शिंड्रा? रेंजर भी ओपन है, हैरिस भी ओपन है, सोयो भी ओपन है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मटिल्डा को बैन किया जाएगा। और उसके साथ शेयर उड़ाएंगे पहला पिक। वो जाना चाहेंगे, क्या ही लेन यहाँ पे है जो है यहाँ पे उठाना चाहते हैं। देखेंगे कुछ देर में। अभी जो है पिक करना चाहेंगे, क्या वो जाना चाहेंगे असैसिन की तरफ, क्या वो जाना चाहेंगे गोल्ड लेन की तरफ? काफी सारे पिक्स जो है अभी जरूर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सुयु को लॉक इन किया गया, सुयु को सीधा लॉक इन करते हुए। लेकिन मैक्स उसी के साथ जवाबी हमला बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए उठाएंगे सीधा है, तो उसी के साथ यहाँ पे उठा लिया गया है फोबिस दोबारा से। और यहाँ पे सुगुरु दोबारा से फोबिस उठाते हुए वो आ चुके हैं अपने फॉर्म में। और ये जो टीम है पूरी टक्कर का जो है फाइट हमें देखने को मिलेगा। 2 पिक दोबारा से चाहेंगे यहाँ पे अपने जो है पैनिक और क्या पिक करना चाहेंगे फिनिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से,
देखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या यहाँ पे हमें कोई मिन्सी पिक देखने को मिल सकता है या फिर देखने को मिलेगा कुछ और? मिंसी बेशर्त है लाइन पे उठाने के लिए, पर मुझे नहीं लगता मिंसी वो उठाएंगे। सीसी भी ऑन है यहाँ पे। बदान एमएफ पैनिक ऑन दैट बदान। 3 गेम तीनों बदान एंड परफेक्ट सेटअप्स। एंड देखिए हाइलोस भी उठा दे गया है, तो फ्रंट लाइन जो सैंडबैग्स होते हैं, मिट्टी के बोरे, वो आ चुके हैं यहाँ पे टीम फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स से द्वारा। तो फ्रंट लाइन तो बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। हैरिस एंड फोबिया से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा टू चॉप देम डाउन। बस देखते हैं। राइट नाउ फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स दे नीड समथिंग टू डिश आउट दैट डैमेज, एक्सप्लोसिव डैमेज कौन देगा? उनका मेज एंड एमएम अभी भी बचा है, रेंजर भी ऑन है एंड जी सैट हियर, ही इज गोना गो ऑन दैट अल्फा। अल्फा हाइपर करना चाह रहे हैं वो ट्रू डैमेज। टैंक की एनिमी में ट्रू डैमेज जाऊंगा भाई, तुम कितना टैंक की बनाओगे? जी बिल्कुल यहाँ पे, और इसी के साथ ट्रू डैमेज को लॉक इन किया गया है। अल्फा को उतारा गया है इस युद्ध भूमि में, और अल्फा का आगमन जरूर होता हुआ तो आगे की तरफ खेलेंगे वहां पे। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो पारी यहाँ पे देखी गई है तो किस तरह से जाती है। एनिमी टीम यहाँ पे बैन करना चाहेंगे, डेथ बॉम्ब यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे बैन क्या करना चाहेंगे देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे अभी भी जो है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेज अभी भी खुला है, तो मेज शायद बैन करना चाहेंगे। गोल्ड लेन यहाँ पे बैन किया गया है। ग्रैंजर को इस बार मौका नहीं देना चाहते हैं, तो ग्रैंजर इस गेम में हमें देखने को नहीं मिलेगा। और डेट सोनाता की जो बौछार है वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरह देखा जाए तो गैटो काचा यहाँ पे लॉक इन किया गया है, कोई मौका नहीं देना चाहते हैं गैटो काचा को। और उसी के साथ देखा जाए तो क्रीम यहाँ पे क्या बैन करना चाहेंगे, लास्ट बैन जो आखिरी बैन रहेगा, कि मेज अभी भी ओपन है उनकी तरफ से। एमएम की लेन जो है वो भी ओपन रहेगी यहाँ पे। तो क्या शायद हमें यहाँ पे इनिशियल बैन देखने को मिलेगा, या फिर जो है कोई और मेज हमें देखने को मिल सकता है बैन? यहाँ पे वो डेफिनेटली अपने एमएम को थोड़ा सा स्पेस सेफ बनाना चाहते हैं, तो जो हैरिक को काउंटर करने वाले मेजेस एमएम होंगे ना, शायद वो बैन करना चाहते हैं कि फ्रंट लेना तो ऑलरेडी पिक हो चुका है यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ पे एयरटेल भी बैन किया जाए। वो चाहते हैं कि इनका हैरिक के इनको मैच से थोड़ा सा इजी गेम मिले, क्योंकि इन्होंने बार बार दिखाया गया कि वो कैरी कर सकते हैं अपने गेम प्लेयर द्वारा। उनका पूरा रोटेशन मैक्स के ऊपर है। यहाँ पे जोशिन बैन किया गया क्योंकि टैंकियर हीरोस है, बदांग है, हाइलोस है, वो बार बार पोर्ट का शिकार हो सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो फोर्थ पिक है डेड बॉम्ब की, वो एक अरोरा लेने वाले हैं, जो सीसी प्रोवाइड करती है अरोरा विद हर पैसिव। भाई इसकी सर्वाइवेबिलिटी ऊपर ही बढ़ जाती है, तो एक बेहतरीन पिक है यहाँ पे। पर अरोरा के साथ वही रहता है, थोड़ा एम्बुश करके खेलना होता है, स्किल्स हिट करने होते हैं यहाँ पे शिनरा। जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा संभल के जरूर खेलना पड़ेगा इनको, और छुप के खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि लॉक इन किया जाएगा अरोरा को, और जो है काफी बेहतरीन पिक भी है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे काउंटर करना चाहेंगे। उसी के साथ यहाँ पे काफी अच्छा मैं देख रहा हूँ आदित्य की तरफ से वैक्साना को पिक करने का प्रयास किया जा रहा है। शायद उनको जो लॉक इन किया जाएगा यहाँ पे, और काफी अच्छा पिक यहाँ पे रहेगी वैक्साना, क्योंकि अल्फा जो है आगे आके खेलने वाले हीरोज है, अगर आगे आएंगे तो उनको सीसी वगैरह देने के लिए भी काफी अच्छा रहता है यहाँ पे। लेकिन अभी लूनोक्स के ऊपर हवावर कर लिया गया है, तो शायद लूनोक्स की तरफ जाना चाहते हुए उनकी इम्यूनिटी है काफी अच्छी ज्यादा रहती है। तो देखना पड़ेगा किस तरफ ये सिक्का झुकेगा इनका। और थोड़ा सा जो है हवर जरूर किया गया है, 3 हीरोज बदले हैं यहाँ पे। और अभी जो है हवर किया जा रहा है अपने जो है यहाँ पे जेवियर उनके ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कैरी को पिकअप किया गया है, कैरी को लॉक इन किया गया है, और यहाँ पे लॉक इन कर लिया जाएगा कैरी। और मेज काफी अच्छा पिक रहेगा यहाँ पे। उसके साथ क्या पिक करना चाहते हैं, क्या वो यहाँ पे चिप उठाना चाहेंगे या फिर उठाना चाहेंगे कार्मेला? देखना पड़ेगा। अगर वैसे बात करूं मैं पिक्स की, तो कार्मिला भी काफी अच्छा पिक बन सकता था, लेकिन यहाँ पे उठाया गया है टिग्रेल। यहाँ द पे ब्रेव देखिए मैन नेवर हाइड इन द बुश। शिनरा लेकिन यहाँ पे जैसे अपने जो ही टिग्रेल जैसे भैया ही टिड्रेल उठाया गया ना, स्पेल सीधा चेंज हो गया, प्यूरीफायर उठाया है उनके बेज और उनके एमएम में। वो जानते हैं भाई टिड्रेल से तो नहीं बचेंगे। एक बार टिड्रेल का बॉम्बो टॉम्बो हिट हो गया तो अरोरा भी नहीं जीतने देगी यहाँ पे। अरोरा सीधा जंप करेंगे, अल्फा सीधा जंप करेंगे, हैरिक तो है ही भाई, एंड फोवियस कर तो जंप वाला ही है, मल्टीपल जंप्स करते हैं, तो वो थोड़ा सा ही रिस्पेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे शिनरा। जी बिल्कुल, हाँ अभी जो है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहने वाली थी। और यहाँ पे जो है एक ऑफ जरूर कर लिया गया है। और उसी के साथ
काफी अच्छी टीम बनती हुई है, इतनी अच्छी खासी सबकी जो है स्किन्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं फोबियस हमारे बेचारे लेफ्ट आउट रह जाते हैं। प्लीज अपने विस्टा जी प्लीज एक अच्छी स्किल्स निकालिए फोबियस के लिए ताकि हम भी खेल पाए। बेचारा कब से आया है, अभी तक एक स्किन नहीं मिली है उसको। और इसी के साथ यहाँ पे आगमन होता हुआ आए हैं हम लोग लैंड ऑफ डाउन की दुनिया में, और यहाँ पे जो है युद्ध होने वाला है बहुत ही बेहतरीन। दोनों ही टीम 1-1 के स्कोर पे है, और इसी के साथ ये जो जीतेगा वो जाएगा सीधा आगे, और जो हारेगा वो सीधा जाएगा घर। और यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरह से खेला जाएगा। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे खेती बाड़ी करते हुए दोनों ही जो टीम्स है वो जाएंगे अपने अपने ऑरेंज बफ की तरफ, वो लेते हुए वहां पे अपने अपने बफ की तरफ बहुत ही इजीली अपने बफ लिया जाएगा। और अगर देखा जाए तो मिड लेन की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हवर किया जा रहा है, और यहाँ पे जो टैंक है काफी अच्छा खासा यहाँ पे जो है विजन प्रोवाइड करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा इन्वेट करने का सोचेंगे जरूर कि जो है यहाँ पे इन्वेट किया जाए या ना जाए। लेकिन मेज उनको पता है कि वो वहां पे है, तो उसी के साथ बुश चेक जरूर करेंगी। और काफी अच्छा खासा जो है अभी गेम हमें देखने को मिला है, काफी डिसिप्लिन गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम के बीच में। अभी तक कोई भी हमें ऐसा कोई रेकलेस मूव हमें देखने को नहीं मिला है। और इसी के साथ यहाँ पे अल्फा उनका आगमन जरूर हो गया है इस गेम में, वो आएंगे यहाँ पे सीधा बॉटम लेन की तरफ वेट करते हुए, क्योंकि लेवल 4 अभी तक नहीं हुए, और अभी थोड़ा सा संभल के देखना पड़ेगा लेवल 4 हिट होता हुआ उनका। और इसी के साथ यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास करते हुए उनकी पूरी टीम ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गई है, और टीम जो है वो आ गई है। पोकिंगबाजी जरूर की जाएगी, लेकिन अल्फा जो है वो निकल जाएंगे सीधा अपने जो है कछुआ महाराज की लोकेशन पे, क्योंकि कुछ देर में जो है उनका जो है आगमन होगा इस लैंड ऑफ डॉन में। और यहाँ पे दोबारा मेज को पकड़ने का प्रयास करने का छोटी सी कोशिश, लेकिन पीछे हट जाएंगे। अभी जो है ज्यादा की फाइट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और टॉप लेन की बात करें तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत जरूर दी जा रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ अपने जो हाइनस है वो गए हैं एक्सपी लेन, और बादाम जो है वो रोम गए हैं यहाँ पे। तो काफी अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा वो प्लॉट बना हुआ है, क्योंकि अभी जो है फोबियस उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो उनको जो है आगे नहीं आने देंगे, और जो है बार बार उनको जो है एक ही जगह बिजी करके रखेंगे। लेकिन वहां पे देखा जाए काफी अच्छा यहाँ पे अल्फा का मूव हमें देखने को मिल रहा है। आए जरूर थे यहाँ पे, लेकिन छुआ नहीं पाएंगे बफ, पीछे हटना पड़ेगा, संभल के जरूर खेलना पड़ेगा। यहाँ पे ग्लोरियस पाथवे का जरूर इस्तेमाल किया गया है, मेज की तरफ से लगाएंगे जरूर, लेकिन फर्स्ट ब्लड लेके जाएंगे वैक्साना अपनी झोली में भरते हुए। पीछे हटना पड़ेगा मेज को, नहीं तो बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। फोबियस वहां पे कहीं ना कहीं लास्ट स्टैंड पे चलते हुए डैमेज देने का प्रयास, लेकिन पूरी टीम यहाँ पे दानाशाही होते हुए 3 किल अपनी झोली में भरेंगे फिनिक्स स्पोर्ट्स। और काफी बेहतरीन गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग से। बेहतरीन गेम प्ले 3-0 का स्कोर है। एक हजार की गोल लीड ऑलरेडी आ चुकी है, पर देन अगेन मैच तो नीचे फार्मिंग करने दे रहे हैं। हमने मैच तो देखा है भाई शिंदर कैसे वो कैरी करते हैं, पर यहाँ पे जो बदान का सेटअप था ना, अर्ली गेम सेटअप जो बदान के द्वारा पैनिक के द्वारा दिए जा रहे हैं, वॉज ऑन पॉइंट। वहां पे इन्होंने वॉल बनाया, अल्फा को पकड़ा, टेड्रियल को पकड़ा, लेवल 4 हुए, अपना अल्ट मारा है, अपनी टीम को किल दिया वहां पे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए ना फोबियस को कितना ज्यादा जोन आउट किया जा रहा है, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि वो जो है एक बार भी जो है अपनी लेन स्विच की जाए। बार बार उनको जो है अपनी लेन पे ही रह के लेन क्लियर करना पड़ रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा इंगेज हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन एमएम बहुत ही ज्यादा सेफ खेलती है। उन्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है अभी उनको जो है सेफ खेलना। अभी जो है अगर जो है किल ले लेंगी वो, तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ सकती है। लेकिन उसके साथ अल्फा गए जरूर है बादाम को डैमेज लाने का प्रयास करते हुए, लेकिन ज्यादा स्टन दिया गया है। सुयु पीछे से आएंगे, खाली करेंगे सीधा अल्फा को, भेजेंगे सीधा मृत्यु के द्वार, और डबल किल अपनी झोली में भरते हुए सुयु काफी बेहतरीन खेलते हुए डबल किल अपनी झोली में भर चुके हैं। और बॉटम लेन पे कहीं ना कहीं मैक्स तोड़ से खतरे में जरूर रहेंगे यहाँ पे, और सीधा ट्रिपल किल, क्या ही बेहतरीन यहाँ पे बो एरो मारा है, यहाँ पे सीधा उनको भेजा गया है रिस्पॉन्स स्क्रीन पे। और कहना चाहूंगा यहाँ पे सुयु को अभी जो है अर्ली गेम एडवांटेज वो मिल चुका है, स्नो बॉलिंग जो है और जो रहती है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो अभी जो गेम है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। सीधा स्नाइप किया गया था यहाँ पे मैच, तो इनको पता था भाई कि मैच कौन से बुश पे टर्टल यहाँ पे स्पॉन हो जाए, जहाँ हमें यहाँ पे एक फाइट देखने को मिलेगी। सही और सीधा शट डाउन कर चुके हैं टर्टल, तो यहाँ पे एक फाइट देखो, हाइलोस ने अल्ट मारा है, स्लो डाउन किया है, सीसी प्रोवाइड किया है, वॉम्बो कॉम्बो जा रहा है। टेड्रियल यहाँ पे अपना सेट्स नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे मिड लेन पे एक और फाइट देख सकते हैं, अरोरा ने अपना अल्ट पॉप किया, सईओ ने यहाँ पे जंप किया, टावर डैमेज ले रहा है, अरोरा का पैसिव हिट हो चुका है यहाँ पे, एंड 2 प्लेयर शट डाउन हो चुके हैं, 3 प्लेयर शट डाउन हो चुके हैं यहाँ पे टीम ज़ेपलिन। यहाँ पे रिकॉल मारा जा रहा है,
लॉर्ड अकेला टावर मारा जा रहा है पर नहीं, मिड लेन का टावर बचेगा। मैक्स यहाँ पे रिकॉल मारते हुए इनको पता है अगला निशाना मैं ही होने वाला हूँ। यहाँ पे बदान के ऊपर भी थंडर बेल्ट आ चुका है। सही हो, देखो कैसे फार्म चुरा रहे हैं, ब्लू बफ ही चुरा लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फोबियस माइट भी इन ट्रबल, थोड़ा सा सीसी पड़ेगा क्या? वैक्साना का सीसी हिट तो हुआ है, टावर मिड लेन का निकालने ट्राई कर रहे हैं पर नहीं, मिनियंस खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे बदान थोड़े से आगे, क्या वो पनिश होंगे यहाँ पे? एंड पनिश होंगे शायद, हैरिट नहीं जाने दे रहे पर 1 HP पे बच के निकल रहे हो यहाँ से। ठीक है, 1 HP एंड अभी भी रिकॉल नहीं मार रहे शिंड्रा, वो रिकॉल मार रहे। जी बिल्कुल, बाल बाल यहाँ पे बचे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह का प्रयास रहेगा। एंड बॉटम लेन पे थोड़ी सी फाइट देखने को मिल चुका है। यहाँ पे टॉप लेन सहीयों ने पुश किया, यहाँ पे हैरिक को फंसाने का ट्राई किया था, वैक्साना ने अपने अल्ट मिस किया, उसके बाद स्टन 3 सेकंड पे आया। यहाँ पे अरोरा ने स्टन हिट किया है पर स्टन भी मिस हुआ। यहाँ पे हाइलो सैंड बैट बनते हुए यहाँ पे 4v3 फाइट है, पीछे से सहीयो भी फाइट के अंदर आ रहे हैं। हैरिक क्या यहाँ पे किल निकाल पाएंगे पर नहीं, फ्लिकर यूज करना पड़ा यहाँ पे हैरिक को बचने के। सेयो बैक लाइन पे स्टन का प्रयोग करने का ट्राई कर रहे थे पर नहीं, टीम ज़ेपलिन यहाँ पे ऑन लो HP। बदान भी आ चुके हैं यहाँ पे फाइट में, टावर के अंदर घुसाया गया है, 1 HP है, बदान फिर से बचेंगे। एंड बॉटम लेन टर्रेट तो निकालने का पूरा ट्राई करेंगे, मिड लेन भी निकल सकता है यहाँ पे शिंडा। पूरी टीम रिकॉल मारते हैं यहाँ पे टीम ज़ेपलिन की। जी बिल्कुल, पूरी टीम जो है यहाँ पे रिकॉल मारती है और उसके साथ ही स्तंभ जो है बार बार टूटते हुए, और ये जो स्तंभ टूट रहे हैं लेट गेम में जो है बहुत ज्यादा दुखद हो सकता है इनके लिए। ऑलरेडी जो है यहाँ पे अभी 7 मिनट भी नहीं हुए और ऑलरेडी जो है यहाँ पे मिड लेन का जो स्तंभ है, टॉप लेन का स्तंभ है, वो जा चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है भारी पड़ते हुए टीम हमें दिख रही है इस बारी। जो अपनी फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स है वो इस बार मौका नहीं देना छोड़ना चाहती है उनके लिए, और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ा संभल के उनको खेलना पड़ेगा। ये जो प्रारंभ रहेगा वो थोड़ा बच के खेलने वाला है इस समय। तो कहीं ना कहीं जो फार्म डिफरेंस है अभी उनको जो है बराबरी में लाना पड़ेगा। तो अभी जो पीछे रह के फार्म करने का जो है वो प्रयास रहेगा। फार्म डिफरेंस बाकी 2 गेम्स में इतने नहीं थे, 1-2 हज़ार का लीड था पर यहाँ पे टीम ज़ेपलिन 6000 गोल से पीछे है। उनका सर्वर मुंबई है एंड अभी भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं वो। यहाँ पे ड्रीम बैशियन 8 भी सेट नहीं मार पाए एंड पर टिड्रेल एक ऐसा हीरो है ना, इन अ सिंगल सेट वो पूरा गेम बदल देता है। यहाँ पे देखिए पकड़ा गया, वैक्साना ने अल्ट मारा दिया, बदान यहाँ पे चेन लॉक कर रहे हैं, ड्रीम बैशियन अल्ट मारने का ट्राई कर रहे थे पर अपना अल्ट बचाएंगे। टॉप लेन पे सही हो, अकेले फाइट कर रहे हैं, सीसी स्टन मिला है, क्या उनके पास डैश है? डैश मारा गया है यहाँ पे एंड 1 HP भागेंगे यहाँ से। मिड लेन पुश किया जा रहा है, टॉप लेन देखिए वैक्साना जैसे घात लगा के बैठी हुई है, अपने MM को पूरा विजन प्रोवाइड कर रही है कि भाई कर ले तू पुश टावर, तेरा भाई देख लेगा। एंड यहाँ पे देखिए बदान भी बैठा है, लाइक पूरा विजन प्रोवाइड कर रहा है। टीम ज़ेपलिन को पूरा घूम के पीछे जाना पड़ रहा है, उतने टाइम पे टावर गायब कर दिया गया। यहाँ पे टॉप लेन की तरफ अब नजर निकालेंगे, यहाँ पे सोयो ने जंप मारा है, एल्फा की थोड़ी सी HP कम है यहाँ पे, जी सैड। एंड इफ यू लुक एट दैट, वो मैच को फिर से थोड़ा बहुत फार्म करने चाह रहे हैं यहाँ पे शिंड्रा। जी बिल्कुल, मौका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इनको और थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। तो उसके साथ यहाँ पे दोबारा से वॉल लगाते हुए भाई खूबसूरत वॉल लगाई है, पीछे शुरू आएंगे माउस किल लेके सीधा अपने जो है अपनी झोली में भरेंगे। लेकिन यहाँ पे इस बार जो है क्रॉस फोर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे डैशेस मारते हुए और हर डैशेस के साथ जो है डैमेज देने का प्रयास करते हुए, लेकिन फार्म की कमी के कारण वो डैमेज जो है पर्याप्त नहीं है। एक ही बंदा निकालेंगे, 2 बंदे अपने जो है धाराशायी होते हुए उनको दिया गया है यहाँ पे मृत्युदंड। और उसी के साथ यहाँ पे बहुत ही मुश्किल भरा सफर रहा है यहाँ पे। 12-2 का यहाँ पे स्कोर होता हुआ, 12-2 की स्कोर पे टीम अगर फार्म डिफरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1-1 का यहाँ पे फार्म डिफरेंस वो आता हुआ, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा यहाँ पे। लेकिन अभी भी जो है नजरें जो है वो मैक्स के ऊपर बनी रहेगी। उनके पास जो है अभी एक आखिरी मौका रह सकता है कि वो जो है कमबैक कर सके, क्योंकि अगर जैसे उनके आइटम्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत जो है खत्म हो सकती है। अगर आइटमेशन की बात किया जाए तो एक बार अगर नजर जरूर डालना चाहेंगे कि कितने यहाँ पे आइटम जो है कंप्लीट हुए टीम्स के, देखा जाए तो काफी अच्छे खासे यहाँ पे आइटम हमें देखने को मिले। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 2 और 3 जो आइटम हमें देखने को मिले। सुयू का स्काई आईपीएसआर भी आ चुका है, तो अभी इसके साथ जो है स्काई पीएसआर के साथ साथ जो डैमेज है वो भी आएगा। देखते हैं अब टीम की तरफ अगर जाएंगे यहाँ पे मैच की तरफ देखते हुए, और टॉप लेन की तरफ थोड़ा सा जरूर हालचाल बढ़ता हुआ। बदाग दोबारा से पोक करने का प्रयास करते हुए बार बार टिग्रेल को, उनको जो है मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि एक तरीके से जो है टिग्रेल आए और अपना जो सेट वो लगा पाए, वो बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा, उनको बार बार जो स्टन कर दिया जा रहा है। और
ये जो कहीं ना कहीं जो मौका ना देना है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा वो यहाँ पे ग्लोरियस पाथवे का भी जो है पर्याप्त यूज करते हुए बादाम गए जरूर है अंदर। और लॉर्ड के साथ यहाँ पे लेंगे सीधा टावर, टावर उठा लिया गया है, अल्ट का प्रयोग किया गया है, लेकिन सीसी इतना ज्यादा है मौका नहीं दिया जाएगा। टैंक जाएंगे सीधा घर, टाटा बाय बाय किया जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पे प्रयास रहेगा, छोटा लॉर्ड अभी रह चुका है, मिनियंस आ चुके हैं एनहांस, और उसी के साथ मिनियंस आने के साथ ये थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल रहेगा। उसी के साथ फिनिश स्पोर्ट्स जाएगी सीधा आगे और लहराएगी अपनी विक्ट्री का परचम। फिनिश स्पोर्ट्स व्हाट अ मैच भाई, सीधा डोमिनेशन किया थर्ड गेम में, एक भी चांस नहीं किया जेपलिन को। एंड लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कैरी ने यहाँ पे बेस हिट मारा था, ठीक है, वो इनका लॉट कर दिया था इन्होंने बेस, उनको पता था कि मुझे यहाँ पे एंड करना है, ज़्यादा लंबा गेम नहीं खींचना है, अल्फा का पावर स्पाइक नहीं आने दूंगा। एंड यहाँ पे लास्ट में ग्रिम बैशन को एक भी सेट मारने नहीं दिया, वो गए थे सेट बनाने पर उससे पहले ही इनको भी सीसी लॉट दिया था। एंड विद दैट शिंड्रा वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, ड्राइवर ट्रिया आपके साथ है, गेम नंबर 2 लाते हैं हम यहाँ पे। एंड congratulations Phoenix Esports to moving towards the semi-finals, and with that we will be taking a short break as well. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got ascending to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I'm inching, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got ascending to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I'm inching, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to
to test out my limits. I got descending to Guinness. I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to where I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got descending to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a... And hello, beautiful people. We are here, and this is match number 2 between Avalon Extreme versus Male Detta. And the thing is, Avalon they won the toss, they picked the server Bengal, and they will be having the first pick. This is the quarterfinals, and with me, I do have Bell here. आपका Bell, how are आपका you? माइक आपका आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है. I'm fine, and today I'll be here with Sunny, casting the match. We'll try our best to entertain you guys. Stick with us, watch this match, and with this we'll be starting the drafting phase. The first ban goes to the side of Avalon X Dream Team, and with this lane we'll start the ban. I am not the only one Your bound team by is these banning. chains. And the first ban coming from the side of Avalon X Dream Team is the Phobius. You know that Phobius is quite annoying. And after getting some snowball, he is Your literally team over is tanky, banning. taking no damage, like literally takes no damage and deals a huge amount of damage, going to the back line and doing the stuff. Absolutely, Bell. And the thing is, there's Rose Kalia, right? She's the perfect hero. She can fit in any role, and that's a good ban. And 4 years, with that 4 years, I think the team Avalon, they might be going for that, the Your Harith team or a is dashing banning. hero. Harith, a Joy, and look at that. The Selena has been banned. The Queen of Stunts has been banned. That's a massive ban as well. Always on the And way. Matilda as well, Your Bell here. team is banning. Yeah, the Matilda, you know, the amount of survivability she brings to the team along with the heal and those dashes. She's really a pain. She's really in the pain in the late game, especially. And you know the combo of her along the alpha as well as the eco. Maybe that's why they decided to take this out. Absolutely, the team Avalon, they are thinking about what to ban here. And honestly, they can ban a tank here as well. An assassin, the Looters is open, the CEO is open, even the Hylos is open, even the Harith and Ranger is open. But they will be going with that Sicily the late game insurance here. Okay, that's a good ban. That might be a respect ban as well. But Sicilian here, when the enemy does have an arsenal, does have two picks here to, get that. But here you go, we do see a Dushin ban. Okay, the male dicta, they might be going for that, fight the composition here. Yes. The fighter composition might be coming. You know, there's Yushin. She like pokes
pose the hell out of the tanks as well as the fighters. And as you said, the first fighter came from the sides of Team Avalon is the Badang. You know the Badang, like that amount of CC he brings to the team, that fish breaks, fish crack combo, pinning the enemies to the walls for quite a long time. And with this, we'll be seeing the Granger gets picked from Peanut. And you know the Granger, his poke is really troublesome. And with this, we might see an highlight coming from the sides of Team Maledicta, and the highlights did came. Absolutely, and look at that. The Harith has been picked and the Badan. So both the teams they do have two better heroes right now. The Ranger and Hylos as well. The Sandbag and the Poking Mechanism. The CC Lord Badan and the Harith, the dancing kid, is here at the third pick. What's it gonna be? Honestly, I don't know because Seyo is still open. He is the one of the best assassins right now in the meta, and you should just go for the meta picks, right? If you're playing a tournament, the meta picks are meta for a reason right now. The team Avalon, they are thinking about that, the picks, and we are gonna see a Fanny here. Okay, a Fanny here for the team Avalon. This is gonna be an exciting, but the thing is, the Hylos, he kind of like soft counters that the Fanny pit here. You never know, the Fanny can be good. It might be a a six table Fanny as well, but Yeah, the Fanny, the amount of split push along with the burst she brings to the team in the early game. Her burst is like untakeable for any of tanks along with the marksmen, and she can literally burst any heroes in the early game. And in the late game, she offers those side lane pushes. She's really some troublesome hero. The team Maledicta, they got to watch out for that Fanny. And to the answer of Fanny, they bring Link to the table, someone who can chase the enemies and is a late game monster. He too brings that split push they needed in this composition. But will this Link manage to like counter this Fanny? Like Link too needs that blue buff. Both of the teams are right now dependent on their blue buff. and look at that, the Ratatocha has been banned here. The lane here might be a dicey pit. He can get punished for that lane ping. Especially if the team Avalon they go for an early game, composition. They still have that, the Expileno, the Badan, that can be a flex pick as well. So it might be risky here. The mid lane is still open. And Eve here with an Hilda will be disastrous for Team Male Dita as they don't have the early game right now, right? And the lane he needs that early game. And if your opponents have a Fanny, that Fanny can definitely invade, right? Bro, he can definitely invade that blue buff or a red buff if he wishes. If you want to play safe, that's another thing. But then again, look at that. The Vatsana has been banned. So the team Avalon, they don't want any, the CC, the chain CC. Especially when you have a Fanny, especially when you have the Harriet. You can see the Harriet is on a purifier, so he wants to dance. And the team Male Dicta, they understand that their early game is weak, so they will be banning that Hilda. They want their assassin, that lane to farm easily. Yeah, they want this Link to farm easily, and they have a Granger along with the Hylos. They do still lack the early game damage. They gotta look for something for the early game. Fanny, she's a monster in early game. So they gotta get an answer for that Fanny, or they will be in trouble. That's and with this, the last ban coming from the sides of Avalon is the CC. Are they planning for a tankier lineup? I think. Yeah, honestly, that CC ban just tells me they are gonna with a tank here, right? A tank with the the HP is there, and honestly, that Aurora plate is good, especially with that passive, right? She gets the second life in the game, and Fanny might struggle with it, especially if she gets stuck. And just one mistake, right? A one mistake from Fanny, and she will be drawn because the damage is there. And let's see the Avalon, they do have the last bit. They are going with that Chow, so the chain CC will be there. And look at that Farsa as well for the poking. The team Avalon, they are looking strong right now, but the thing is they cannot counter the last bit from the team Male Dicta, right? That's how the drafting works here. And the Male Dicta, they can still honestly still
surprise the the Avalon here. They do have the Hylos as well, can go for a flex pit here, so they can dominate in the XP lane here. Even a dragon here with Bird. Dragon will be good. Yeah, the dragon offers some early game advantages. That damage of him in the early game is actually good. With the dragon, they might have a chance in the early game. And there is a Jawhead too. With this Jawhead, we might see that Hylos going to the XP side. And the Jawhead, he does have some early game damage, and the fast player of jungle lanes. I mean, jungle along with this Jawhead is actually faster. We might not see an early invasion from the side of Team Avalon, as the team Maledicta had picked Jawhead. Absolutely, that Jawhead, they can go for an early game invasion as well. Because the thing is, they do have a Hylos, right? And the Hylos is on healing here. So definitely they have the trust for an early game invasion on that Fanny. Even with that Aurora, right? Aurora, she does have that early game damage as well. So this game, it is gonna be a spicy. And the thing about Jawhead is he can easily win against that, Chow in a 1v1. If that's an XP, he can hold himself, pretty good against Badang as well. So pretty good pick there on a Jawhead, and the Jawhead in the late game especially can mark that Harriet, but that Harriet is on that Purify. So he is going to survive and sustain here. Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! And honestly, look at that. Both the players, they are taking their blue buffs. The Ling and the Fanny, they do need that energy. And both the teams, they are helping each other out here. And honestly, that's good, right? That's definitely good. And look at that. That Jawhead is even helping with that, the red buff. The red buff in on HP. And it will be the Ling that will clear the jungle faster because of the Jawhead. We do see a Hylos here on the XP lane. A perfect choice. The Jawhead will be on roam, so will be the Chow. So it works out right in the end. And if you look at that, the lethal fight is here. But the Ranger, the Peanut, he will secure the trap, get that extra 100 gold for his team. It works, right? In the end, if it was, it was. And look at that, the Link is there. He is trying to initiate. The Purify has been pop here from the Harriet. Will the Harriet get pop here? They are trying to take that Harriet, but no, it will be that Jawhead that will go down the Avalon. They just turned the table, right? They have a Fanny. The Fanny boss there. The Fanny is recalling here, and we might see an Hylos going down here as well. The healing spell has been popped, but the thing is, the Fanny, she can come anytime in the mid lane, but no, look at that. The Farsa. I think she overcommitted, right? And look at that, the Chow, he might go down as well, but no, the Fanny is here to punish them. You don't recall in the bush that you provide vision, right? And the Benz and the Hylos, he goes down here. Well, Yeah. In that skirmish, we did see that the team Avalon does have that early game damage. They did manage to get 4 members of them. The only member that fall from their side was the mage Fasa, and I don't think that's a huge matter for now. The turtle is up. Both the jungler are taking their blue buffs so that they can contest for the turtle. And in the boss fight, the Cho is rotating towards those minions, trying to get level 4 before this skirmish starts. absolutely, we might see a fight brewing down in the bottom lane. The turtle has been spawned. Every single person from Avalon is level 4, and look at that Fanny. Will she get that 4 kill? No, the Peanut, he barely survives on that 1 HP, right? He is not even level 4 here. He might have missed his minions. Yeah, he died, right? Yeah, he died. He missed his minions, and Harriet will get the farm. But we do see a fight here. The lane, he uses his ult. The Fanny is there. Will she be able to punish? But no, she misses her stable. The Badan wall is there. Stopping in Badan is on 1 HP. The lane won't let it slide. And look at that. The Harriet is there. They were trying to target that Fanny. But look at that. The Chow, he uses her second still. The Harriet is all over the map dancing here. And the Lord, the Turtle, it might be anybody's game right now. Yeah, it might be anybody's game right now, but still the team
Avalon, the Dutch already have created 1.5k goal lead in the early game, and their form is kind of snowball form. That Farsa will start to deal a huge amount of damage after some time as they are progressing, increasing their goal lead. And if they manage to get the turtle, the team Maledicta, they might be in trouble. But it seems that Fanny wouldn't be there to rescue that turtle, and with this, the turtle will be taken by the team Maledicta. The team Maledicta, they are crawling back into the game. They got the turtle, they got the trails. The score is 5-3 and the goal lead. Honestly, it's only 1k. And right now, the way the Jawhead is moving, he might be in trouble. And look at that Fanny in the mid lane. Absolutely wonderful 4 cables. And the Aurora, she got punished for clearing that mid lane. But the Joy is like, I'm gonna take your mid lane here. Don't mind me. And look at that, the Harriet, they are letting that Harriet farm here. The top lane might die, and the thing is, the Jawhead is there on the perfect position, but he misses that jump, misses that second skill, and the tower is still alive. The Hylos, he is gonna take that mid lane, and the perfect gank is there, and honestly they will get punished for that. The Farsha, she fried, and the Harriet, look at that, the Badan, he got that link. The ult has been popped. The Harrod rotation is kind of slow here, but now the Chow won't let him live. Will this lane survive? He survives on that 1 HP and will get punished on his lane. You cannot let that lane farm away, bro. He just slide away right there. Yeah. For a second, it seems that the team Maledicta was in that team Maledicta was in trouble, but at the end of this series, they emerged victorious, and it was the Badang who fall down in that skirmish, got punished, and with this, that both of the team will be back to farming. In the bottom lane, we can see both of the XP laners poking each other, clearing the lane. Like that's a dead lane. Both of the XP laners, they just wanna clear the lane and rotate around the map. Look at Hylos trying to force the retribution out of the fan. And as we're talking, in the top side, the Jawhead was taken down, and on the bottom side, as we saw that the Hylos was trying to poke the Fanny, but instead the Fanny was the one who did manage to take the Hylos down. But I think it was the Hylos who took the red buff. Absolutely, the Hylos, he took the red buff, he paid it with his 5. The turtle is getting chowed down here by the lane, and the lane is here. Lane is with his blue buff, so will be the Fanny. And the thing is, right now, yeah, look at that. The perfect setup is here. It's gonna be a 5v5 fight. The Farsa, she ults. The Hylos is on Farsa. The Harriet is dancing, and the Fanny will be the one, to take the turtle. The Badan, he puts the ball, and if you look at that, look at that. Look at that. The thing is, the Ranger is getting that farm up. The team mailed it. That they on low HP, but they are not backing down. They knew. And the Ranger, it's all up to the Ranger hitting those kills. And that's a triple kill from Ranger. Peanut here carrying his team. The team Avalon, they Yes, are crumbling here, Bell. the team Avalon is crumbling, and Peanut is back here carrying his team once again. Though we were talking about him, and he just got taken down. Maybe it's in caster curse. uh, I think we should stop praising him. He like just like we just praised him and he got taken down. Absolutely, well, the caster curse was there, and the thing is, look at that Chow marking that Aurora. The Aurora passive will pop. The link is here. So will the Fanny will come, but no, the Aurora, she survived. The team Avalon, they cannot let them do this. The heroes, they are surviving on 1 HP. The link is on the back line, gets the 2 kills and walk away. The Fanny, she is prioritizing those puffs rather than those kills. She need to be in the team fight a little bit early. I think they are mismanaging that time, but the thing is, it is working out. The score is 12-10, and they are in the 2k goal lead right now. The Fanny will be split pushing. She has a blue buff, and honestly, she will be going back to that base to get that energy back. And right now, yeah, right now it is looking good for the team Avalon. But then again, we saw what happened in the last turtle fight, right? The setups were not there. Yeah, as the game will approach to the late game, the team Maledicta will start to hit their power spike. So the team Avalon, they should try to manage to get as much as goal lead as possible. And as we are talking, their fight breakout and the Cho did got taken out by the team Maledicta. The fan did try to do something, but
he didn't have enough support from his team to do something. There she's going out again, going in again, and backing out as the team Melodic, they're sticking together. Absolutely, and look at that Fanny. The tail is there, the scale is there, and the peanut. He just got punished for that. And right now the tank is there. Look at that jawhead. He was in the perfect position, but the Farsa, she just used her ult, I think. And yeah, the high-lows, the sandbags are sandbagging here for the team. Mildeta, the look at that, the Chow just caught that Aurora. The Aurora goes down. The dancing kid is here, and they are marking the Farsa as well. The Fanny, the flying Fanny just got the double kill here. The Link might go down, but no, that's the second time the Link survives. Might be a caster curse, might not survive, but yeah, look at that. That's the caster curse right there. Well, and he was so close to recalling. You just cursed him, and with these three members from the side of Maledicta was taken out, and this Lord will be going to the hands of Avalon without any contest, as there is no one to actually contest that Lord. And with this, the blue buff off Link might get taken to the sides of Avalon. It might be a problem for the Link, as he's really that blue buff dependent hero, but his team is there trying to save that blue buff for him. Though it was the Granger taking the blue buff, saying it's better for me to take it rather than giving it to the enemy. Absolutely, the Lord is marching down the lanes. They are getting synced here, the Avalon. I think they're planning to finish the game, especially when the Fanny is fed 11-1 for that Fanny, and she shut downs that lane. And the Lin was not even able to use his the Hylos was shaking the bush, and the Chow, he is trying to get at the back line. The Jaw had tried to help that. The Aurora, she used all of her skills right now. I think it's the Farsa, right? The Farsa should have popped. Well, they are pushing the lanes here. The dancing kid Harris is here, and the Badang, he is trying to go set us the peanut, bro. Look at that. They are trying to defense. Hanji. Sunny, I think you are having some mic issues. And with this, Maledicta did manage to take out the Badang, but there goes the Fanny inside the turret, trying to take out the Link. The Link did manage to survive. Had it going inside the turret, trying to take down the peanut butter. The peanut butter did manage to survive once again. The Harith is still there, flexing his muscles, his short flags, and spamming that recall. And with this, both of the team will be disengaged. They did got everything they needed, though they didn't got any inhibitor turret, but I think that's okay for them. That's what all they wanted. Yeah. Spanish, they look at that Spanish, Mm-hmm. Absolutely, man. That Fanny is on 12-1-2. She is the one carrying his team right now, and honestly, I don't know. Like, what does the team Mildeta do here? They are looking for the answers, but the thing is, the Jawhead and the Hylos, they are providing a perfect sandbag. And the Farsa is the one, the lagging behind, especially when the lane is marking down. And look at that, the Peanut, he is checking the bushes for lane. The lane, he only have that, that one target. Mark the link, Aurora, or the... Your mic is, I think, that's... Legendary. And with this, all the ultimates of the everyone will be used. This fight did favor to the team Avalon. The team Avalon that got what they wanted. Three guys down for only the trade of Fasta. It was a profitable team, and the Lord is here. They will be taking the Lord quite easily, as the jungler, along with other two from the sides of Maledicta, are down. It will be an easy lord, and with this lord, the inhibitor turret might be in danger from the sides of Maledicta. Then this inhibitor turret might get taken out, and there's even a chance that the game might end, as there is more than 6k gold lead. The goal lead is 6k. The Lord has been secured by Avalon. The Fanny is on fire, 13-1-4. And honestly, that last team fight was a 3 versus 2 trade, and that's the best you can get right now, right? You don't have an answer for Fanny. You don't have a counter pick. A Mincy head could have worked, especially if you have a 13-minute late game here.
And honestly, will the team Avalon Yeah. be able to, close this game off right now? The lane is providing, the vision here. The Lord is marching the Fanny and the Farsa. Okay, they have seen the lane. The lane is there, and they might, get that Fanny. If you look at that, the lane is here. The jaw head is here, and look at that. The damage from Fanny was on another level. It was a 2v1, and they couldn't do anything. The top lane turret is gone. The jaw head is gone, and the Lord is marching down. The Fanny will recall, but no, she is going in for more. And right now, the base is wide open. They can end it anytime. They just need to load the base, and the first game goes to the team Avalon S Dream Team right here. What a game that was, especially from Fanny here. Victory! Yeah, the fan did carry his team. Look at her score, 14-1-4. That's some really incredible score coming from the side of Fanny, from the team Avalon. That was an interesting match, and it was really pleasurable to see such a Fanny. Though Peanut did try to carry his team, but this time his luck wasn't there. He didn't manage to carry that team of his. That Fanny direct going to the back line, marking that Granger along with that Aurora. They got targeted by that Fanny and did took them down quite a few times, and I guess it kind of became the reason of their downfall. And they didn't had any single counters for this Fanny. This Fanny was like flying high in the sky with all his freedom, no counters there. And with this, the team Avalon did manage to secure then did manage to secure one score. The score is 1-0 right now, and the team Absolutely scoring well. two And the scores thing is, will be winning. this Fanny, no counter, like you said. And we will be back with the match number 2 here. The Avalon is on lead here. And we will be back. worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Hello, beautiful people. We are back, and this is gonna be the match number 2 here. And the thing is, the Fanny has been banned here by the male. They don't want, right? They don't want that Fanny, especially after the last game. That's a respect ban. They are not gonna do the same mistake here. And Bell, what do you think about that? The Fanny did like rampage in the last game, killing anyone she sees in her range. Even the Roma wasn't safe from her wrath. She did make a chaos in the last game, so it was I it am was the only common one. sense to Your ban team her in the is second match, banned. respecting that damage coming from the Fanny. Uh, so that's what I would like to say. And with this, we are seeing a Phobias ban again from the sides of Avalon. They might go for some dashy heroes. In the previous game, they went for the Fanny, but this game might be different as the Fanny is banned. Though there is Joy, Harry, Moscow, even the Stuyu from Time to drop even the the beat of Stuyu. the team is And banned. as we're talking, seeing the Phobias ban, the team Melodic instantly decided to ban that Joy. When she don't have a counter, she just dances around the battlefield, bursting anyone she sees in her range. And with this, the Your Badang, team is Badang will be banned. taking out. Absolutely, Bell. The 4 year span just tell us, right, that they are planning to go for that, Your the team dancing is banned. dancing heroes or the dashing heroes, and the Joy and the Harriet has been banned. That's a safe bet, right? But that then again, it just misuses your bans, like you just wasted your bans here. And the Kalia and Your team Badan is has been banned as well. So the assassins are open, The so is the world Stereo, shows and me there it what goes. The it Stereo is is here, but the to thing play is, this world. well, the Looters is still open. The Looters is there, and honestly, they can go Yes, for it, Looters, right? yes,
they can go for the Lucas. The Matilda is there to help the Lucas. The Sicilian is there for the late game insurance. Even the Granger is there, man. Experience the And youth as I you say, the Granger is suffering. here along with the Always Matilda. on my way. We might Your get to team see a is Lucas picking. either or an alpha pick from the side of Avalon later in the picks. Yeah, absolutely. The Matilda was open as well, and the team Avalon they will go with that Matilda and that Ranger pick. Oh, yeah, that's a good pick, definitely a good pick. But it still opens up that looters, right? The unlimited dashes from Matilda is there, and how can we forget about that Joshin, the key, the queen of the North? But she just pulls you back, and the early game domination will be there. But no, the team mailed it. They won that late game insurance here. They won that Sicilian. They need to be sure, like if it's in the late game, we are the ones that gonna Never the carry. same. And that might be a wrong pick here. They don't Your have team early is game, right? The picking. Gather is a good pick, especially in Rome with that healing spell. It's like really hard to kill him, right? Yeah, that's really hard to kill him. He can dive into the backline using the AOE, AOG, and he jump onto the Granger. And his second skill. That's a quite a lot of CC from him alone, and he's also a like sandbag, taking all like a huge amount of damage on him, and along with that healing spell, he is actually really tough to take down, mostly in the early game due to his passive and that healing. And we'll be waiting from the team Your as team long is to see picking. their next pick. And it was a high Rusha, jumping onto the back line, killing that Sicilian. It should be the objective for the entire match, not letting the Sicilian get his stats. So it should not be that danger for the late game. Either that late game is on the side of Maledicta with the Sicilian. Yeah, absolutely. That Sicilian, his game just became harder. You just know, like the Ranger will be poking him. Even the Matilda in the late game can easily kill him with his ult, right? And just don't forget about the Hayabusa. It's a easy food for Your Hayabusa. And team look at is that, the picking. Moscow has been banned here. That might be a respect ban coming here from Avalon. Butterflies And the fall. Zushin Your at the team same is time, yeah, they picking. don't want that Matilda and Loyalty Zushin, wins. the combo. That is just a consistent combo with such a high damage as well. Yeah, And right now, the thing is, they are on the last ban here, the team Avalon. What will they pick here? What will they ban here? What will trouble them? I think a Mincy is there. Even the Hylos here will be a good ban. Honestly, they are thinking about that and they don't want Your that team Ranger, is spinning. They want that Ranger to farm up freely. So Irithel has been banned. They are, putting all their coins on that Ranger for the late game early on the Hayabusa. That's what, the last two MM bans shows you, right? They want the MM to be comfortable, to be able to play around. And right now, the team Meldita, the Peanut, he is thinking about yeah. as well what to ban you. Absolutely. Absolutely, two have been taken down from the side of my team Avalon, making sure that their Fight! Granger have a good The time. ultimate is The picking. go-to MM against the Granger, the Moscow Irital and the Hell, three of them are banned. It will be really interesting to see how the team Maledicta decide to answer Your that team is picking. Granger. What pick would you like to see again that Granger? They went with the Chow here, well, and the thing is, the Chow will be able to, provide the CC, but the thing is, he needs those space, and honestly, I don't think so. The team Avalon will provide that space here to him. Like they have a Hylos in the the front lane as well in the team fights, and a Matilda. So the dashes are there. The mobility is looking higher for the team Avalon, but this slot can definitely change that. The Claude does have the highest mobility, especially in the late game here. The Peanut he is thinking about that. Nathan and that Lord here, and honestly, I think he should go with that Lord here. And there Your goes team the is draft picking. is final from Male Data here. Okay, okay, that's good. A good draft here, Yeah, and the last draft. pick here, Bell is gonna be a Salina. So the tables have turned. The Avalon have a better draft here. Yeah, the Avalon does have a better draft here. We might see a Selena or a Vale from them, but they have the early game while the team
Maledicta, that I don't think they have any other early game hero other than that Suyu. That Suyu does do a good amount of damage in the early game, but he will lack that supportive damage from his team to finish off the enemies. It might be a problem for them in the early to mid game, but look at their late game. That Claude, along with that Sicilian, those two gonna burst anyone their feet in the early The game. southern seas are And yeah, the mine. Selena hasn't been picked. It's and Tradita here, or Tradita with the Petrify. That's like, that's a nightmare, especially for the mid lane. The Sicilian, you can see he is on a Purify. He knows what's coming for him. And honestly, I am feeling bad for Bomber Beanie Dwazini here. Honestly, I think he's gonna lose with that. Too many counters here, even the Hylos here. Yeah, you know that Bombavini Gusini Sicilian. He can't went for the flicker for that Kadita, and he had to go for the purify. Uh, Either or else the Kadita would have just busted her every time she sees her. But now as he's in purify, the Hayabusa will be a trouble for the Sicilian. He wouldn't have that flicker to dash out of Hayabusa's all. It might be a problem. He might get taken down quite a few times. Looking at the draft, the team Avalon does look stronger compared to the team Maledicta. Absolutely, Bell. And honestly, if that Hayabusa gets that Welcome power to spike, Global it Legends. is gonna be a bad news, right? The Hayabusa, 5 there is no seconds till the counters. enemy There is reaches no the counters, especially battlefield. the Smash Chow. He them! is gonna get melted All as well if that troops Hayabusa deployed! goes for that penetration. Both the teams are going for their blue buff. Okay, that's good. The Sayo on blue buff. But the thing is, yeah, the Chow is on the opposite buff already, getting the damage low. Okay, that's good. That's a new strategy here. But the Hayabusa, I think he will be faster on the farming lane. And we might see a Gatto versus Hylos on the bottom lane. And Hylos low key, counters the Gatto very much right now. So the Gatto Gacha will have a hard time here. But look at that, the support Yeah, is here. And the Hylos might be the first one to die here. absolutely. Absolutely. All of the lanes from the side of Maledicta are losing lanes, and with this, they decided to gank on the Hylos. But he is quite a tanky in the early game. Did manage to escape from the death and will be recalling to the base, or uh, I don't think he's gonna recall. He would like to get his minions, so he can get that level up. The Suyu is trying to get the little XP crab from there. And on the other hand, we see a Hayabusa trying to take out that Lord and didn't manage to take him out. But Their same minimum time, if ability you was not look at even that managed to. well, the thing is the Ranger, he got the turret roll, right? So he is ahead on the turret roll. Well played by Claude, like he saved that. And look at that, the Sayo jumped here. The Tradita, she just recalls that was okay. That was a funny recall here. Yeah, And if you look at that, the Hayabusa, he is going for his blue right now. He is going in the bottom lane. So we can see like they want that Gatto. They don't want that Gatto to be level 4, right? They don't want that Gatto's AOG. The perfect gank is there, and Chow might be the first one to lose here. The Purify has been popped here from the Sicilian. He gets stunned there, but no level 4 here. And look at that, the Sayo is there. Double kill from Male. They just change the tide of the war here, and the turtle is here. So it is gonna be tough, especially for the Avalon. Honestly, that if the Trinidad was level 4, it might have been a GG. But the thing that was a yeah, perfect gan from the Sayo there. yes, sir. It was actually a mistake from the side of Avalon. They should have waited for their level 4. Like the opening they got, it could have been really a game changer there, but it was a mistake. They didn't have that level 4, and they got punished for that, giving 2 kills to the sides of Maledicta. You know that Suyu having 2 assists, it will be a problem for the sides of Team Avalon, and with this, the turtle will be taken to the Blue sides has of slain Maledicta the with turtle! no contest from the sides of Team Avalon. And how do they contest? They already lost 2 members right before the turtle. Absolutely, I think that was a wise thing, and the team Melita, they got the lead here. They got the turtle. They they are in a good position right now, especially after the Hayabusa. He missed that 2 kills here, but right now all of the players are level 4, so the battle can change. And we cannot forget about the Ranger, right? The Ranger is in the troll lead right now. He got the whole turret of the troll here. He got the trap, and
we might be seeing a gank here on the top lane. The CEO, he is trying to take that gold trap, but no, look at that Chow. A perfect zoning from Chow. He will ult that Lord here, and if you look at that, yeah, the Hayabusa is on 1 HP. It's a 5-man gank on the top lane here, and the Seiyo might die here. The Petrify is there, but the Seiyo, he just dashes away. He cannot kill, and we might see, we are going to see a good fight here, but the damage potential is not there. The Hayabusa is still fiddling with that Lord there on the top lane, and I think that might be a bad move here. But no, look at that. The AOG from Dato, it connects nothing. The Ranger is here. He is providing that chip damage. The Gato, he is way too ahead. The Hylos, he is taking the mid lane. The Hayabusa, the buff, and a pretty good fight. The 3-1, the goal difference is only 1k. Yeah, the goal difference is already 1K, and look on whose side? It's in the side of Team Maledicta. They actually won that goal lead on their hand, and it's actually good for them as we know their composition is made for the late game, but they already have a lead in the early game. They are so goes with his kicking that Karita, but that Karita did manage to survive, and it was the Cho who was taken down from the hands of the Granger. A good trade, I would say, for the size of Team Avalon. Absolutely, Bell, and we might see a fight here. The turtle has spawned, the fielding has been stand by on that Kadita. Might be a round call, like no sets. It's already 5 minutes, and he is missing his sets. The Hayabusa, he is twinning down that turtle right now. And look at that, the Seiyo, he takes that turtle. The Chow is marking that Ranger here. The Hylos is here. The backline is there. The Hayabusa, he is focusing on that turret push. And that was a perfect CC. The OG did connect, but honestly, it didn't do any benefit to their team. The male dictator, they are in the lead 3-2 with the still 1k goal lead. The Hayabusa, he didn't push the top lane, and look at that Chow. He knows his mission, right? He needs to mark that Ranger, he needs to mark that Hylos, and he is on it. And right now on the bottom lane, we might see a giant here on a Peanut. It's a 3v2. The Petrify is there, and look at that. That's a perfect set, but no. Wait. Honestly, I thought that Peanut survived, but yeah, that was a good try, Peanut. You just waited me, but the Matilda was there to provide that basic attack. The top lane turret has been gone, and that Cloud shut down. That's a good thing, right? Your Ranger is still there. He might die, might be a tossed as well, but honestly, he survives there. The Hayabusa is there. His ult has been used, and look at that Matilda. The zoning for Matilda is there, and Hylos, he pops his ult, and the AOG is there. Okay, good team fights. The AOG was there to zone out the Team Avalon, and he was successful, and it was the Hylos who actually got taken down. Man, what can I say? Like the draft from the side of Maledicta, it's actually late game, bro. Though they're still winning the early game, man. How do the Team Avalon answer to this? Like they're actually losing against the draft that's set for the late game. They're losing the early, then how would they like win the late game when the Sicilian along with the Claude will become such a huge monster who will just two shots anyone they see. Absolutely, but let's just not forget the Hayabusa with his penetration can definitely meant anyone in the late game. And right now, the zoning from Chow is perfect. The Hayabusa is there. The Hylos is providing the vision. The top lane might get ganked here. That's a 4-man on Peanut here. Okay, but no, he will, just give up with the turret. But look at that, the Hayabusa. What ult was that? The Hayabusa. We all have those moments, right? Well, we all have those moments, but that will just cross them, right? He doesn't have his ult. He cannot engage here. Okay. Okay, two turrets on the top lane. They were trying to get their Hayabusa buff, and I think he had to give up with that buff, right? He doesn't have his ult. He does have his shadow, but yeah, that might be risky. That might be risky, and the Hayabusa did give up his love to the side of Team Maledicta. The Team Maledicta, they're trying to do their best to get all they can while they have the lead. As the team fight, the lead may suddenly change with that Hayabusa and the Kadita there, and with the team fight will begin. The Hilo was kicked by the show inside his team, and did got taken down the. And with this, they will get the Hylos with no loss from their sides, and will be retreating. Continue the farm.
Absolutely, and if you look at that, it's a 3-6-3 score, and the team Avalon they are behind in the 3K. The male data they are coming back in the tournament. They're like, we're not gonna go with a full sweep. We are gonna fight till a late bet, and they do have a Sicilian, right? The Sicilian is perfect here. It's the late game insurance here. Yeah, they have the Sicilian along with that Claude. Those two, they're gonna carry the late game. But I'm really surprised they're winning the early game, man. Like that's something interesting that we don't get to see daily. The Granger is trying to poke Peanut, but didn't manage to do it. The Peanut, he is actually quite ahead of the Granger. No, he isn't ahead of the Granger, but he's doing good. He got his two items and need only one more item to get that power spike, that holy trinity of attack speed. And with this, the Lord Absolutely, is up. yeah. Red team hero The Lord has been spawned, and look at that. The Matilda has been shut down. The Hayabusa, he is having a hard time here. He does get his, the blue buff, so he might go and steal there. The perfect position from Pi is there. The Hylos, he is inside. The Petrified is there. The Earl finally collects. And look at that, the Sicilian is the one who gets the Lord, right? But that was a nice attempt by Pi, and he will get rewarded for that. Right now, look at that Lord. He is trying to get that damage. And no, Ranger versus Claude, and Claude, I think he got him, right? But no, if you look at that, the Hylos is in danger right now. The Matilda is there. The mid lane for Avalon is looking weak right now. The Lord will be marching from the top lane, and honestly right now the team Avalon they do need a farm. They need to take down those sandbats, right? The Jato and the Chow, they are the troublemakers. There's no enough damage, right? The Kadita, she pops a roll to get saved, and look at that, she will get caught here. And honestly, no man, it is looking grim here. The Hayabusa, he is gonna take it that turtle. That's a wise move, but the super minions are there. Right into the fight, we saw that the Granger still lacks that penetration. He was firing at the high low at that Gato non-stop, but that Gato took little did no damage from that Granger. The Granger, that means the Granger lacks the penetration. He should focus on that Malefic Roar as fast as he can, but he decides to take that anti-heal first, looking at the heal from the side of Team Maledicta. Absolutely, the AOG it connects, and the thing is, they are doing a team fight here with the super minions are there. The Tritia pops a world. The team Avalon they are on low HP here, and if you look at that, the Ranger has been gone there. The Hayabusa pops a world, but there is no damage. The Shadow is there, really survives, but no, the Lord he gets that kill. It's a 3v1 trade here, and the Avalon they got they didn't got the comeback here. It's a 12-6. The goal difference is 4k. The turrets are falling down here. The Cloud has been buffed. And right now they need that Hayabusa damage. Hayabusa and the mid lane, the Pi is the one lacking behind. They didn't get that ambush right. They need to do something to take down that Claude along with that Sicilian. Those two, like they are already close to their power spike, and I would say the Cloud is already at his power spike. We have the Holy Trinity. Now going for that Winter Crown will be a problem. Surely will be a problem. Pressing the ult with that Winter Crown, taking little bit no damage and dealing those huge amount of damage to the team of to the side of Team Avalon. Uh, Absolutely, the it's looking Lord really right now. yeah. It will be spawning, and this Lord might decide the game here. The Avalon they need time, but at the same time, the enemy does have a Sicilian, and the Sicilian might die here. The Petrified is there. That was a gun. That was what they need, right? They need the ambush. The Lord is there, and right now they do need the magic damage, right? Look at that. The Seiyuu is on that Matilda. The Matilda will survive. The AOG does connect, but the Kadita, that was a good from Kadita, right? The ult from Hayabusa has been loose, and the Chow goes down. So did the Matilda. So did the Gato. Okay, it's a 4v2 trade right now. The Lord is there. The Seiyuu, the damage dealers are alive. The one, But right now, it is looking good for Avalon. They can take the Lord here. The Shadow is there. And honestly, the Hayabusa, yeah, look at that. The damage from Claude. Honestly, the damage from Claude is on point, and that Claude just Yes, brought time, yeah, right? The Claude definitely brought the yeah, time. absolutely.
Absolutely. The Claude is online. He's dealing a huge chunk of damage. Almost melted down that Hayabusa. He does have his ult. Will pop surely soon. And the team, Maledicta, Dash got to remember that the Claude is will be a problem for them if they didn't manage to take down that Claude. The Sicilian did got taken down from that Kadita earlier, but it wasn't much of help. They got to target that Red Claude, team's man. hero has been slain. Absolutely, and As we're look at talking that. the Yeah, the Hayabusa has toned down, so I think that's a blunder for Team Avalon right now. That would be a free lord. yeah, absolutely. It should be a free Lord Blue and a team green has flag for slain the them to Lord. take the Lord, and they did took the Lord. On the other hand, there was a huge wave from crashing from the top lane. So the Gato was there to take care of their wave. Take care, the Look at that. lord is marching in the mid lane here, and honestly, It might be indefendable. yeah, they have the build. That ranger, he is, look at that. They are chipping the damaged lanes. They are bit not saying, and the Hylos has a perfect zone out, but they can lose the mid tower. The AOG is the flicker kick is there. And yeah, look at that. The Chow is on that 1 HP. Will the Chow goes down? Chow goes down. So does the Matilda here. The Gato is on that 1 HP as well. And look at that Claude. That was a perfect freeze from Peanut here. And honestly, the stranger, Yeah, he that needs to pull us up Lord stocks, right? Red team's base turret has been yeah, that destroyed. blazing duel did deal a huge chunk of damage, but didn't manage to take down anyone. Blue team hero has been Hayabusa using the slain. overshadow field, but didn't manage to take down anyone. Though two members from the side of team, Maledicta, did got taken out. A Absolutely, nice Bell. defense from the side of Yeah, they Avalon, got a but nice then lost. defense. But they lost two of their inhibitor talent. Their base is naked right now, only holding on to the top inhibitor turret. So next slot, if they didn't manage to make a miracle, the next slot gonna be end for them. Yeah, it's gonna be tough for them, especially they lost the two towers, so the mania minions will hear the Hayabusa. He is lacking some damage. He needs his soul build. He needs the last item. In the last fight, if even a Strike Piercer here would have worked. And look at that Ranger already on that 40 stats on that Strike Piercer. They need those damage, like the mid laner damage is not there. It's good for that Sicilian. It's good for that, Peanut on that for that Lord, but honestly, they have the counters, right? They have the freeze, they have the purify, so it is not working right now. Yeah, the longer the game goes, the stronger the Sicilian gets. And look at Sicilian, he does have that blue buff to like to spam his skill one with less mana required, and he is spamming his skill one, collecting those stacks. And man, what can I say? The Sicilian, the team, Maledicta, they're looking real strong right now. The Hayabusa trying to kill that Sicilian using the OB Shadow Field, but the freeze was there at the correct time and did manage to survive with no casualties. The Hayabusa lost his ultimate, decided to go back and continue the farming, clearing the waves. Yeah, honestly, the Lord is spawning, and we might see that. Mega kill. Look at that. Look at that Peanut. He just took Look out 1v1 the at that. Hayabusa. The Hayabusa didn't have any ult right there. He did have the shadows and the tape Avalon. Honestly, But he had these shadows, but Peanut, he on the cloud right now at 17-minute mark. He is a Blue team monster. has slain Melted the down Lord. Hayabusa before he can retreat using the shadow. That was just like a warning to show the team Avalon how much damage this cloud is holding right now. Look at that. The Kadita trying to take out that cloud, but Shut didn't manage to down. take out. But that cloud did went down. and honestly, that was a good Mega trade. Like kill. the Claude was the one that was troubling the team Avalon, and they might get a Yeah, chance here to defend the turret, defend the absolutely. base here. The Lord is marching in the mid lane, but Absolutely, that was a good trade for the side of Team Avalon, but the team Melodica, they still had that Sicilian on to their team, dealing such a huge amount of damage. Look at Red his team's damage, base even the turret has Hylos been can't take it. destroyed. yeah, the The damage Lord is is there, the there. last inhabited terrain has fallen down.
they did manage to survive the lot. They did lose all their turrets here, and it is gonna be super hard. It is gonna be a 19-minute lot, even a 20-minute game here for the team Avalon, and they did have the full set of armor here. This is the late game, so the Sicilian will be shining right now. He does have a purify, but he is getting trod by that Kadita. So is that Peanut here. And honestly, the team male Dita here, they have done a wonderful job, 17-12, and like they had the they didn't have the early game, right, and then they did have the advantage in early game as well. And looking at the timer, it's their time to shine now. They have the huge chunk of damage in their team, but they got to watch out for the Karita. They don't know where she is hiding. She will be suddenly out there bursting one of the key damage dealers from the side of Team Maledicta. The Joe gotta do his job, gotta provide vision for his team, checking the bushes to find out that Karita. That look at that Karita, like desperately trying to get that Sicilian or that Claude. That can be a game changer, or it will be the reason they will lose. It's all depend to that Karita right now. Absolutely, and if you look at that, the Hayabusa, he did get all of his items right now, so he will be doing that maximum damage. And at the top lane, the CEO is there with that, that was a perfect run for Sayo. I think he could have taken out that Hayabusa in the 1v1, but if you look at that, the Kato is all alone in the mid lane here. Okay, and look at that, the Petrify is there, and the Peanut, he strikes back. Okay, that was good. That was good from Peanut. The Claude is there, and the Yeah, damage is there. The Hylos is on the front line. This might be their perfect time today. And look at that, the CC is there. The Hayabusa, he uses his all, but the damage, they are missing the damage. The AOG connects nothing. The Ranger, he just steals that Ratho, and this might be a comeback we are looking for right now. Honestly, it's a 2v5 defense right now, and they can push the mid lane, right? The Peanut, he will come on like the 25-second mark here, but look at that. That what happens, right? When you have the look, no, the Sayo, he goes down. He uses that fast and trade, but honestly, I don't think so. He can survive here. That's what happened when you lose the turrets, right? You have to focus. The super turrets are there, and the team Avalon, they will get that Lord quite easily right now. But look at that Chow. The Chow is there. He is there. He wants to end the base here, and honestly, I don't think so. He can. Even when the Tredita is there, the Tredita, she yeah. doesn't It have. might be a mistake. Yeah, he doesn't have that. The ult. And that was pretty smart. Standing in the bottom lane there, and the momentum is there. The Claude, he uses his second clone. He uses the freeze, and he survives. He doesn't have anything right now. If the Hayabusa ults again, he doesn't have anything to survive. He can buy an immortal shield, but then again, no. And let me just, tell my viewers, this is a evolved Lord, an 18-minute, a 20-minute Lord. So it is gonna be a hard year. The Claude can definitely melt, and the Pie here, he is hunting for his enemy right now. Yeah, the hunter is looking for his prey right now. She gotta take down the Peanut or the Sicilian. That would be like the best case scenario. And the Cho is going there, trying to desperately trying to find someone, but he didn't manage to catch someone. And with this, they will be heading inside the base, trying to defend. As the Lord, 18-minute Lord is coming there, it will be crashing to the inhabited terrain, and the terrain might get taken down. Look at that. The Lord is Absolutely, the Lord coming. is here, Bell. It is knocking down. The mid lane turret Man, look does at that. fall. Lord, Mhm. the Claude seems to have more damage than the Lord. They managed to take out that Lord without any casualties. The inhibitor turret is still there, though the mid inhibitor did got taken out, and with this, the Sicilian will be next to do the chopping Lord as well as the Peanut. They got taken down. The late game damage from the sides of Team Melodic got taken out, and it's only the studio allow me the tank time to defend this way. And the minions are there, all five members from the side of Team Avalon is there. It might be end. It might be end. The minions are approaching, and with this, the show is there. And this base will be taken down, and with this, the Team Avalon did manage to secure their victory. Absolutely, what a game that was, a Victory! 22-minute game here, and the team Avalon,
We'll move on to the semi-finals with they were lagging behind, and what a game! The late game damage was there. The he was able to mark down the enemies. They just target the base, and honestly, that Sicilian boom boom Bini Giussini, he did have a hard game, right? There were so many counters, he couldn't do anything. And congratulations, Avalon, for winning this game. And we will be moving towards a match number 3 for today in a while. The Rival Trivia is here to entertain you guys, so don't worry. Build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit.
Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to where I feel. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got the shining again, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to where I feel. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got the shining again, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to the Odyssey Cup Season 1. Right now, we are here into the quarterfinals, and this is the third match. This is a BO-3 between Team Hook by Chance versus Team In Heavens. Both of the teams are looking great because they had qualified for the quarterfinals right now. And the casting deck, it's your boy STZ, and with me is none than my co-caster, my friend. You already know her. She's being in the podcast of the top female caster. A lot more. I'll not say anything else. She's not than Zevo. Oh my goodness. You caught me completely off guard. I was so prepared to what I was gonna say, but oh my god. Anyway, yes, quarterfinals after quite a grueling previous round, we are quite on to the exciting phases of the tournament, right? When they beat up all of the opponents in their way, climbing on top and clashing out. If it's in the quarterfinals, of course, you will be considered quite the, what do you call it? Quite a bit more, more okay, I forgot the word, but if you know, you know. Yeah, if you know, you know. More. Yeah, why am I still continuing saying that? But yes, both the teams, okay, both the teams, I'm quite familiar with both the teams. I don't know about you, Ash, but both teams, I'll give you a run through. In Heaven, on the blue side, they are one of the top teams, top squads in the leaderboards. I have seen them. They play quite well. Our Frostier, he is India #1 Eve. So maybe you gotta watch them out. But for Hook by Chance on the red side as well, they are no one less. They're quite a global squad. They also have a one trick Leslie.
So you can just assume how the match is gonna be going. Match is gonna be I mean, cooked going up. right. Yep. Yeah. Yep. You know what? I'm not sure about the Leslie pick coming from them, but I mean, not in this meta. But if you're saying they got one trick Leslie, so maybe we're gonna see it. But right now, as you said, me because it's my second time here, I don't know anything about these teams because these are new teams I'm and not the maybe they're only top one teams in that their plays regions, but chess. they need to. I mean, I'm sorry for that. No hate to anybody. I just don't know you guys. If you're gonna play well, I'll be knowing you all, and I'll be giving you a lot much hype. But right now, as I was saying in the Brook tournament, again you can see the Phobius is getting banned. This will be the new meta, guys. I mean, so many people are right now choosing the Phobius to get banned. And you know what? If Phobius is getting banned, you're gonna see a Harith ban as well. Definitely. And looking at the bans right now, I feel like that Phobius ban, I think, as you said, might be they might be cooking up something, might be going for a Joy or a Batang, because I think Phobius counters out both the heroes. So there is quite a big possibility that they might go for those heroes. If they have the first pick, they can prioritize. I think both the heroes that we just mentioned, I think they are more into the priority list, right? So that might be the case, but yes, respect ban on that high loss and Phobius, because those two, despite being in the EXP, are quite annoying. And here comes the Joy ban as the third for the side of In Heaven. Two mobility queens got banned. We can see that Fanny as well as the Joy. Right now, maybe we're gonna see a Suyu ban because whenever we see a Joy ban, there's a must chance that there will be a Suyu. Even though Hilda is open, Phoebus got banned, so maybe Hilda draft is being cooked up. But you're gonna see the mages as well. I mean, Chushin, so many meta mages are open. Look at that. They just heard me, right? And they went for that Hilda ban. A nice to pick ban because the Phoebus was banned. There was a must chance that the Hilda will be picked up from the side of team. I mean, in heaven. Okay, Yep. in heaven on the blue side, na? The immortal Yep, one definitely chose in the Heaven onto the distinguished blue shadows side. that play So this the world. first phase of the bans has been completed, and the bans are quite, they are quite focused onto the off lane rather than the jungle, or no mage at all. Zushin is still open. And Sicilian is also still open. So Team Hope by chance, they have the chance of picking up both of the top mages that we have right now, but they decide to go for that Granger. So I guess they will not be pulling out that trump card Leslie first. They're just gonna be following up on that meta. And I think that Gacha adds up quite well right now. Okay, but here we go. One more meta hero that is, I mean, new released hero. Kalea will be there, and from the side of In Heavens right now, that's a nice choice from the side of Team Heavens because they know that Kalea will be a effective hero in the crowd control as well as can regen them. Okay, you're talking about the Leslie. There will be a Leslie in the tournament. I'm going to see it for the first time, but I always say this: comfort heroes are Only better than the love meta, will Yep. better than the last. counter. So maybe we're gonna see it. But before that, it will be a Cecilian, another meta from the side of Inevents. Inevents it's cooking up right now with some metas. Even though the Granger is there, still they're going. They're not. They didn't went for the Irithel. They are baiting that. I mean, go for Irithel ban. We have some other choice. We can counter that Granger easily. It's ego clash. Yep, definitely. So, there is still the Irrital or that Moskov open for Team in Heaven to pick. So, since they already selected their jungle, their mage, and their roamer, they team Hope by chance they can definitely use the option to ban the the counters of Granger, so that they have much more smoother gameplay for that Granger onto the marksman side. But yes, CC as well, quite a big threat for the Gatot Gacha because she deals damage based off HP. So she should definitely be on that ban list. Coming in for the side of In Heaven, it would be that Lucas.
Yep, and you know what? The poke burst combo and the beautiful lineup is being cooked up from the side of team HC right now because look at that. The Granger is there, the Forza is there for the back line. There is a sustainable tank in the front liner that is a Gatot Kacha. They will go another sustainable EXP right now, or maybe a Roma because Gato is a flex pick, so he can do both the things, Rome as well as EXP. So let's see what they are cooking up right now. But the thing is, who will be the jungler at this moment? Fanny's ban, choice ban. You need someone who can target upon the backliner. You need Mhm. someone who can finish up the work, who can clean up the mess. Right, that and look at that. The Irithel ban is on to the point ban. You don't want to Irithel against a Granger. Granger will have a safe play right now because the trilogy meta MMs are totally banned and all one is already been picked from the HC. Yep, definitely. So just pick out what you want and ban the rest out. That is what Hook by Chance is going. So talking about the jungler that you said, right? The Fanny and Joy was same with the Sun Lucas was rises when also I give you banned the out. word. So Hook by Chance they do not have much option on the assassin. Maybe a Hayabusa to dive onto the back line. I think it would work out well given the composition of Hook by Chance. They have Khalid for that dive, Gatot for that backline yet again. Farsa, she has the range, so her feathered airstrike is gonna be zoning in heaven out. And Joker, he's just gonna dish out the damage with his bullets. So Hayabusa is quite a viable option, but might be a hero that we do not expect. But yes, the Moskov and Edith pick would be quite good for the side of In Heaven right now as they counter out the Granger and the Edith will be onto the EXP going head to head against a Gatot Kacha. So yeah. Yeah. And you know what? I mean, the Moscow, we do see him a lot in the MPL PH server as well as in the Snapdragon Pro series at this moment. It's all started when Savero picked that Moscow against Kelra. So it's like, I mean, if you can dodge the bullets, if you can dodge the, I mean, Rhapsody, you can easily take off the Granger because what he have else, apart from the Rhapsody and some Blink, if you can just cut him up with your Spear of Misery and the attack speed, you can take him down easily. And in the late game, if you're gonna compare a Moscow with a Granger, Moscow is very effective than a Granger because he can push, he can give damage, he can go for a 1v5 as well. I mean, this is why they went for that Moscow pick. It's a nice 2 point pick, but right now both the squad is ready, the lineup is ready, and as Zevo astrology come quite good because she was expecting a Hayabusa in the jungling side for the hook by cross, and they went for that Hayabusa. Right now, the lineup is ready. Ziva, I'm going to ask you some question that whom do you think gonna win this match? Ooh, quite a tough one because they have for in heaven they have a Moscow, they have a Sicilian, and for Hook by Chance they have a quite a lot of great heroes. So we can't really say what which team would be winning the match, right? Welcome to But Mobile this is a best of Legends! 3 series, so both the teams they get equal 5 chances seconds till to the enemy prove their reaches the worth why they battlefield. came out all Smash the them! way All to troops the deployed! quarterfinals. But if we look at it right now, I think I would probably vote for In Heaven because of their team comp. They have Kalea, they have Suyo. Aggression is there. Late game security is also there. So it would be that. But still, we can't underestimate Hook by Chance because their team comp is quite superior as well. So both the teams they are quite equally matched out. And yeah, just if we see right now, the poking games are definitely coming around here and there. And both the teams they are, oh, look at that GRG in that bush trying to maybe ambush on that Hayabusa, but the little contest would be won by Hayabusa right there onto the side of Team Hope by Chance. Now GRG is definitely doing his best, having the giving the First vision. blood! But look at that first blood in the hands of GRG, taking out Hayabusa, catching him off guard, and the scared might be in danger yet again as
Finn goes for his head. Now 2 points already in the hands of In Heaven, and this time, hook by chance, they do secure one more kill. But there we go, one kill in the hands of In Heaven, and that is 3-for-1 trade. I mean, before the turtle gets spawned, they got 3 kills into the hand. A great start for the side of In Heaven, we can say. I mean, look at the Suyu, fine play from him. I mean, you expect that from a Suyu player because he got the mobility. He can usually use it very finely against the backliners of Team Hook by Cross at this moment. But look at that, the Hayabusa is using the Quad Shadow right now, giving a lot of damage to the Edith. Edith and the Co will be going back. This is a very bad news because the turtle is up right now. Kalea is going for the zoning section. Let's see, we'll be taking this turtle because yet the turtle dance has not started from both the teams. They're waiting for, I mean, the latter to start it, but look at that. It's already been started from the side of In Heavens right now. And Khalid is giving a beautiful zone out. Okay, he will be missing it. Edith will be missing it. The whole team is joining in the turtle. Let's see who will be winning the retreat fight. The Raging Sandstorm is on, and it will be Suyu taking down the turtle, giving a lot of damage. Feather is striking with the action launch, giving a lot of damage onto the side of In Heavens at this moment. Even Queller, and oh my goodness, Kalea will be taking down the Khalid. Oh, what a way! I mean, I was thinking about the Evil Queller getting shot down. That Khalid at that moment, but it was Kalea. Yep, definitely. So right now that Kalea is being one of the greatest hindrance for the side of Hook by chance right now. I mean, you can't just predict where Kalea would be jumping on you from, right? She can jump over the walls, so you have to be careful about your positioning. She might just pick you up and throw you away from your teammates right into her own trap. So you have got to be careful. And if we look, Farsa and Granger, they do have the Purify, but the cooldown is quite long, so they would maybe escape one Tsunami Slam from Kalea, but not all of them. So she is playing quite aggressive as well. I think they've mastered Kalea quite well, but once again, fight onto the mid lane. And yeah, sorry. It's a double kill for the side of Suyu right now onto the Khalid, and that's a nice one. I mean, he wants that. He is totally farmed up right now, and this is a very bad news for the side of Team Hook by Cross. And look at that, the Cycling Claws do connect here onto the Joker, but it will not be much to get any fatalities onto the side of Team Hook by Cross at this moment. Definitely Hook by chance. And oh my goodness, mega kill in the hands of Finn right there, scared. Oh my god. AOG used defensively to get away. So in Heaven, they are creating a lot of pressure for Hook by chance right now. And the score 7-1. And if we see that Khalid, he is getting tsunami slammed away from his own turret, and he will be getting taken down in the hands of Team In Heaven. Right now, the turtle is definitely up for the side, and this time it seems In Heaven is gonna be taking that turtle yet again. 2 turtle in their hands out of 3. Now the goal difference is getting up and up. 3k goal difference for the side of Team In Heaven, putting up more and more pressure onto the top lane. Yet again, Stone gets taken down in the hands of 3 people right there. And Nino Kumar trying to maybe have a turret dive. GRG there goes over the wall, trying to maybe land a slam, but Khalid will be escaping with the Raging Sandstorm in his hands. Although the ult was wasted, you still have your life at your hand. So I think it was quite a fair trade. But looking at how the map distribution is happening, mid lane Frost was targeted by Hayabusa, but he was not able to land much damage in his sight. So he does get to live another day, and Hook by chance definitely feeling all the pressure, but still it is a first game in the best of 3 series, so you have to be quite mindful. If you sorry, oh my goodness, that almost scoffs SOD from behind, but no, he won't be actually participating in any of the team fight. But there we go, clap back from Hook by chance. 2 people down.
for the side of In Heaven, but still Finn decides that he still want a kill, and that would be the jungler down. So one trade at least made for the side of In Heaven right now, still leading by 3k. And Hookbachas, they did get the chance of having a little team fight up, but they were not able to capitalize it to their full extent because they did not have much of a farm. And Finn, he is getting the early game snowball, 604 in his hands. So if he does not get shut down, then I don't think there will be enough time for him, for Hook by Chance to have a comeback in the match. So third turtle going in the hands of In Heaven yet again. 3 out of 3 turtle in their hands. And the snipe coming in from Suyo. Feathered airstrike is there to zone them out. AOG completely connecting onto the backline. Same with the Raging Sandstorm, but no, Warrior will be getting taken out in the hands of Suyo. Same with Stone, followed by Hayabusa. Joker, he is trying to run away, so he will be getting away. Scared and Joker, those two are the only ones remaining. GRG tries to maybe bait out something from Joker, but no, he will be backing off, as I think not much of an overextension is the best key to winning a match. Still 3 for 13, 13 for 3 score, and a gold difference of staggering 5k in the hands of In Heaven. Just stopping the whole lead out over and over again, not letting Hook by Chance get back on their feet, not at all. And look at that, Kalea being quite aggressive, goes after Stone, might be a mistake, but no, In Heaven, they have the backup. Tsunami Slam is there, taking away Stone, and he will be getting taken down in the hands of Suyo. Legendary in his hands. One member down for the side of In Heaven yet again. Team Hope by Chance yet again. In Heaven is the one dealing all that damage, taking them out. Still, Granger is finding ways to to have a fair trade, farming around here and there, so he might, he might have a chance to save his teammates from the loose that they are heading towards right now. So Lord is gonna be spawning in 8 seconds in our map, and Team In Heaven already in position to go for the Lord. Moscow just clearing out the minion wave so they have easier vision. But look at that, Stone trying to go for an engage, but onto the backline. Kalea goes for a body slam on to Khalid, and he will be getting taken down in the hands of Frost, but speed is also quite low. But no, GRG will be getting taken and will be punished by Farsa, but Frost secures a double kill in his hands. 2 for 1 trade, quite successful trade for the side of Team In Heaven. And if we see, oh my goodness, okay, there, if that was a Lord steal, then it would have been great, but no, Hayabusa would not be getting the chance of stealing that Lord away at all. Now, Lord will be marching in from the top lane towards the side of Team Hope by Chance, and bodies falling here and there. 2 people again down for the side of Hope by Chance. Now, if we are gonna be talking about the map control and the lane sync, is definitely there. Although the minions are quite early onto the bottom lane, but I think it should all sync up well, because look at that, Lord is about to march on the top lane, but still there was a bit of a fight, but Hayabusa, he decides to back down. I would say quite wise choice, but no, Kalea won't be letting any of them go away. The body slam, the tsunami slam is definitely there. Flicker gets baited out, AOG as well, so that he is able to escape onto the bottom lane. Lord does get taken down, as he is the early Lord. So Team Hookbachas, they still have some chance to get a comeback in their match. Zoning coming in from Farsta, but GRG, look at that, little of HP, but he is still surviving because of his passive and because of his tankiness as well. I would say quite a great save from the side of In Heaven as well. Teams work together, and they are definitely working out
really, really well. All right, if we look at the map control again, Team in Heaven, they are in charge. They are getting dominated. They are dominating Hope by chance right now, and they are not letting them even get a single piece of farm in their hands. And look at that Hayabusa just going around checking the bush with his quad shadow, but won't be engaging much. Although Joker, he is playing quite safe. 113 position in his hands. Still, he needs to farm. He needs the stacks on the Capriccio. He needs all the support he can get from his team. But Conceal Pick coming in from Kalea, GRG tries to go for an engage, but they are being outnumbered. Although the backup is there, Obishadakul onto the back line, but no damage dealt. Another airstrike coming in. Nino Kumar will be getting taken down. AOG used up defensively again for the side of Hook by chance. Although Team in Heaven, they lost one member. They were able to successfully bait out quite the useful resources from the side of Folk by Chance, so I guess that is quite a win. Now, while we are talking about it, the Lord will be spawning. Second Lord of the first match would be spawning out, and this time, Team Hook by Chance, they have the Lord area control, and they are planning to contest for the Lord, but no. Body Slam, Tsunami Slam comes in from Kalea, and Frost will be taking that kill in his hands. Lord goes in the hands of Team in Heaven, and this time, this Honestly, how will they defend this right now? That is gonna be a level 2 Lord there, right, Zivo? definitely, Sunny. Oh my gosh, yes, you're here to save the day. Thank you so much. So, while we are talking about it, right, as you said, how are they gonna be defending that Lord? Because the minions, the quite big and chunky minions, are gonna be approaching towards the side of Hook by Chance. And same with that Lord as well. And they do not have the passive of the inhibitors as well. So it's gonna be quite hard for them. Trying their best out, but look at that Tsunami Slam comes in from Kalea yet again. Scared is getting marked out, but no, he will still be remain unharmed. Although 2 person down for the side of Hook by chance. The pressure, oh my goodness. Finn destroys one more turret, but look at Moskov and his speed popping out the base even before Lord can land a hit. Now that is how you open a match in this best of 3 series. Yeah, absolutely. What a wonderful match here from In Heaven. You know, in the last, the Moscow, he didn't care about the kills, right? He had an objective to mark the base, and he completed that objective. You can look it in the eyes. They wanted to end the game. They wanted to have that first win in the best of 3. And let us just, jump into the second match here, Zevo. The teams, they are kind of ready, and the picks, they will get shifted there, and it is going to be the Delhi server right now. So honestly, Oh, yeah, so the okay. server difference is there, and that kind of Yeah. sizes of the things, right? Yep, definitely explains it. Definitely explains Yeah. it. So this time, server will be in the favor of Hope by chance. So we might expect something, well, what do you call it? Something of a clapback from Hope by chance. So I think they kind of let the first match go because they knew they were about to shine in their own server. But it is in Heaven that we are talking about, and they secured 1 point. So they are still leading by 1 point. If they win this match, then they would be having a clean sweep 2-0 score. But you know,
we still gotta wait for Hope by Chance to have a chance to clap back. So yeah, we gotta wait a bit. Absolutely, Zero. And the thing is, this is gonna be their server, so this is their home ground, and the home ground advantage is real. And that's why we are trying to doing a best of three, right? We are providing teams the chances to provide their best game. And right now, both the teams, like Hood by Chance, they don't want to get their, the swipe out, right? 2-0. Especially here in the quarterfinals, these two slots, they are the global slots, right? They are like around immortal players as well. And honestly, I can't wait. I'm excited about the matches. The first match, it kind of looked like a one-sided match, right? But if the game went on for 2 or 3 minutes, the Hood by Chance, they did had a chance to come back, right? Yep, definitely. It's this is quite the beauty of a best of three series. You never know what the scores are. Even if you predict, even if you know the teams, there might be an element of surprise. So we got to keep that in check as well. Expect the unexpected, expect the unexpected. But yes, I'll introduce myself once again. I am Zio, and onto the caster's desk, we have Sunny as well. We are currently in the third match of the day, second match of this best of three series, and first pick in the hands of Hook by Chance this time. And first thing they decide to ban is that Harriet. Yeah, Zibo, they don't want that dancing boy, especially in the land of Dawn. Like, he is annoying, especially after those two items, right? You cannot stop his dashes. And Harriet ban for a first ban is a solid ban. But right now, the team in heaven, what will they go for? They can easily go for a Matilda here, even the assassin here. Yes, definitely. They can definitely opt for an assassin. As we saw in the last match, the Hayabusa was not, helping them out much. So this time in their own home ground, I think if they pick up an assassin, I think they should be able to use it to their max potential. But yes, Hylos ban out as well. We don't want to face that centaur. We don't want to face that horse looking guy. So half horse, half human. We don't want to face him out. Even if we have the counters, you know what I mean. Yeah, the sandbagging from Hylos is on another level, especially in the late game. And the thing is, I honestly want Hood by Chance to go Leslie. Like, what a story that will be, that Leslie, that savior of Hood by Chance. I want that. They played well, like Leslie, they have the game plan, they have their whole setup, and I'm really rooting for Leslie right now. Honestly, Ziva, won't you like the Leslie here? Yes, definitely. After I saw that Leslie in the last match, Yeah, I look forward to Hook by Chance and their Leslie, because that match they were losing from the early game, but Leslie was silently farming out, and she was the one dealing the main damage. She was dealing all the damage. So I would want to see that Leslie again, and this time, since it is a match point for the side of Hook by Chance and in Heaven, we might see a Leslie. There might be a teeny weeny bit of chance for that Leslie mm-hmm. to come out. But looking at the bands right now, there are still a lot of heroes open. Suyo, Matilda, Zushin, Cecilian, definitely the Joy as well. So both the teams, they have got to be quite cautious as to what they ban out, and the Phobius gets out. Okay, kind of foreshadowing a Joy, but we'll see what they're gonna be picking. That's right, Zivo. And by the looks of it, the team Hood by Chance, yeah, there's still the Kalia was open, and they went with that Kalia. And if you look at the bans, the Hilda has been banned, so they might be going for Assassin. The Joy is still open, and the Phobius is banned, so they might go for a Joy Hyper as well. And they don't want that early game invasion, right? Especially from that Hilda. The Hilda is annoying, and right now, the team in heaven will go for that Badan pick and a Ranger pick. Okay, so right now, an Eruthil and a Joy is looking good. Oh my god, there we go. Speak of Rachel, and we see her right in front of us.
just grab that chance before she gets banned out, because in heaven they got that Granger. So they would definitely be banning out the Irrital, the Mystic, Team Hook by Chance. The thing that Hook by Chance did in the previous match. So they got the Kalea, but they also traded out the Granger and that Padang. So we saw how GRG plays that Kalea. Now we're gonna be seeing how Stone plays out that Kalea. So she's just getting passed around here and there. But look at that similar draft. Because last time we saw a Kalea and Sicilian onto the side of In Heaven. This time it is on to the side of Hope by Chance. You know what? I'm thinking about something that Louis will be a great choice here from the side of Hook by Chance, because there is a Irithel. The diversion combo will help a lot to the Irithel, so they went for the Sicilian because Sicilian is in the meta. But it's okay. I mean, it's their choice. We can't say anything on that. But right now, the Fursa is open. So maybe we're gonna see a Fursa pick coming out from the side of In Evans, because there will be a poke burst combo coming out from them if the Fursa will be locked down. But no, they are winning the Hayabusa right now. The jungler will be select down from the side of team in Evans, and they will be banning the junglers right now easily, because they will not give those potential junglers to the side of team Hook by Chance. Because look at that, Lucas will be taken out. You don't want a Lucas, you don't want a utility jungler right now onto the side of team Hook by Chance HC, because you know what, Zivo, there is a Kalea. She can provide the reason to the Lucas as well as the crowd control, so it will help a lot to them. And as I said, Phobias and Harith are right now getting banned. I mean, people are getting to know that these guys are OP right now, and what a ban! What a ban from Hook by Chance. They know that the first Yep. and the Granger with a Bradang will be a fitting combo for right now for the side of In Heaven, so they just taken her out. Either they know or they heard you, Ash. It's gonna be either way. It's gonna be either one of the two. Either they're watching the stream, hearing us talk, or they just know that they're gonna be banning out that Farsa. Because in this team comp, as you said, Farsa would be a great choice for zoning and possibly dealing the backline damage as well with her range. So we can't forget. But look at that. Respect ban for In Heaven's Frost, banning out that Eve. Although Eve, she does get banned out quite in between matches, but she has not been in the ban list for quite a long time. But still, the Joy would be getting banned out from the side of In Heaven, not giving Team Hook by Chance the chance of picking up a nimble assassin, which would create a hindrance to their whole team comp. That I mean, the Gatot Kacha will right now being opted from the side of team in Heavens. They know that it will help a lot to them. I'm damn sure that they will be going for Eve, but Eve is banned right now. So maybe we're gonna see a Xavier or Lilia for the burst at this moment. Xavier actually will not provide the burst only. He can also provide this crowd control as well as the stun towards the enemies, because you can see there were a lot of mobility type heroes out from the side of Hook by Chance at this time, because the Alpha will be a great hindrance for the In Heaven's side, as well as the Kufra right now will be cooking up in this match, because there is a Hayabusa. And you know what? Kalea is going EXP against a Badang, or maybe against a Gato Kacha. What do you think? I mean, this hero with the fighter build do works great, but I'm not sure that she can manage to take down Badang or Gato Kacha in the EXP section. A student and a master going against each other would be quite an epic fight. But I think Badang on the roam is quite better than Gatot Kacha onto the roam, because I think Gatot Kacha, he would do quite well against a Kalea, as you said. So Badang would be there to provide that poke and maybe stop with his wall as well. So I think it would be quite great. But look at that. A Luo Yi getting hovered around by Frost. Maybe an ultimate diversion AOG fist crack combo might be coming in. Or if the timing is right, then maybe a full quad shadow teleport diversion combo. There are quite a lot of possibilities with the Luo Yi. Yeah, I mean, fist crack is also on for the Badang, so you're gonna see a fist crack diversion into the bush, and then boom, peekaboo,
You are caught off guard from the Badang, and this will be scary for the. I mean, it's. I'm telling it normally, but if you're playing in the match, there will be Badang coming onto the fish track, and from the bush, you're like, whoa, what is happening? What is happening? Why Badang is here? So it will be like that for the side of team Hook by Chance, but we can't say that. Anything can be happen. There may be a comeback from the side of Hook by Chance in this match. They may be showing their win in this match. Maybe taking the game into the third set, because I always want the game to be competitive, because I'm paying the internet bills to see this type of matches, and who don't want to see to play? The one of the greatest team, finest team of the Delhi to play Welcome to during this match. Mobile And with Legends! to the lineup down for the second set between Team Hook by Chance 5 versus Team seconds till the Eleven. enemy reaches In the which I will give you a battlefield. small insight that in the Smash first them! set, Team Eleven managed to take on the match, but right now the second set is on. Will we see a comeback, or will we see a clean sweep from the side of Eleven? If you guys are interested on that, you can comment down in the chat that who's gonna win this match. Will it be Eleven's or will it be Hook by Chance? And don't forget to hit the subscribe button, share the stream to your friends, because we want your support. Your support is something which just boosts our morale. And right now, the jungles are taking up their aggro. Zevo, please take over the match. Yep, definitely. So as we are seeing right now, Kufra, he is being quite aggressive, right? Just jumping on to the mage, which would be Luoyi, right here, just preventing him from doing anything at this point, because it is the early game, and Luoyi, she is quite powerful compared to a Sicilian, so he would be, causing quite a hindrance to Frost on the Luoyi to stop him from being a menace, right? So, but yes, okay, we got our answer, Ash. It is a Badang going against a Kalea. So, a master versus a student in the Absolutely. lane. Yeah. And as we're seeing right now, Badang, he's definitely winning out that lane against a Kalea. Yeah. And so many people thought that he is her father, but he's not that. He's just a master. I mean, he's just the inspiration, and she's just an apprentice to him. But right now, look at that force swing from Alpha. Well, not cut up that Badang, but a nice rotation, clearing up the lanes, and then coming on to the mid side, mid jungle, river side, so that he can provide some help. But right now, Kalea is going for the goal. He wants to shuck all the gold from the lane. He will not be able to do that. And the first turtle, the first neutral objective will be up soon in the map. River control. Look at the river control from the side of team in Heavens right now. They are going to capitalize the L2 and L1 bush at this moment. Louis giving a confront to the side of bot lane towards the support towards the Badang, and look at that. Yet Hayabusa is too far away for the turtle dance. I think team Hook by Chance will be starting the turtle dance first. Definitely, they're gonna be starting the turtle, and Finn is here quite on time. But the question is, will he be able to defend that turtle? But no, he does not. And a fight does break out in between after the turtle is getting taken down. Look at that. Just look at the amount of HPs there, and first blood going in the hands of, oh my goodness. Okay, it's giving me anxiety looking at all of the slither of HPs for the side of Team Hook by Chance. You know what, Zevo? Even though the turtle got slain by the side of Team Hook by Chance, the trade got won by the side of Team Evans, because they got 2 kills. And if you're gonna see the goal lead, look at that. I mean, it's kind of they took the turtle, but it's 700 goal lead onto the side of Evans. I mean, this is not a much goal lead. It can be replenished easily, but still, in the first half. Not in the first half, in just 3 minutes of the game, we can see the clear dominance coming out from the Eleven side. Look at the damage. AOG for the save. Definitely quite an expensive resources used up by GRG, but it's better to be safe than to be sorry, right? You would not want to give up your life if, like, by saving a skill which would be refreshing anyway. Your life matters more. But look at that, the pressure is shifting onto the top lane, because a Irrital against a Granger, I think she is getting quite heavy. Yeah, yep, and look at that. AOT. I mean, the Spirit of Alpha coming in right now with the fish track into the combo. The Alpha will be perished now at this moment. Hayabusa taking out the kill. And right now they're going inside the turret. Kalea being forcibly using the body slam to that Hayabusa, and the Hayabusa will be taken out as well. 1-for-1 trade. The junglers are taking down. It's a very bad position. We'll see Badang taking out from here. No.
It will be a double kill for the Kalia. In the off cam, you can see the Granger managed to take down the Irithel. This is kind of, out of syllabus. I mean, Irithel is the counter of Granger. Yep. Yep, Irithel is the counter of Granger, but she is getting countered right now. So it's like you're countering your own counter. But yes, Granger was assisted as well, so it was quite a 1 versus 3 moment. But the turtle will be shifting onto the side of Team Hope by Chance yet again. But top lane though, Ash. Again, it was not needed. I mean, you could have gone easily without wasting that AOG, but still, okay. I mean, you don't want to give the kills to the handoff. Look at that. Thankful Claws will not connect. Waiting for one strike onto the Tyrant's Revenge onto that Louis, but it will be not much for the side of Hook by Chance at this moment. It's a do-or-die match for them, but it's not a. They doesn't have a great chance. I mean, great start in this match, I can say. Definitely. Although they have this score in their hands, the goal lead is not that much. So, diversion? Yup, into the bush, and Alpha is not aware of it, even though the Sicilian is not aware of it. Look at that. Beast is going on to him, and the Thankful Claws do not connect it. Rhapsody and Death Sonata in the action. Speed of Alpha at a sliver of HP. Look at the damage from the side of Ranger. It will be Alpha going down over there, as well as Irithel will be taking an instant redemption onto that. But Dang, 1-for-1 down, a lot of damage from the Hayabusa. Double kill for the Ranger. Aliyah and the Chariot. AOG into the action, but it will be a double kill for the Irithel. Both these sides are playing up in this match. Hoagie Shadow kill into the action. Triple kill for the Granger. Will it be a Maniac? Will it be a Maniac onto the Irithel? No, it will not be a shutdown onto the Irithel or not a Maniac, but they managed to take down 3 man at this moment. Trade again one from the side of team in Heavens. Yep. So that Luoyi, the diversion played out quite in the favor of Team in Heaven. It was quite the wise choice for going onto the backline. That is the way we want to see a diversion, and they definitely pulled out a team fight, and they won. They won the team fight, putting more and more pressure onto the side of Hook by Chance right now. And Turtle will be spawning again onto the top lane, but look at the positioning of Team in Heaven, just trying to zone away Team Hook by Chance from preventing them to get anywhere near that Turtle. AOG again, 3 man being there, 4 man from the side of Ineben, also able for the Granger on the Trooper right now. Oh, look at that, the turtle will be slain. Alpha with the redemption on the Batang, and then our revenge coming from their low right now. Kalea will be falling down. Irithel managed to take down 1 man, but it's not much for the side of team Hook by Chance at this moment. Turtle in the hand, turrets in the hand, kills in the hand. Team in Heavens are right now literally sending all those Hook by Chance to the Heaven side. Yep. Definitely in Heaven doing their job, sending Hook by Chance to the Heaven. Well said. A really great statement right there. So the map control for the side of in Heaven, they are quite excelling at it. But Frost gets caught off guard by 2 people. Would be getting taken down. A kill secured for the side of Team Hook by Chance. So I would say that was quite a mispositioning coming in from Luoyi. Given that you are the main backbone in this team comp, we will be needing a lot of diversion from you. So that was quite of a a risky place to be in. Yeah, I say it's gutsy move, but it's okay. I mean, you know what just stopping the team Hook by Chance in this match to win? It's that they doesn't have a hero who can catch up the backliners other than the Irithel. I mean, how much Irithel can give a backliners damage? Because if you want to see in the whole match, look at the damage right now with the diversion playing on like the Granger again going with the Rhapsody double kill. He managed to take down the Sicilian. Irithel with the redemption onto the Granger, managed to take a mega kill. Still now Irithel is not falling down. He is managing to take down again and again. AOG will be meshed onto a Natalia, but the Kalea will be fine at this moment. Badang is going on with the flicker out, giving a lot of damage. Ogi Shadow kill into the action. Rosebull will be the barrier for the Irithel to be in the safer zone. Badang with the overextension will be punished at this moment without any kills. A very gutsy move again, but they will be losing some gold as well, with trade again winning from the start of Events. Yep, definitely. So even if
Team Hook by Chance, they have got the Kalea, they have got the Sicilian. They are not able to, utilize the full combo. I get that Kufra pick coming in because you have got to stop that Hayabusa, but since almost all of the assassin heroes were banned out, they did not have any chance to pick up any assassin hero. And Alpha, I think he kind of broke the deal here for the side of Hook by Chance, but look at that, around the Lord. Okay, Sicilian will be taken down. AOT again will be missed at a sliver of HP. The Kalea managed to take down the Gatota at this moment. Force swing will be on. Kalea will be taken down as well. And the force swing will be taking down the Badang. Double kill for the Hayabusa going on to the Alpha right now. Will it be a triple kill? No, it's a double kill for the Granger or the Cupra. 4 men down already from the side of team. Oh my Good chance. Only one man being there. Irithel still being in the safer zone, but the Lord is totally open right now. Divergent do plays again, but the Irithel will not be caught at this moment. And the pre-Lord towards the side of team. Yes, definitely. So that was quite one more trade, quite a great trade getting up for the side of In Heaven. Yet again, even taking that Lord, even if they lost the turtle, they did not lose the Lord fight because they know Lord is more significant rather than the turtle because he's gonna be helping you out, clear those lanes and enhance the minions for your whole team, put more pressure, which will be helping in further pushing and going towards a victory. But if we look, the mid lane turret is still standing, and this time for In Heaven, their goal is to pop out the turret. But Team Hook by Chance, they know quite well the significance of the mid lane turret. So another diversion coming in. And this time for the Kalea. Kalea got it, but look at the inang damage coming from the A. Oh my goodness, AOG into the action right now. The Ranger will be flaming the turret, but it's Hayabusa who will be taking on kills and also taking down the tiers 2 in the top section. They managed to take it. Holy Blazing is up over there. It will be defending the Lord Spear of Alpha. It's action, but overextension. Look at the damage coming from the side of Team 11 at this moment. Alpha has to take back a step right now to be in the safer zone, but the tier 2 will be taken out at this moment. Look at that. I mean, Tyrant's range was about to come, but it's not much. Again, the one more second kill will be taken down. Killing for the Granger. The overextension will be being punished again from the side of Team 11 right now. I mean, slowly they are taking up the match. They're showing their dominance in this match. Zevo, what do you think? Retaliation from the side of Team Hook by Chance or no chance? Well, there is a high chance that they have a retaliation because if we look at Joker, he is playing quite safe. He is farming up and he's going to be the main damage dealer for the side of Hook by Chance because it is already heading, the match is already heading on towards the late game. So this is the time where the marksman is gonna be shining out a lot rather compared to all of the other heroes, right? But still they have the Sicilian as well, but oh my goodness, one person amongst 5. Yeah, and then AOG, Rhapsody, that Sonata, Face Crack, everything was there onto her. You see, like, what the Holy Lord, what I did. Why all these things onto me? Yes. So, Hook by Chance, their late game potential is a lot. But in Heaven, they are not giving up. Oh my god. Finn does land a kill, but he will be getting taken down in the hands of Irithel right there. She recalled on time to have his hands onto the jungler of In Heaven. Now, In Heaven, they were doing quite well in the early game, but since it is almost a late game, Sicilian and Irithel are the ones shining right now. And with the jungler gone, I don't think In Heaven can contest for that Lord anymore. Yeah, but look at that. They're stalling the Lord right now. A lot of damage from this Irithel will be helping the Granger. The Rose Gold Spear of Alpha from nowhere will be down there to those guys at this moment. And look at that Rhapsody into the action. Sliver of HP, the force swing. And it will be Badang using the oh my Frankian, but it's not much. He'll be taken down as well. 2 men down from the side of In Heavens right now. Hook by Chance is right now having a chance to make a comeback. Look at that jump coming from the Kufra. 3 men down again. It will be Hayabusa going down again, and the Lord will be slain easily. Hook by Chance is right now into the comeback, and all because of the Irithel. Yep, definitely.
Team in Heaven, they made a mistake of not, not targeting the Irithel when the chance was there. But she is getting the farm that is needed. Still, though, the pressure is onto the side of Hope by Chance. Although Joker is doing quite a phenomenal job, there might be another team fight that would be breaking out because the Lord will be marching in from the mid lane onto the side of In Heaven this time. There we go, Tsunami Slam coming in from Kalea and the AOG coming in from Gacha as well. Killing spree for Alpha, and that is two people down for the side of Team In Heaven. GRG gets taken out, staying with Nino Kumar. That is a monster kill for Joker and a shutdown. Still, there is four people down for the side of Team In Heaven this time. For one person remaining to defend the base with the Lord coming in, it would be quite hard for Hayabusa. He does not have his Ogre Shadow kill as well. So, safe to say, I think the game would be going in the hands of Team Hook by Chance, but they want to go for a full team wipeout, although the Lord does pop out that base before they can do that. Victory! So, the score is tied to a 1-1, and this is gonna be the decider match for both the teams. We have seen In Heaven dominate the first match. Second match, they were dominating the early game, but their main issue was they did not focus on Joker, who had the Irithel. So she was the reason of In Heaven's downfall. And this time, I hope they do not make the same mistake. Mark for the marksman more. And, we will be dishing out a game number 3, a decider match. So it is gonna be quite interesting and a heated up match. Seems like both the teams are ready. So without further ado, we are just gonna continue the match. Yes. So the sides have been swapped, and this time In Heaven is getting the first pick in their hands. Who knows? We might see that Galea and the Sicilian in their hands again. They decide to ban out that high loss. One thing I have noticed, the side which gets the Kalea and the Sicilian is the one having out having the victory in their hands. So what is the best thing to do? Just ban out. But better be safe than sorry. That is what Team Hook by Chance are doing right now. Kalea gets banned out, but OBS won't be letting go away by Team In Heaven, and he will be getting banned out yet again. Staying with Harriet as well, the dancer boy. So we are not gonna be seeing a Harriet as well, neither in all of this best of 3 series match. One thing I have noticed about both the teams, they do not go for a jungle priority. They just go for utility heroes, which would help them quite a lot, and just pick out the jungler, which is free. And they give the main focus on to anyone who are able to have the who are able to have the snowball potential. So yes, the Fanny and the Suyo would be getting banned out from the side of both the teams. So the first first ban phase has been completed, and the draft is gonna be playing out quite important for both teams. Still, Pitt decides to go for the Granger because last match he was not able to use that Granger in his full potential. So he wants a revenge match. Again, scared picking up the Sicilian and the Badang. So it is gonna be quite hard for the side of Team In Heaven, who by chance just picking out whatever they are comfortable around.
And this time, will it be an Irithel coming again? We'll have to wait and watch. Will there be an Hayabusa? That also we'll have to wait and watch. But the question is, when being pushed into a corner, you pull out your greatest weapons. So, are we gonna be seeing their greatest weapons? Who knows? But yes, a Farsa going against the Sicilian, really wise choice. Did Because she somebody also said Leslie for Hood by Chance? Like, just go with that, Leslie, man. Trust the process. The Leslie will work, man. But no, the Joker is on Erythel. The Ranger counter is here, Zivo. And the Hilda is there as well. So, do you think the team in heaven will they invade in the early game? Ooh, they have quite the looking at the team composition, they have the chance to invade because Nino Kumar is on the Hilda and Frost is on the Farsa. So both of them are quite a good early game poke heroes. So you can definitely invade out. But I just hope Team in Heaven, they make sure to put equal focus onto Joker again because last time it was the Irithel who was the main mastermind behind the success. I would say success, yeah, victory of Team Moba Chance. So this time they need to watch out for him as well. Although it's quite sad we did not get to see that Leslie, but who knows in the upcoming matches if they're still there, we might see more and more Leslie. Yeah, that's right, Zivo. And the thing is, they let the Joker get the free farm, right? Free farm, and even the troops fight. Nobody was marking the Joker. They were trying to, but they were unsuccessful. And right now, the Joy, the Hayabusa, the CC has been banned. Even the Looters. Look at those bans, man. The bans are top tier. And without any thinking, the team Hood by Chance, they are here with the plan, and they're gonna follow that plan, and they're gonna take that Gato. They need that sandbats, right? The Badang and the Gato. They are, especially in the late game, they are very hard to, kill and do any type of damage. And the zoning that they provide, both of them, they do have that CC and that taunt skill. You cannot forever about that. Yes, definitely. So, two of the sandbags getting secured by the side of Hook by Chance, and two of the main damage dealers getting secured as well. This time, GRG decides to whip out a Matilda because why not? You have the assassin support to. Oh my god! There Oh it my is, god! Oh my the god! I need Batia Hyper. Zero. Oh, okay. Okay. Clickbait is there. Wait, Hey. no. Clickbait. The thing about the Baxia Hyper is like just yesterday. The thing is, about the Rethel, right? The Rethel, she had her whole build, right? And she was doing like 300 damage to Batsia Hyper in the late game with full build. A full Yep. build Irithel doing 300 damage at 16-minute mark to a Batsia Hyper. That's how broken it is. That's the MM. That's your ADC. That Irithel is there to carry your game, and she's doing 300 damage. That was just beautiful right there. So the question is another sandbag getting added up? Yes, definitely. So last pick would be the Fredrin coming in from the side of Hook by Chance. Looking at both the compositions, I do not get why Team Hook by Chance picked up the Fredrin because they have Alpha, which is the direct counter of Fredrin, and there is the Matilda. So an Alpha Matilda combo, quite classic to dive onto the back line. Even if they picked out the fighter, they have Matilda to, use her Circling Eagle and her Guiding Wind to go towards the backline, target the Irithel, target the Sicilian. So I think it should work out. And with that Hilda, she's gonna be roaming around as well. I don't think she's gonna be staying in one lane. So there is quite a great draft coming in from both the teams. Absolutely. I think about the Fedrin, the main thinking is basically, I think they want that Sicilian to be safe, right? They want more sandbats. They Welcome are, to Mobile betting on that Legends. Sicilian to carry them in the late game.
And 5 honestly, it seconds can till the work. enemy Like the reaches the Sicilian battlefield. can carry. Smash them. But the thing is, it is gonna be in the super late game around 16 to 17 minutes mass, and even the Fredrin, the way he sorts damage, man, with the true damage, right? His third skill is wonderful as well. Like it can change the tide, and the 14 from scared will be there. And look at that, the GRG here from In Heaven, providing perfect vision. Oh, quite deep into the enemy jungle, don't you agree? But yes, trying to land a hit on the red buff. Look at that. Oh, still there, not moving out at all. And Ash, what do you have to say? Okay, he just yep. What Yep. Ash, what do you have to say about the positioning of Matilda here? I mean, I was literally seeing that moment, but it's okay. I mean, she may be thinking something else at this time. And look at that. I mean, she went for overextension, but it's okay. She got out from that situation as well. Look at that Hilda. Badang is being chasing that Hilda right now at this moment. Mhm. And it will not be much for the Badang. I mean, look at the damage coming from the Hilda. Hilda got the region at the first moment. And look at that free man onto the Irithel side right now, trying to gank upon her. And I'm happy that the match went for the third set. Let's see who'll be taking on this match in events or Hook by Chance, because Hook by Chance managed to make their comeback in the previous set. Let's see, both of them have a do or die set right now. Yep. But they do or die situation for both the teams, and they are not gonna be, giving out any more chances towards their enemies to take the victory away from their own hands. So yes, the turtle will be spawning in first turtle of the third match of this best of three series, and both the teams are preparing to go and have that turtle for himself. But it seems like Hook by Chance they are the first one to arrive. Although Nino Kumar, look at the aggression coming in from Nino Kumar. Obviously, nice aggression. I mean, aggression do speaks a lot of things. But right now, the turtle dance being disrupted from the side of team Hook by Chance, and look at that fist track onto the action of the flicker. All first blood for the Badang will be done, and Alpha, let's see who. Oh, But then he managed to take down the turtle, and in the oh, meantime, he managed to going for the Badang at this moment. Flicker, he used to be the fifth place. This is at a flavor of HP. Look at that, they're going on to that, but it will be certain taking down that Matilda for the overextension, and as well as again they're going for that Hilda, but the Flicker will be helping them a lot. praises Rat, just saving Fredrin away from getting taken out actually. Little bit HP and he just boom pops Hello, out of praises Rat. Sunny. So yes, so while we are talking about it, I would like to talk how around that third part, if you notice, Dash, the the first retry was made by our Fredrin here, missed by a couple of HPs. I think that was quite a what do you call it, panic retry, because you were getting surrounded by a lot of your enemy, and you were getting zoned out, so you had to focus on the turtle as well. You had to focus on the objective. You also had to save yourself. So there are moments like this when we like have quite these quite panic attacks. But my question to you would be, the team comp that we have right now, since Team in Heaven, they do not have someone to jump in that backline, do not have an assassin, that Matilda and Alpha combo going against an Irithel and that Sicilian. What do you say? Will they be able to make that combo work and burst down both the two backliners? Yeah, but I mean, I think it will help them a lot, but the overextension they're doing will not help them a lot. I mean, they managed to take down the turtle. They need to bring backup at that moment, and unnecessarily, Matilda went for a, I mean, kill, even though Hilda was also supporting her at that moment. But then the overextension was got punished from the side of team Hook by Chance, and they managed to take down some kills. Even though you are taking the turtle, you are giving 3 kills. That means you are not winning the trade. You're getting the turtle, you're giving the 3 kills. It's not a Mhm. winning trade. Uh, Such things from the side of in Evans. So it's Yes. like you should be playing safe. In this meta, what's you really need is to not just bait yourself for a kill. You need to take the kill and come back. Therefore,
Matilda Alpha is working, because Alpha doesn't have a lot much mobility other than a spear of Alpha. So if he's indulging into a fight, if he's diving into a, gang, then he need to clear out some enemies and then he need to come back so that he will not bait himself. So for the comeback, you need a Matilda at that moment. But if the Matilda is going, upraising, is going so much overextending, it will not help the team at much. Because if you're gonna see, Hook by Chance is using that chance to pick up some kills. Even though they lost the turtle, they managed to replenish the gold with some kills, and they are in the lead again. Mm-hmm. Yes, definitely. So in that team com, GRG on then Matilda, his positioning was off almost in all of the places. And I think as a support, as the main member being support, we all know how the potential of Matilda is, right? So she has quite a lot of potential, but the thing is, she is not getting used up to her max potential right now. Every single time, there has been quite misstep coming in from GRG, and he's the first one to get taken down, and just being a little bit too useless, I would say. So they kind of need to work on their team coordination, and of course can't forget, I guess, the second game's win lose against Hope by Chance kind of took a toll on them, but still they should be able to fight back. They do have bit on that Granger for the late game security, same with Frost for that zoning. So if both of them work well, at least it should be a comebackable match. You know who made the comeback in the previous match? It was Joker. It was Irithel who made the comeback. They Yep. didn't able to take down the Irithel, and the Irithel was literally taking up the kills. And right now we're again back into the match. Thank you for our OP production to, just take out the situation as soon as possible. And they managed to again come back into the action. And here we are, the team Hook by Chance are taking up their aggro again. Look at that overextension. Doesn't need it from the Matilda. That freezes straight into the action, managed to get back into the safer zone, but what is happening? What is happening? Victory! Okay. And guys, there is a problem, I think. It seems from the side of team In Heavens, and they want for a rematch with the same draft. So we'll be taking a short break and we'll be directly coming into the match, guys. Build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will. I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records and finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit.
Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to where I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records and finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to where I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records and finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Mobile Legends. On guys, again this is the third 5 set between seconds team till the enemy First reaches here, the team, battlefield. Smash by them. chance, by chance with the All right side in troops Evans deployed. one side, first match won by Evans by a dominating play. Then we again saw a dominating play in the second set, but it was the Irithel who just took out the whole dominance from the side of team Evans for the side of by chance. They saw their chance to win the match. Right now, we are here into the third set. The do what I said for both the teams. It will be wrapped up for them. This is Odyssey Cup, guys, and we are here in the Ryuga Esports right now. Hit the subscribe button, share the stream to your friends. Do comment who's gonna win the match, book by chance or in heaven. In the casting deck, it's your boy Astezi, and with me is none than my co-caster Zevo. Zevo, please take over the match. Yep. So, okay, I think we are seeing a deja vu yet again because GRG, I saw him at the same spot. I swear I saw him at the same spot in the last match as well. First blood. Blue team hero has been slain. Red team has slain the turtle. Red team hero has been slain. Blue
team hero has been slain. Red team hero has been slain. that she might just start dominating again. But look at that focus shifting onto the top lane. All 10 members, they're actually around the river area trying to maybe dish out a team fight, and who knows which team would start initiating. Yep, and you can see right now, I mean, kind of team Hook by Chance is waiting for a fight right now. They're not going overextend, moving overextend because they're waiting for the team Ineven to start the gang. But Ineven is also playing very safe at this moment. They don't want to take an unnecessary fight over here. But look at the Badang sucking out all the gold from the bot lane third tier. And with this, Spear of Alpha into the action post swing and let it be the second claw and the AOG on the no one, but the back face is giving a lot of damage. Matilda and the Fursa will be using their escape skills and the flicker will be up for the side of Matilda. One man down. Yep, definitely. Just one more kill secured by the side of Hook by Chance. Although, I think the scores, both the teams, they know that this is their final match, so they are just playing their heart out. But oh my goodness, GRG was stuck in that fist wall, and Team Hook by Chance, they are not gonna be giving In Heavens the chance to take that turtle away now. The jungle invade is there, and Team In Heaven is getting that choked down. You're Yep. talking about the turtle. I'm scary about that blue buff. They're not giving the chance to take down the blue buff, but no, Alpha will be securing the blue buff. Yep. Securing that blue buff with no retribution in his hands. Still got quite lucky with the timing as well. But yes, both the teams, they do not have any of their turrets fallen down, so that is quite a good point. But still, if we look at the map control, it is quite divided among the lanes. Irrital is having the golding control, while In Heaven is having the mid lane, and seems like a fight is gonna be popping out. Obviously, and look at that, Alpha managed to take down the Gatotaka into the Redemption. Alpha will also be losing his life, but right now Reganger managed to take down the Fedrin. 2-for-1 trade, and also the Turtle being onto the side right now. But look at that, Matilda with a gliding wind, helping that Ranger right now. Rhapsody into the action. That Sonata will not be in the perfection way to that Irithel, but Irithel will be safe. But look at that, they will be getting that tier 3. But the team, the Co, is right now joining the team right now. Irithel know that AOT into the action right now, catching up on 2 people, leaving a lot of damage. Bad impact from the back line. Now to take down the Forza with the hand onto that Gatotkacha. GG. Yeah, definitely. So In Heaven, they were, oh my goodness, Speed is getting surrounded by 5 people there. He had nowhere to go. So back to my point, In Heaven, they were planning on taking out the top tier, top lane turret, the first one, but they were stopped by Gatotkacha by initiating with that AOG, and the follow-up was definitely there. But once again, blue buff will be getting invaded, and look at that, Ash. Obviously, look at that. They managed to take down the target right now. Alpha going on in the spread drain. Do manage to take down him, but look at that. Turtle is up. No jungler. Spear of Alpha into the action. Flicker will be popped off for the save, but at the flavor of HP, the fourth swing will be working better than anything else to be eliminating that Badang from the map. They will be getting the 3 turtle. Bad impact and bad Beast is on right now and doing a lot of damage. The Matilda is going for the Sucking Eagle. Look at that, Gliding Wind will be helping a lot with the Granger. The Sicilian will be eliminated as well. But in the meantime, the Feather Strike got used. Irithel in the safer zone will be rotating down towards the bot lane.
Either she has the advantage. She has the advantage of mobility, so she can quite surf around the map. She also has a sprint, and she also has the extra movement speed provided by her ult, the heavy crossbow. So it should be helping her quite a lot, especially against a Matilda. But still, we all know Matilda may be a chase hero, although GRG not doing quite a great job once Red team again. hero has been Okay. slain. Erytho will be eliminated by the Granger right now. One man down, and we can see, I mean, Hook by Chance and both in Evans are trying their best in this match. Tank Queen Claws do connect onto two people with the gliding wind, and the Alpha with the Spear of Alpha right now for that Gathod Kacha. Before he could use his AOG, got perished away from the map. Yep, definitely. So as we are seeing right now, this time Irithel, she is getting quite choked down, but still she is holding her ground. And once again, Team Hope by Chance, they are getting choked down, but still they they might just be able to have a comeback because they still have the Irithel, they still have the Sicilian Bats Feast, thus get baited out. So one good resource is wasted for the side of Team Hook by Chance, and checking around the bush is definitely something that you need to do before a neutral objective, before a team fight, because it is gonna be the game maker of the entire match. It might turn the whole match. You have to be aware of your surroundings. Speaking of surrounding, the Lord will be spawning onto the top lane, and seems like both the teams, they are planning to contest the Lord, and already a fight has started around the Lord by both the teams. Yep, and with this we can see that the whole team is being in the Lord dance right now, and maybe I can say a upper hand, a pure advantage is right now into the hand of Team 11. But look at that, Sucking Eagle into the action. The rest I got used unnecessarily very earlier, but right now with the bat impact and the back piece being on, we're going on to the Team 11. Alpha being only one over there, and Hilda being going on to the down, and look at that, killing spree for the Granger. Until now to take down the Hilda. It will be a double kill for the Granger. Let's see. At a sliver of HP, Badang managed to win back. Circling Eagle will be cancelled out right now. Alpha is again going for a lot dance. Adrian being there wants to get, he also wants to get contest for this lot. Let's see. But before that, Irithel got caught off guard. The Feather Strike and the Death Sonata into the action. Mega kill for the Granger. They managed to take down two people at this moment. Badang being back again after regaining the HP, but the Lord Dance already being up, and it is giving a sure advantage for the side of Team in Heavens at this moment. Fredrin in the backside wants to get a retreat on his hand. Let's see, and in the meantime, in the off camera, we can see the Sicilian got down, Suckling Eagle into the action again. The whole team is getting back into the action. Look at that Spear of Alpha and the fish crack. Managed to take down the Badang before that is placed. Look at that. It will be a double kill on the Federal and unstoppable on the Gacha free Lord for the side of Heaven. Yep, definitely free Lord, uncontested Lord. I mean, there was the contest, but they made the wise choice to reset that Lord and go for the kills instead. Now Joker, he is the only one remaining right now. Will be playing it out safe. Scared is there to help him, but for how long is the question? Because the Lord is gonna be marching in from the bottom lane this time towards the side of Team Hope by Chance. And as we all know, in Heaven, they are doing a phenomenal job right now. And Fredrin, I don't know, picking out that Fredrin in this kind of team comp, I think it kind of threw the whole balance of the game out. But I just, it's just gotta be the execution that is quite lacking, because 60% draft, 40% execution. Even if you lose that draft, if you are good at execution, then it should be able to you should be able to have a comeback. But still, they have their Irithel and their Sicilian in their own hands, and once again, Red team hero has been Look at that. slain. Lane blazing has been up right now. Fedrin got caught off guard, and look at that at the sliver of HP. The
monster kill will be secured onto the hand of Granger on the Grotowska challenge. Flavor of HP against the double kill for the Granger. With Sonata, one more, and it will be a triple kill. Will it be a Maniac? The Minions are marching into the base towers right now. Inhibitor is totally open. The top side Inhibitor will be taken down. Oliver down for the survive, and Minions are going into the base. They're locking the base right now. But I'm with the first crack. And look at that, Hilda got down. They are locking the base. The Feather Airstrike being on. One Minion will be the base, totally being devoured by the side of Team in Heaven. They will be going into the semi-finals by just taking Team Hook by Chance out from the tournament. Yep, Hook by Chance did not get the chance to compete in the semi-finals, and In Heaven this time will be advancing towards the semi-finals, as you said. Now, this match, I would say, was not quite easy for both the teams because they were trying their best, and in that process, both the teams, they gave out everything that they they gave their everything to be able to win this match, and I think kudos to both the teams for trying their best out. But we all learn from our mistakes. We all learn. We get more and more experiences. The more things we do. So better luck next time for Hook by Chance. I hope you get the chance to be in the tournament yet again. But if we're gonna be talking about the match, Ash, right? So in the early phases of the game, we did not see GRG being quite useful for the side of In Heaven because his positioning was quite off. But I think he kind of picked up on that, and he was fixing out his positions. So it did work out quite well. What don't you think? Yeah, obviously. And you know what? I mean, the Granger was the real problem in this match. I thought that the Joker will be giving a comeback again for the side of Hook by Chance, but the early snowball was totally being fed onto that Granger, so they didn't even manage to flinch a little bit onto that Granger. So in the end, this goes well for the side of Team in Evans. It's okay. You will be coming back stronger in some other tournaments, shining more brighter in some other tournaments. But now, this night belongs to the side of Team in Evans. And with this, we'll be taking a short break before the last match gets ready. So there's one more BO3, guys. So don't go anywhere. Stay tuned with us. Hit the subscribe button, share the stream to your friends. Don't forget to like the stream and comment in the stream who gonna win the match. Will it be Spirit Ops or will it be Armageddon Esports? Okay, Manipur's best team is here. Let's see. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to where I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got a shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission,
minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich, cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich, cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich, cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich, cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I can. All right, ladies and gentlemen, welcome back to the Odyssey Cup quarterfinals happening right now, hosted by none other than your Ryuka Esports. Now, this is gonna be the final match of the day, and to make things more and more interesting, onto the caster's desk. This time, this is your caster Zero, and we'll be joined by my fellow caster, my friend
Peachy. So, Peachy, how are you doing today? All good, and I'm excited to see another day. And I'm gonna get on esports. I'm looking at their match. I'm excited. And one more thing is, I'm gonna get on esports. They are quite experienced, so I'm curious to see. As usual, this is going to be the best of three. Let's see, is it going to be a clean sweep, or we may be looking at a 2-1 situation? Yes, definitely. So there are two possibilities, 2-1 situation and a 2-0 clean sweep. So we are going to be seeing experience go against new talents, right? Since they made it out this far in the quarterfinals, they should have something in them. So we are going to be seeing, while look at that blue side, first pick would be going on to for the side of team SOP, and the question is, what will they be banning out? It is always a question which remains curious until and unless they get banned out, right? So first ban would be that Badang. What aside from the meta bans, what kind of hero bans that you are looking forward to see, PJ? The Suyu, the Joy, and especially the Hanzo team Team Armageddon Esports, they love to play the Hanzo. So that is one thing Team Spirit Ops needs to look out for. Looks like Spirit Ops are on the blue side. They are having the upper hand of picking the first pick, but at the same time they are giving away counters for them. They are kind of giving away what kind of gameplay that they will be making. As of now, Granger should be there along with the Harriet, Irithel, and if Team SOP picks up the Granger, Irithel might be on the way, or maybe we will be looking at a Harriet. Yes, definitely. Harriet and Granger and Iritel are the top three goal lane choices that our current meta can offer right now. And seems like Team Spirit Ops, they are quite considering as to what hero they could ban, because there are a lot of heroes which are provide a great which pose a great threat to both the teams. But yes, they decide to go for that. Matilda might be influenced from the last match because she has the ability to reach for the backline with her Suckling Eagle, Assassin, and a support all together. So that is something you need to fare out. And of course, we can't forget Fanny getting banned out, just earning the permanent ban position in her name. That's true. That's true. Now the Kalia, addition of her really works out very well along with the Louis, but not today. We are looking at the one getting banned, but at the same time, team Armageddon Esports, look at them. Fanny picked out. They are searching for Team SOP. Are also searching for a little bit of a support to be taken out as well. Looks like they haven't done their homework a little bit, since Team Armageddon Esports loves to play around the tanky side. But as of now, another hero joins in, having the 100% ban rate. Today, well, look at that. First match banned already. I'm not surprised, but this gives away a lot of marksmen, a lot of fighters as well. Fighters such as the Phobias is open, the Gatotkacha is open, the High Loss is open. Very flexible picks, but what is it going to be? Yes, so they have a lot of heroes open at their disposal, but they decide to go for the assassin ban. We gotta ban out that Joy. Definitely have the respect ban out. Same with Zushin as well. As we are seeing in the current ban list, they are all the meta bans, the heroes that we do not want to face against when we are going in a 5v5, maybe a rank, maybe a tournament. So yes, but it gives out a lot of opportunities for a lot of heroes to get picked out. Suyo might be a great first pick, followed by Sicilian, and as you said, the Phobias, Getotkacha, Hylos, all of them are open. But yes, Lucas as well onto the jungle position, climbing up the ranks as we speak. The first pick in the hands of Team Spirit Ops, that would be the Lucas coming in.
Okay, okay. Now, wasn't expecting a Lucas, especially onto the jungler this early on. Now that Armageddon Esports Mhm. can pick up a Granger, we may be looking at a Harriet on their side, or maybe a 4vs. 4vs works out very well, or even the Katurkacho high-loss combo can be prioritized right here. A lot of options for Team Armageddon Esports, but at the same time, they need something to, give a competition to this Lucas. And as we know, if there's a Lucas, the Valentina should be following through. The IMU is absolute bonkers. Yes, definitely. And the mechanics of Lucas Valentina, she uses it to her full max potential because her IMU, if she gets the ults of other heroes, then the cooldown is quite long. But it's not the same case for Lucas, right? So she has more chance of spamming Lucas's beast form rather than Lucas himself. So that is the main reason why she is the one of the main counters of Lucas. But we do see Team Spirit Ops going really, really chunky because Lucas can sustain a lot and Hylos as well. On top of that, you gotta pick out the Katotkacha. So trio sandbags coming in. It is gonna be one hell of a match for Team Armageddon Esports to, counter out those three chunky heroes. But you know what? They still have an alpha on their side if they're gonna be picking it. That's true. That's true. Now, one more thing is they can pick up a carry. Team Armageddon Esports, Mhm. highly possible. Now that Yes. we are looking at high tanky heroes coming in, this Valentina has a lot of ultimates to shop through. AOG is there. You're talking about the Glorious Pathway as well. Glorious Pathway works out very well when you need a full blown team fight, slowing your enemies down when the Garukacha used up his AOG. After that, it's somewhere along the timeline. I want to see if Valentina picks up the Glorious Pathway, but very rare case. But at the Mhm. same time, we are looking at a Harriet, not a carry, not a Lunox onto the goal lane. That would be a Harriet. Now, Team Armageddon Esports, they have to play around the Harriet, making sure that the Harriet farms up. Same Mhm. goes for the Lucas as well. Lucas needs to get a little bit of an early push with his assist or maybe kills to get that little bit of a cold onto his hands. Now, when he does get that, it works out so well. Plus, let's not forget they have a Gaturkacha as well as a high loss. Garukacha onto the back ends, high loss into the front lane. Yes. Very good team composition. Yes, definitely. So they have everything for the front line and the back line as well. Team Spirit Ops, they have done their research on how they are gonna be providing the draft, initiating the draft. Because Lucas, if you give him the early game snowball, he's gonna be just massacring out every single one which stands in his way. And we can't forget the interruption coming in from his flash step flash combo. It is going to be quite a menace for the side of Team Armageddon Esports to go up against that thing. And not to forget, you have Hylos and his glorious pathway to charge on top of you. Same with Gatotkata, he's just gonna jump on top of you. So three of the most, I would say, solid CC heroes getting paired up. And if we look, the color scheme it's all golden. So we can consider them the golden knight, while Team Armageddon Esports they're going for something sort of a silver composition. But jokes aside, great choice banning out that alpha because Head has been already picked out. So there is absolutely no question of that carry picking out. So you just ban out the remaining of the counters, and that would be the alpha on the jungle side. Bans, looking at the bans, very good. Looks like they did close up quite a few heroes for the side of team. Armageddon Esports looks very well, but Charlie Brown, what is he going to pick this time? And that's a you coming in. That's quite confident, right in front of a Lucas. Now, same Mm. case for Lucas as well. If he has a bad start, that's going to be a problem. If he has a good start, he knows he can reach the back lines. The regrets coming in with a Selena, possibly a Oh. Selena. If she picks it up,
the damage, I feel like it's not going to be there quite well right Consider during the late play. game. Shed the Yes, ashes of yes, the definitely. past. So Selena, she is quite useless without her abyssal arrow, right? And she is quite Yes. of a one target hero. So, as in my opinion, I don't think it plays out in the favor of the composition of team Spirit Ops. They can go for maybe a Vixana to top it all off, maybe a Eve to zone out. Would have been great, but it is quite their choice. And if Regrets has no regrets picking out that Selena, then it's just his choice. But if we compare both the teams draft, one is quite chunky, one is quite around, one is quite mobile. So it's gonna be brute strength versus nimbleness. So Peachy, True. well, what are your thoughts on both the bands? Which team are you leaning towards to? Now that Armageddon Esports, they still have to lock it in, and oh my god, they go ahead with a jawhead. Now coming back to your question, I feel like Team Armageddon Esports do have the damage, though they don't have the early game potential, but right from the mid game to the late game, they still have the chance to pick it up. But one problem is that the tanky heroes, the Hylos Gutter Clutcher combo, a little bit, outdated combo, given the fact that the meta is changing very quickly. It's kind of leaned towards more of a support plus a Loi. Loi has been a very good pick. Yeah, definitely. The Wai would be the cherry on top for the side of team, Spirit Ops, because I think she plays out quite well. Might be the universal combo at this point. High loss, Yes. method catcher, and Louis with the diversion. Can't forget Lucas as well. So it would have been quite too OP. So I guess Spirit Ops, they just decide to nerf it Welcome themselves to by picking Mobile up that Legends! Selena. But yes, Agreed. 5 well, seconds till ladies the and enemy gentlemen, reaches the welcome to the battlefield. land of Smash dawn. them! This is the fourth All and troops final match deployed! happening between Team Armageddon Esports and Team Spirit Ops right now. Best of three, first match of the day, and already, if we see both the teams, they are just gonna be continuing with their normal routines. Yes, sir. A little bit of a mid lane pressure will be there. I wanted to see a Barang game. Maybe next game we might be able to look at that now that it was banned this game. But the jungling speed, Lucas is quite fast enough. Definitely. Lucas is definitely faster than Suyo right now. And oh my goodness, Abyssal Arrow hitting onto the creep, but there won't be any engages, I hope, because both the teams, they are not quite ready for a team fight. But look at that, the positioning from both the EXP laners rotating all the way from the top lane towards the mid lane, trying to go for an engage. Abyssal Arrow does hit. Selena might be Oh, getting the first blood in her hands, and that is JJ triple four and getting taken down in the hands of Selena right here. As we all know, Selena, she shines in the early game. But the question is, will she be able to keep that up until the late phases of the game? and that's true. And one more problem with the Jawhead is once he loses the early game momentum like this, dying continuously, it's going to Oh, be a problem. Another Abyssal Arrow onto him, but he's looking for a pull. And oh my god, the throw right on point. Missiles on him. Top lane, look at that. Suyu is already there. Lucas is already there. Is it going to be a retribution? No, it looks like he doesn't want to contest for that. nope, definitely saving the big one. Definitely saving for that big one. The turtle Yes. would be spawning in soon. But look at that. Selena is relentless with her Abyssal Arrow. She's just throwing it everywhere. Any moment that she can find. And already Armageddon Esports starting up that turtle. Abyssal Arrow will be missing out. And look at the team fight. AOG connecting onto no one. But Imcom secures the turtle, taking out Charlie Brown as well. He wins the retreat, he wins the team fight, he still goes for more. And Phobius as well with his Infernal Pursuit going against four people. Flickers out, but he goes back in. Ron Boy, I would say clutch coming in his hands. And 3-0 trade coming in from the side of Team Spirit Ops. I'm just so like that throw coming in from Jawhead.
He's always targeting the healers, and that's always onto the mid lane. I'm so surprised to see it's happening very continuously, but definitely good throws coming in from uh, the- uh, JJ this time. But let's see if they're able to get the momentum on. As of now, team Spirited Ops with the early game advantage onto the Sims. They look at that, 3 kills already gathered. They are on a gold onto their hand as well. Yep, definitely. And Armageddon Esports, they are positioning out around that bush, maybe trying to go for a T fight. But oh my goodness, one ult from Beatrice does get baited out to take that gold crab. I would say quite a big resource wasted out for a small thing, but you know, she got 4 weapons and one out of 4 won't hurt. So yes, the teams after the first blood massacre, they are gonna be playing it out quite It's quite low. safe. Yep. It's a little bit slow coming in from the side of Team Armageddon Esports, but at the same time, Bronze Boy, look at him. He wants to take a fight. He's getting taunted on left and right, but as of now, no engages coming in. Cry, what is it going to be? Is he going to spot it out? Is he going to stand Oh, a stand? But Ito with his arm on force, trying to push it in and pull it out. There's a lot of, infernal pursuit right onto the back lane. Beatrix looking quite low. That has to go back, but at the same time, push and pull and oh throws my coming in from the goodness. Beatrix. Bronze Boy will be getting Karai. They are trying to go in for more, but Toyota with the AOG, the copy AOG, and it doesn't connect there. Yes, definitely. So Red a team lot hero of has been skills getting used slain. up in a chain manner, and regrets. He does not have any mobility right now, but oh my goodness, the Blue dash team coming in hero from has been regrets slain. was about to get away, but no, Ryota said no, not today, some other day. We will be taking you down. But yes, if we look, Team Armageddon Esports, they are fighting it out back, but still Phobius tries to go for an infernal pursuit, still goes for it, and Lucas popping out his beast form as well. Glorious pathway will be used to slow them down, but the HP of Team Spirit Ops is quite low. Oh, ALG onto the back line, but Charlie Brown will be securing the Blue third of team them. And of hero course, Sister has with the been Chrono Dash, and slain. of course, Synchro Fission and Reaper will be getting taken out in the hands of Ito. Now, Team Spirit Ops, they had the early lead, but they kind of lost they kind of lost the early lead to Armageddon Esports, and they kind of figured out that sticking together is the key for them to win. It looks like Team Armageddon Esports have gotten their momentum back. Now Silver Cloud onto the bottom lane. He's not looking in a very good position, but Charlie Brown has no resources to jump in and take away. As you know, the turret will be there. Now look at that. Armageddon Esports all moving around very closely as they want to get as much as trade into their hands. Bronze Boy joining up the team fights. That's a big W for them. But onto the side of Team Spirit Ops, they need to group up. They need to make sure that the Beatrix is protected. Though she doesn't have skills, but she's hitting off guard. Like, look at her. Yes. That's probably the third time or the second time you're seeing she has recall. That's not a way a Beatrix should be played because she is losing out a lot of lanes. Oh Charlie my Brown goodness. into the back lanes. He gets the flank on. He's looking quite low, and the Abyssal Arrow does hit him right on spot. Is it going to be a one more? Because no, the Glorious Pathway slowing them down. JJ Oh got my into the goodness. crossfire. They are still trying to deal so much damage, and Red team unfortunately, hero JJ has to has go been back onto slain. the base without recalling, and that's a lot of damage from the Beatrix. Yep, that is one way to go back to your base, just offer yourself towards your enemies. But still, Yes. while we are talking about that team Armageddon Esports, they are putting quite a lot of pressure onto the side of Team Spirit Ops. Even though they have the score lead, Team Armageddon Esports, they have the goal lead. The goal lead, they are quite equally matched out. And it kind of proves that patience is key right now, because early game they were kind of losing. The score was a 3-0, but they managed to get back. But once again, Bronze Boy will be flickering out from that onslaught. Ryota does land the IMU on to Lucas, securing the ult for himself. Now, once again, Charlie Brown around the turtle. This time, Team SOP, they are in the mood of Blue team contesting. has And look claimed the at that, turret. these swap popped out, and
seeing a deja vu again because the turtle staying with Charlie Brown will be getting taken out, staying with JJ as well. He will be forced to get back. Imcom just trying to dish out more and more damage. That is a double kill in his hands, and Cry will be landing his kill onto Ryota. Now that is a full team wipeout coming in from the side of Team SOP, and a free turtle for their side. Plus one mid lane turret. That is a lot of damage. That is definitely a lot of damage going in from the side of Team SOP. One team fight and they win out so much grades. They won out 5 members. They got 2 turrets. That is, and plus a turtle. Oh my god, that's the quickest trace I've been looking at. But a middle arrow does not connect there onto the mid lane. Now that the teams are just moving in quite fastly, look at them. The momentum that Team Amigodan Esports has been stolen very brutally this time. Yes, definitely. You know, the momentum, as you said, getting stolen out. I would say both the teams, the map control is in the hands back to SOP, and they are using it to their full potential because the first tier 1 turrets has been taken out from both the lanes, and Team Armageddon Esports, they are being quite patient around, not taking any unnecessary team fight. But look at that flicker ejector comes in from Jawhead, and the full barrage as well from the Beatrice. Benny's Rage, actually, the Glorious Pathway will be used on Zaman Force as well. Phobius onto the backline with the Infernal Pursuit. That is a double kill in his hands, and a monster kill for Imcom right there. 3-for-1 trade, and that is one more kill. So 3-for-2 trade and secured by Imcom. 702 KDA right now in his hands, while his teams, while he is the one carrying his team out. Beatrice, on the other hand, she is quite struggling to position herself in between all of the onslaughts. Agreed. This is what I was talking about. Team Spirit Ops are not playing around the Beatrix. The Beatrix is a little bit behind on the farm, but the team is winning. So that is also, in a way, it's a win for them. But now, Team Armageddon Esports, what is it going to be? Because they have to make sure that they are protecting the, Bronze Boy as well, plus Charlie Brown, because Charlie Brown wasn't able to get the snowball onto their hands, plus JJ getting out caught in every single team fights. Now I feel like they should play the wait game. They should let Team Spirit Ops to make the mistakes, but Spirit Ops, they're not letting the cracks to be wide open as of now. Yes, definitely. But Jawhead, he doesn't want to stop. He tries to go for silver on that Beatrice, but he will be the one getting taken down. Now that gives the chance of Team Spirit Ops to start that Lord fight, the opening that they needed for them to initiate that Lord. So with the roamer gone for the side of Team Armageddon Esports, they will be taking that free Lord in their hands. And Armageddon Esports, they know that they can't contest, so they are going to be backing down and just going to be focusing on clearing the lanes, defending their lanes out. Yes, sir. Let's see what is it going to be. Charlie Brown does get a kill right here. That will be the regrets falling down. But Charlie Brown looking quite low. What is it going to be? Yep, he falls down. That's a lot of taunt onto him. Now that, I feel like the Revitalize is really helping them to survive. Can we look at the items? Because where is the anti-heal? Yes, definitely. We would want to take a look at the items so far. And yes, we do see the anti-heal coming in, but it is only one, so they still need 2 or 3 more. I mean, you can't underestimate the Revitalize, you can't underestimate the amount of heal and the lifesteal one team can get. They have the Gatotkacha, they have the Hylos, they have the Lucas, so at least 3 of the members should have the anti-heal, but it's only the Valentina. But once again, a team fight does break out. Double Glorious Pathway and the Ejector coming in from Jawhead as well. Bronze Boy is the first one to fall down in the hands of Team SOP, and the rest of Team Armageddon Esports, they are forced to get back in their base again. It's not looking good. That's not definitely looking good. 1-for-1 trade, but Team Armageddon Esports are definitely catching up now. Charlie Brown, who has to go back, but unfortunately, the turret will be going down. The buffs are being contested now. This means there is a push and pull
for the momentum as well. And the Bizarro connecting onto him. Charlie Brown will be evading that. No, 1 minute for the Lord. That's definitely a lot of time for Team Armageddon Esports to farm up. But at the same time, we are looking at the goal lead into the hands of Team S-Pop. Yes, definitely Team Spirit Ops having the gold lead in their hands, and certainly the map control as well. But Armageddon Esports, I think they are cooking up something, because if we look at the positioning right now, I think they are preparing to have a fight around the Lord, because it is going to be spawning in 30 seconds, and yes, might be trying to get someone who comes in between the bushes off guard. But Selena, she knows what she's doing. She's gonna be throwing her traps away so that she gets the vision that her team needs. And Johet may be planning to land a kill onto Lucas, but he's quite alone there. Might be getting surrounded by 5 of the members actually. Look at them. The concealer is coming in from JJ, but at the same time, Ito, he needs to position himself a Oh my little bit of better, because regrets. He's just not stopping with this Yes. vision. He's not stopping with the abyssal arrows. Now, this is a level 2 lord. Level 2 lord is very much important for both the teams, because if team SOP gets it into their hands, they can push it towards the crystal itself and maybe take down every single inhibitor which is standing right now. But if Team Armageddon Esports gets it, they will be getting a lot of trades. But okay, looks like Garut Tata, he's still scouting it out, but cry. Oh my goodness, AOG won't be connecting onto anyone. The glorious pathway will be used up as well. Benny's rage onto Ito, but he will be getting away. And look at that infernal person coming in from Bronze Boy, but he will be getting taken out in the hands of Silver Cloud right there. One more person to go, and that will be JJ in the hands of Imcom, a legendary in his hands. 2 people down for the side of Team Armageddon Esports right now, and this gives Team SOP the opening for them to start the Lord. And look at the amount of damage that Team SOP are dishing out. Like the Lord, it just got ended in 5 seconds. And if the Lord can survive, how are you supposed to survive that onslaught? You have to have the right itemization, and that we are not seeing from the side of True. Armageddon Esports. Armageddon Esports really needs a anti-heal. Anything in the Exactly. form of sea help, but Dominus Ice, or anything, because especially into the hands of Jawhead, because he's the one tanking so much, and yet he's the one getting caught out very quickly. But now that the Lord is marching down from the bot line, what is it going to be? I'm curious to see if Team Armageddon Esports will be giving us a very good defend, or is it going to be Team SOP to end this game? Yes, SOP might be looking for a chance to end this game, because the Lord is coming in from the bottom lane. Oh my goodness, ERG onto the back line. Same with the Hylos and his glorious pathway as well. Infernal Pursuit from Phobias yet again, but Charlie Brown will be the first one to get taken down. Double kill in the hands of Beatrice. That will be Bronze Boy getting taken out. Triple kill actually. Silver Cloud landing it. Will it be a Maniac? No, Incom decides you won't be getting that Maniac or that Savage, because I will be getting that double kill. And with that first match in the hands of Team Spirit Ops with their phenomenal draft and their team initiation, and of course the team coordination as well. Agreed. The Selena did work out very well for them, and in turn, Cloud also farmed up. Wasn't expecting him to farm up this quickly Yes. towards the late game, but he had it. Yes, definitely. So, we did see Beatrice getting neglected a bit, but she was quick to recover, right? And Selena as well, even if she got that silver, she was the one providing the vision around the map with her abyssal arrows and her abyssal traps as well. So it worked out really, really well in the hands of Team SOP. And maybe in the next match, Team Armageddon Esports, they might just ban out the whole lineup of Team SOP right now, because they left quite the chunky heroes open, and you would not want to underestimate the chunky heroes. I mean, there is a reason why they are getting banned out, right? True, true. And what a game coming in. This was just the first match, guys. Let's see if SOP gets it away in a clean sweep, or Armageddon Esports with a challenge for them. We'll be going on a short break, and we'll be right back.
wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I feel. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I gotta shine in the Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I'm inching, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back. We are back again with another match, and with me, I think I have Jay. Hello, Jay. Are you there? Yes, Pichi ma'am, I'm here, and What's your command? it looks like they have already banned that Fanny right away, and I think there should be, we'll be looking for Lucas and other bans as well, because we have seen that the way they have dominated the game, the last match SOP, it was very, like entertaining, and that really did like their gameplay as well. That's true. The games were going very quickly into the hands of Team SOP, and with that, again, they are just removing all the annoying heroes with their hands. Now, I feel like there should be a ban for a high loss or the cutout catcher. Yes, that's true. Because if you like, open the Gato and the Hylos as well, they have very, like the dangerous kind of hero. And I think they are prioritizing Joy here, Peachy ma'am. And I think we'll be seeing our, like Zushin and like the other hero, like, Zushin. Zushin is very dangerous and broken hero right now. Zushin, we can see the Zushin ban. And Hylos, as well, Hylos also, because he is the initiator. So Hylos is very dangerous to, like mid to early to mid game. He is very dangerous. He can initiate, he can, like back up his team, and in that way also he can retreat right away using Glorious Path. So I think they should ban Hylos at least. That's right about it, because there is much needed. But as of now, SOP onto the red side, they have banned up the Lucas. Now that they have given away the card of playing a zoo, Lucas right there. So yep, as expected. Now I feel like Team Armageddon Esports, they should really bring out the big guns. Yeah, yeah, you are absolutely right. Because at last match I was watching the match, and I've seen that there was Harith, Ito picked Harith, and but I did not see that the Harith proper gameplay, because if you get proper forming in gold lane, Harith can easily dominate the game mid to late game. So I am thinking about if this time he to pick Harith and he can dominate the game like he always used to. I've watched his game, lots of gameplay, and I've seen like yeah, he is a very good Harith player. He can easily dominate mid to late game. And as I said, Pechi ma'am, here you can see that they have banned the Zushin. Now right now there is a last ban remain. And what do you think? Which will be their banning here? Hmm, I would really love to see the draft which both the sides will be having. But SOP, they do have the upper hand on the draft. Last game, it was the same case, because they did win out with one good draft. But this game, let's see what is it going to be. I think they will try this time. I will be able to see something different, because if they like Armageddon lose this match, I think this is the best of three. So if they lose this match, they will be like I think this is also quarter finale right now. So they will be out of the game. So they will try their best, and maybe we'll be able to see something different, something like Armageddon will win this game and will go through like BO-3, the third finale match. And like Pichimam, you have said they have picked Gato as first pick now.
that SOP has like two meta hero picks. They can pick two meta hero like Harith available, Hylos available is there, and there is a Suyu. I think Suyu they can pick also Suyu because Suyu gets like a snowballing at form to early to mid game. He can get a snowballing. It will be very good like pick for right now Suyu because Suyu is the very like good hero in meta. The immortal That's one true, but shows this me time to around, vanquish Team the Armageddon shadows Esports that are going trying to ahead with the destroy me. Kachot Kacha onto the EXP lane. So that's a very good pick, but they need little more than the taunt as well as the AOG right now because I am Suyu the needs only to be one stopped that going in Your from must the team is flank. change. missing. If this Suyu is really aggressive, it's going to be quite a problem. As we are talking about it, we are into the quarterfinals. This is going to be the second match between Team as Spirited Ops versus Team Armageddon Esports. Let's see what is it going to be. You know, half the draft is already over. Looks like Phobius is all thrown away onto the other side. Now Phobius is a really annoying hero. Yeah, I absolutely agree. You know, it's like a dash counter hero phobias, and there are another heroes like Kufra. They can easily counter the dash heroes. So yeah, it is literally. And here we can see the Granger. And if they pick the Granger, Ethel is open. What do you think? They are SOP will pick Irithel or Harith because Irithel can really dominate. You know, Granger easily. That's true. Now Granger can, Your team you is know, picking. give a very good competition to any heroes onto the, be it Harith as well. Harith, before he gets onto the level 4, it is a problem for him to deal with it. But as of now, Team Armageddon Esports are playing on a Sicilian. A little bit insurance from the mid game to the late game. Wasn't expecting this pick because, there's a Suyu. You need a little more mobility. Yeah, you're absolutely right about that. But right now, we will be able to see the last peak of SOP, and I'm thinking about they should go for Harith or Ethel. That will be good Content. counter for like Your Ranger. team And is it is, dead. as you can see, they have picked Harith. So if they can play Harith very well, so Harith can easily dominate the mid to late game after he gets his items. So it is very interesting. This match will be very interesting. And there right now there are two bans remaining from both of side, and you can see that they have banned Zohead. So the other remaining three bans are remaining right now. So what do you think about this right now, PGM? Because you have seen their first match, and I'm just doing that second match. So they have banned lots of heroes in the last match, right? So what do you think they will be banning right now? हम जैसे थोड़े बहुत देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट बैन्स हो रहा है फर्स्ट गेम पे पता है जॉ हेड हमें देखने मिला और जॉ हेड तो था तो बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे एंड अग्रेसिवली खेलने की वजह से थोड़ा बहुत उन्हें प्रॉब्लम भी आया कि अपना जो सेट है दे नहीं पाए बट एट द सेम टाइम हम एक बैन जो देखने वाले हैं ऑन द साइड ऑफ टीम एसओपी दैट माइट बी असैसिन Your असैसिन team is देखने में dead. क्योंकि हांजो अगर बैन किया तो बहुत अच्छा है क्योंकि चार्ली ब्राउन बहुत अच्छे हांजो प्लेयर है जी बिल्कुल और इसी के साथ यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बैन है आप पीछे में जो आप बोल रहे थे कि यहाँ पे हाइलोस या गाटा को ऑब्वियसली बैन करना चाहिए तो लग रहा है कि यहाँ पे अर्मागडन जो है आपका बात जो यहाँ पे सुन लिया गया है यहाँ पे हाइलोस को जो बैन लिस्ट में डाल दिया गया है तो यहाँ पे हमें शायद ग्लोरियस पाथ जो हाइलोस का इस मैच में तो देखने को मिलेगा नहीं इसी के साथ जो लास्ट बैन बचा हुआ है एसओपी की तरफ से तो एसओपी की तरफ से जो बैन होगा यहाँ पे तो बहुत सारे हीरोस ऐसे ओपन है जो अभी भी वो लोग बैन लिस्ट में डाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप ले सकते हैं जैसे सेलिना जो अच्छा खासा सेलिना का गेम प्ले देखने को मिला भले उनको सिल्वर मिला था लेकिन सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं उनका जो स्टर्न है या वो जो विजन प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे वो बहुत ही बेहतरीन था Your सपोर्ट की तरफ team से is banning. डेफिनेटली बट देखते हैं आगे क्या होगा जैसे मैंने बोला था कि असैसिन ही बैन होगा एसओपी की तरफ से असैसिन Your बैन हो team चुका is है picking. एंड उसके साथ हमें लोई का भी दिख रहा है बैन काफी अच्छी बैन है क्योंकि अचानक से वो बहुत पॉपुलर हो चुकी है अचानक से लोग ज्यादा खेलने लग गए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो जो ट्रेंड था हमारे एमपीएल से Your हमें देखने opponent मिल is रहा है picking. जी बिल्कुल इसी के साथ जो यहाँ पे ग्रेंजर और पार्शा जो है दोनों को अलग कर दिया गया है बेसिकली हम लोग को जो है यहाँ पे पार्शा और ग्रेंजर का जो ओल्ड कॉम्बो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है जहाँ पे यहाँ पे फेदर एयर स्ट्राइक यूज होता है साथ में डेथ सोनाटा का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा डैमेज जो एनिमी को देने में प्रोवाइड करते हैं लेकिन यहाँ पे अलग कर दिया गया दोनों को इसके साथ जैसे आप बोल रहे थे यहाँ पे हैंजो को जो है पीछे में पिक कर लिया गया तो बहुत ही अच्छा कहना पड़ेगा यहाँ पे बैकलाइन हीरो जो डैमेज देने को पार्शा को थोड़ा सा मुसीबत में डाल सकते हैं यहाँ पे हैंजो हैरिस जो है उनका क्रोनोडेस और जामान फोर्स का यूज करके शायद एस्केप करने में सक्षम हो जाएंगे लेकिन पार्शा जो थोड़ा सा ज्यादा स्क्विश होने की वजह से उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हमें देखने को मिल सकता है
डेफिनेटली यहाँ पर जो एसओपी है वो लोग ना थोड़ा सा गोल लेनर को ना थोड़ा ध्यान नहीं देते। एंड अगर वो लोग स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली ये गेम उनके हाथ पे जाएगा। बट यहाँ पर देखिए क्या ही पिक्स देखने मिल रहे हैं टीम आर्मेगेडोन ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। चार्ली ब्राउन की जो सिग्नेचर पिक है हांजो आ चुकी है, तो मतलब लैंड ऑफ डॉन में तो तबाही होने वाली है। सो देखते हैं क्या करते हैं ये हांजो को रोकने के लिए। बट साथ में हमें ग्लू भी दिख रहा है, तो मतलब फारसा को तो बहुत ही दिक्कत देगी। जी बिल्कुल, इसका पीछे मुझे यहाँ पे लग रहा है ग्लू जो है शायद वो एक्सप्लेन पे जा सकते हैं और गाटो जो है वो रोम पे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बेसिकली जब भी जितना टूर्नामेंट पे मैंने मैचेस देखे उस पे ग्लू को ना मैंने मतलब 99% हम ग्लू जो जाए वो जाता है आपके एक्सप्लेन की तरफ से, वो सस्टेन भी अच्छा खासा कर सकता है। तो यहाँ पे और खालिद जो पीक हुआ है वो भी बहुत अच्छा पीक कहना चाहूंगा पीछे। खालिद जो है अर्ली के पे बहुत ज्यादा जो डैमेज देते हैं, प्लस उनका जो हीलिंग फैक्टर की वजह से उनको बेस की तरफ वापस जो है जाना नहीं पड़ता। तो एक खालिद बहुत अच्छा एग्रेसिव यहाँ पे गेम प्ले हमें देखने को मिल सकता है खालिद और सुई का कॉम्बो पे। डेफिनेटली एंड जैसे आपने बोला था कि ग्लू को हमें ईएक्सपी में देखने मिलेगा, वही हो रहा है। जे जो है आर्मेगेडोन ई-स्पोर्ट्स से वो है सबसे मार्क, उनका जो रोमर है वही है, तो गटोकाचा रोम पे है। एंड ये टाइम उन्होंने रिवाइटलाइज लिया, मतलब लास्ट गेम पता है थोड़ा सा माइक्रो में दिक्कत आ रही थी टीम आर्मेगेडोन ई-स्पोर्ट्स से। बट ये मैच देखते हैं क्या होगा, क्या ये आखिरी मैच है या क्या ये दूसरा मैच होगा, वो एसओपी के ऊपर है। जी बिल्कुल, इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि ये मैच अगर आर्मागेडन जीतते हैं तो हमें जो फाइनल जो क्वार्टर फाइनल के लास्ट मैच होगा जो वो देखने को मिलेगा, तो काफी जो है एक रोमांचक मैच हो सकता है अगर यहाँ पे आर्मागेडन को जो है यहाँ पे जीत कम जो जीत हासिल होता है। इसी के साथ हम लोग कुछ ही देर में जाने वाले लैंड ऑफ डॉन में, जहाँ पे सब हीरो जाएंगे अपनी खेती बाड़ी करने। और पीछे में हम कुछ आप बताना चाहेंगे कि इस मैच में जो है किस टीम का थोड़ा सा आपको अर्ली गेम में जो है थोड़ा सा फर्स्ट ब्लड मिलने की चांसेस ज्यादा है? फर्स्ट ब्लड की बात करें तो डेफिनेटली टीम आर्मेगेडोन ई-स्पोर्ट्स के पास तो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जो मोबिलिटी बात कर रहे हैं हम हांजो की, जो अल्टीमेट है वो थोड़ा अगर वो रोटेशन जल्दी जल्दी करे, जैसे लाइक मिड लेन पे थोड़ा बहुत अगर ससीलियन पकड़ लेते हैं अपने सैंगविन क्रॉस पे तो थोड़ा बहुत पॉसिबल है। देखते हैं क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्विशी हीरोज है सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। और हम बढ़ते हैं लैंड ऑफ डॉन की तरह। जी बिल्कुल, यहाँ पे लैंड ऑफ डॉन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे सब अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे जो अपना सिसिलियन चमकादड़ वाला भैया है जल्दी से लेन क्लियर करके जाएंगे, और जो दूसरी तरफ जो है जहाँ पे रेड बाफ की तरफ कोशिश करेंगे एसओपी की जो है जो मास्टर है उनको ले लिया ताकि फार्मिंग ज्यादा मिले, लेकिन खालिद जो है उनको मौका देंगे नहीं। यहाँ पे जो है पोक कर रहे हैं, तो अच्छा खासा छोटा मोटा जो है फाइट का जो संकेत है आगाज है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में कहना चाहूंगा अगर सुयू जो है सुई को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सुई को पास थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है जो यहाँ पे फर्स्ट पे लेने का। अगर उनको स्नोबॉलिंग का मौका मिलता है, प्रॉपर जो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, तो सुई के पास एडवांटेज एक मिलेगा कि अर्ली गेम पे जो है उनको फर्स्ट जो पहला खून है उनको ये पहला खून चकने की मौका मिलेगा। इसके बाद देख सकते हैं ग्रेंजर को जो है थोड़ा बहुत डोमिनेट किया जा रहा है बॉट लेन पे हर्ली के द्वारा। हाले जो क्रोनो डैश यूज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रहा है हमें ग्रेंजर की तरफ। उनका जो हेल्थ है थोड़ा सा पीछे गए तो उन्होंने रिविलाइज यूज किया है, तो हेल्थ तो थोड़ा सा प्रदान मिला है उनको। लेकिन जैसे कहता हूँ कि हारित जो है बहुत अच्छा खासा गोल्ड लेनर जो अभी एमएम से ज्यादा एमएम पिक से ज्यादा है, जो हारित को यहाँ पे पिक किया था गोल्डन पे, इतना अच्छा खासा एक हीरो बन चुके हैं गोल्डन के लिए। यप, देखते हैं क्या होगा। यू नो डैमेज तो डेफिनेटली अब बहुत आ रही है दोनों की तरफ से, बट फर्स्ट ब्लड तो अभी तक देखने नहीं मिला। टर्टल भी आने वाली है कुछ 15 सेकंड के अंदर, कुछ अंदर ही। बट देखते हैं क्या होगा। टीम फाइट के नाम पे बोलो तो टीम आर्मेगेडोन ई-स्पोर्ट्स के पास बहुत है, बट हांसो को थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। जी बिल्कुल, हांजो को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिला तो उनका जो बॉडी जो है आत्मा बाहर निकलते है, उस आत्मा निकालने के बाद जो उनका अगर डैमेज ज्यादा मिलता है, उनको डेथ होता है आत्मा निकालने के बाद, तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा मोबिलिटी होता नहीं, उनको जो है बहुत दिक्कत होती है। तो जो हमें फाइट देखने को मिल रहा है सुई पे जो है एक हमला बोल दिया गया, खेली रहा है यहाँ पे जो अपना फर्स्ट स्किल का यूज कर रहा है। हांजो जो यहाँ पे अपना अल्टीमेट का भी यूज कर चुका है। यहाँ पे पीछे की तरफ जाएंगे सिसिलियन, यहाँ पे अब देखिए फाइट में पाशा जो पंची बढ़ के उड़ता फिर की तरफ पीछे की तरफ चले गए। ग्लू ने जो यहाँ पे पकड़ लिया है, तो अच्छा खासा फाइट जो शुरुआत हो चुका है। फर्स्ट ब्लड जो हमें शायद देखने को मिले, लेकिन थोड़ी 0 एचपी पे बच के जो है खाली यहाँ पे जाएंगे। ग्लू को बीच में फंसा दिया गया, ग्लू कोशिश करे ताकि एक फर्स्ट ब्लड उनकी तरफ से मिले। इसी के साथ ग्लू को जो फर्स्ट ब्लड मिल चुका है। यहाँ पे अच्छा खासा जमा था फोबियस ने जो यहाँ पे बदला लिया, फिर सिसिलियन जो फोबियस को मारते हुए लाशों में जो ढेर हमें देखने को मिल रहा है। रेंजर ने जो फाइनली खरीद को मार चुके हैं। यहाँ पे हैरित को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर पीछे की तरफ जाएंगे। उनका एचपी काफी जो है लो, इसके बिना कोई दिक्कत के साथ जो यहाँ पे
हमें आर्मागोडन की तरफ से जो यहाँ पे अच्छा टर्टल जो यहाँ पे ले लिया जाएगा, कोई जो यहाँ पे मुकाबला होने की चांसेस बचा ही नहीं है। डेफिनेटली बहुत तो डैमेज तो हमें देखने मिल रही है एंड उसके साथ से जो अमेरिकन स्पोर्ट्स है उनके हाथ पे जो मोमेंटम है डेफिनेटली काफी अच्छी जा रही है। एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि सुयू को थोड़ा बहुत फार्म चाहिए, थोड़ा बहुत स्नोबॉल चाहिए होता है, वो अभी देखने नहीं मिल रहा है। बट एक अच्छी बात है कि लाइक ही सेव्ड हिमसेल्फ कि उसे फर्स्ट वो अपना जान नहीं गवाए। बट अपना हांसो को देखिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो फाइट हो रहा है जिस तरीके से पोक कर रहे हैं ग्रेंजर को तरफ से टारगेट करते हैं, मैं जो बोल रहा था पीछे में देखिए फर्स्ट हो जाएगा, हांसो का किल ले चुके हैं। हांसो का जब जो आत्मा निकलता है तो दिक्कत हो जाता है, गाटो का का प्रयोग होगा जो बिल्कुल मिस करेंगे। यहाँ पे सिसिलियन जो है फाइनल सुई को जो है मौत का जो सामना करना पड़ा, सुई को जाएंगे बेस की तरफ वापस। यहाँ पे खलीद का जो जान जो है ग्रेंजर को अगर फार्म मिलता है पीछे में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। ग्रेंजर फार्म होने के बाद इथेल हैरिस सबको जो यहाँ पे टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उनका फास्ट के लिए जो डैमेज आएगा बहुत ज्यादा आने वाला है। फोबियस को घेर लिया गया, फोबियस यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो है थोड़ा बहुत प्रयास करके पीछे की तरफ जाए, लेकिन ब्लू जो है चिपक गया भाई। ब्लू बोल रहे हैं आप कहीं जाने नहीं देंगे, डैमेज किए जा पड़े जा रहा है। यहाँ पे फोबियस को जो यहाँ पे बहुत का सामना करना पड़ेगा। इसका ग्रेंजर जो उनको मिला है किलिंग स्प्री, हैरिस बूस्ट में छुप रहे हैं, उनको पता है कि अभी उनके ऊपर गैंग हो सकता है, तो भाई थोड़ा सेफ खेलना जरूरी है, भले टर्रेट क्यों ना चली जाए। भी डैमेज आ रही है दोनों के दोनों तरफ से। बट जो ट्रेड्स है वो तो अपने आमिगर और ईस्पोर्ट्स के हाथ में जा रहा है। देखिए कैसे रोटेट करते हैं ये। जेजे ने बहुत प्रोटेक्ट किया ईतो को एंड उसकी वजह से ईतो को 3 किल मिल चुके हैं। ग्रेंजर के ऊपर 3 किल मिलना वो भी इतने अर्ली गेम पे बहुत ही अच्छी गेम प्ले है। बट देखते क्या होगा। यहाँ पर मिड लेन पे तो है और टॉन्ट लगी। जी बिल्कुल, इसके जो खेली थे वो आए थे कुछ करने के, लेकिन ग्रेंजर का डैमेज आउटपुट बहुत ही ज्यादा आने की वजह से उनको पीछे की तरफ वापस जाना पड़ेगा। फारशा पे जो वार किया जा रहा है, डेथ होना गाइस हुआ है। फारशा भी जो है यहाँ पे चिड़िया बन के पीछे की तरफ जाएंगे, वरना उनको पता है मौत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फोबियस आया जरूर थे, लेकिन उनको भी सबके जो है पीछे धकेला जा रहा है। अच्छा खासा आर्मागोडन का जो कम में हमें देखने को मिला। टर्टल जो दोबारा जो है आर्मागोडन की तरफ से ले लिया जाएगा। हैरिस जो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे देख रहे कि कोई फाइट नहीं हो रहा, बॉट लाइन पे कोई नहीं है, तो टर्रेट पुश करो, जो बहुत ही अच्छा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अपना जो माइक्रो गेम प्ले बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है। इसके टॉप लाइन पे भी जो ग्रेंजर जो उन्होंने अपना बॉट लाइन जो पुश किया है। सिक्सलियन भैया जो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में संकट में देखने को मिले हमें, और इसका गैटो जो है उनको तो थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फोबियस की जो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। गैटो का है प्रयोग होगा, फोबियस को यहाँ पे जाना पड़ेगा। मौत की दार डबल किल मिला ग्रेंजर को, खरीद को भी बेस की तरफ वापस भेज दिया। सुयू जो यहाँ पे आए हुए हैं, सुयू कुछ कोशिश करेंगे तो वहां से थोड़ा सा फॉर्म मिल जाए। अभी फाइट लेंगे, इनको पता नहीं होगा फाइट लेंगे तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ग्रेंजर को पता है कोई ना कोई तो बूस्ट में वो अपना डेथ उसके बूस्ट चेक करे। बहुत ही अच्छा खासा जो गेम ग्रेंजर का जो गेम का अनुभव है बहुत जो यहाँ पे हमें देखने को मिला बहुत ही बढ़िया है। तो जो ऐसे ही नहीं बोला जाता कि इतना अच्छा खासा ग्रेंजर प्लेयर है, उनका अनुभव अच्छा खासा देखा जा रहा है। फर्स्ट का फायदा स्ट्राइक हुआ, उन्होंने मिनियन तो क्लियर किए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो संकट है वो जो है एसओपी की तरफ जो मंडराता हुआ दिख रहा है पीछे में। डेफिनेटली यहाँ पर जो हम जैसे देख रहे हैं कि बॉट लाइन में फोकस तो काफी ज्यादा है, टरेट भी होने चाहिए। और ब्रॉन्ज बॉय क्या स्प्लिट के साथ आगे बढ़ते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो फाइट हमें दिख रहा है एक के बाद एक मास्टर की ग्रेंजर को मिल गया। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि खलीद जो है वो उसको स्क्विश हीरो की तरह उनको मचल दिया जा रहा है ग्रेंजर की तरफ से। ईटो का क्या ही गेम प्ले, क्या ही डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पार्शा है हमारा ओपन चिमेंट के तो पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से इनिशिएट कर रहे हैं ब्लू। यहाँ पे फोबियस पुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्लू को पता है अगर अल्टीमेट का उसे उनको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किस तरह सुई कोशिश जरूर कर रहे हैं फार्मिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। देखिए हैंसो गए अंदर, सुई जो अपने इम्यूनिटी का यूज करेंगे, सेकंड स्किल का पीछे की तरफ जाएंगे, लेन क्लियर की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही जो घातक गेम प्ले जो हमारे की तरफ से हम उम्मीद करते हैं वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कम बैक करे तो ऐसा तो फीलिंग आ रहा है पीछे कि हमें यहाँ पे जो तीसरा मैच है वो भी देखने की मौका मिल सकता है, जिस तरीके से हमारे अभी जो कम बैक कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये जो मैच हमें 7 मिनट की है वो ऐसे नहीं लग रही है कि वो 7 मिनट की, क्योंकि इतनी काफी ज्यादा टैरेट्स ले चुके हैं। यहाँ पर फ्लिकर आ चुका है फोवियस की तरफ से। फोवियस को इतना जल्दी ही बेस नहीं जाना है बिना रिकॉल मारते हुए। बट जो टर्टल है ये देखिए हांजो जैसे ले रहे हैं, इजी टर्टल नो कंटेस्ट। बट सुयू की पोजिशन, सुयू को पता है कि वो टर्टल नहीं ले पाएंगे। जी बिल्कुल, उनको पता है अभी टाटा लेने जाएंगे, यहाँ पे फाइट होगा, गोल्ड का डिफरेंस काफी ज्यादा हो चुका है यहाँ पे जो है, तो इसी वजह से वो रिस्क लेंगे नहीं। वो क्या करेंगे धीरे धीरे जो लेंस क्लियर करेंगे वो घाट बना के बैठेंगे कि बॉट लाइन पे देखिए वो घाट बना के बैठा है, उसके अंदर उनको दिखेगा जैसे सब टॉप है मिड लाइन पे वो बॉट लाइन क्लियर करेंगे, बॉट लाइन टावर पुश करेंगे। वो जो मैक्रो ऑब्जेक्ट है, माइक्रो ऑब्जेक्ट वो बहुत ही अच्छा खासा है, सुई दीवार है, लेकिन
कहीं ना कहीं हाइट को अगर प्रॉपर फॉर्म नहीं मिलता है तो मिड टू लेट गेम जो डोमिनेट का चांसेस जो अभी, क्योंकि गेम जो है अभी मिड गेम तक जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आप देखिए नीटो का गेम प्ले देखिए, पीछे हम किस तरीके से जो बूस्ट चेक कर रहे हैं ताकि उन पे कोई हमला ना हो, बहुत ही बड़ी जगह तो फाइट देखने को मिला, पीछे की तरफ जाएंगे बस लेकिन खलीद को शायद यहाँ पे मिड टू द मिल सकता है, फ्लिकर का यूज हो गया है, खलीद बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सुई को भी फंसा लिया गया है। तो जिस तरीके से गेम प्ले डोमिनेशन देख रहे हैं हम, अगर ट्राइट के अंदर जाके बहुत ज्यादा गेटो को जो 5 का किल मिल गया है, हरित ने एक ट्राइट डिस्ट्रॉय किया, लेकिन ईटो को गॉड लाइक मिल चुका है। अभी अगले किल लेते तो उनको लेजेंडरी जो यहाँ पे मिल जाएगा, तो फार्मिंग की वजह से जो ईटो का डैमेज आने वाला है तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, कोई भी हीरो अगर अभी उनका Red सामने आए team's तो turret टिक has पाना। been destroyed. अभी जो है आर्मागेडन को थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सेफ खेले, क्योंकि लॉर्ड जो 40 सेकंड में आने वाले हैं, लॉर्ड आने तक अगर थोड़ा सेफ खेलेंगे, वो अगर किल नहीं देंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो चांसेस है आर्मागेडन के पास 80% चांसेस बन जाएगा इस गेम को जीतने के लिए, क्योंकि गोल्ड लीड की वजह से जो प्लस जो गेंजे को स्नो बॉलिंग मिला है इस गेम पे अर्ली टू मिड गेम तक, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है दिक्कत होने वाला है यहाँ पे एसओपी को। देखते क्या होगा, तभी तो लॉर्ड भी थोड़े समय में आने वाली है, और यहाँ पर जो एसओपी है वो कंटेस्ट नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कॉन्टेस्ट अभी हो ही नहीं सकता कि गोल्ड फार्म की डिफरेंस हो, जिस तरह से ये तो गेम प्ले दिखा रहे अपना इस बार। उन्होंने पिछला बार है जोड़ लिया था, उससे गेम प्ले दिखा नहीं पाए, लेकिन इस बार ग्रेंजल ने जो तबाही मचा रहा है डेथ सोना की वजह से, जो डेथ का बारिश हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले। लेकिन इस बार भी हमें देखने को मिला हरित को मौका प्रॉपर मिला नहीं है, इस बार हरित तो एसओपी ने उठाया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इसका शू जो है देखिए बॉटलिंग की तरफ मिनियंस क्लियर करे, उनको पता है लॉर्ड जो आएगा यहाँ पे जो हमारे घातक मिनियंस है वो आएंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए उन्होंने बॉटलिंग की तरफ थोड़ा सा पुश किया ताकि मिनियंस का दबाव जो है कहीं ना कहीं एक तरफ से तो कम रहे, ताकि जो बाकी 2 लाइन बचेंगे उनको क्लियर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पे शुरू में बोलना चाहूंगा अच्छा खासा यहाँ पे गेम जो है, भले ही तो वो अभी प्रेशर में, लेकिन अच्छा खासा उनका दिमाग में जो अभी चल रहा है बातें, न्यूट्रल को क्लियर करना, मिनियंस को क्लियर रखना ताकि पुश ज्यादा ना बन पाए, गेम थोड़ा सा लंबा खिंच पाए। क्या पता हैरिस जो है यहाँ पे अपना जमान फोर्स का यूज करते हुए सबको यहाँ से जो है जमाने से बाहर निकाल सके इस गेम की तरफ से, तो कोशिश जरूर करेंगे। लेन क्लियर की बात करें तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है टीम एसओपी की तरफ से, क्योंकि हम बात किए तो Red team's फारसा एक turret अच्छा has क्लियर been दे सकती है, destroyed. और उसके साथ सिल्वर क्लाउड भी एक अच्छा क्लियर दे सकती है, बट जो हम बात कर रहे हैं कि लेवल 1 लॉर्ड है, बहुत डैमेज देने वाली है। जैसे हम देख रहे हैं कि मिड लेन की पैसिव नहीं है, बॉट लेन की पैसिव नहीं है, यहाँ पे चार्ली ब्राउन अंदर जाते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोशिश तो अच्छा खासा कर रहे चले गए, लेकिन फोरबीएस तो टैंक होने की वजह से यहाँ पे जो Red उनको मौत team's की सामना turret करना has नहीं been पड़ेगा नहीं, destroyed. पता है एक्स्ट्रा क्या हुआ से यूज हुआ है, लेकिन खैलेज भी पीछे जाना पड़ेगा। देखिए किस Red तरीके से team डैमेज हो रहा है, inhibitor फोरबीएस has गए been अंदर लेकिन यहाँ पे मुश्किल का destroyed. सामना करना पड़ेगा। किलिंग स्प्री मिला यहाँ पे जो हमारे चमका भाई को, यहाँ पे एक और किल देखने को मिलेगा, हैंडो की तरफ से खैलेज को ले लिया गया। लॉर्ड भले कमजोर है लेकिन बेस को जिस तरह से जो उन्होंने टारगेट किया उसकी वजह से जो है मगर उनको मिल गया एक विन। यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है 1-1 का सिचुएशन चल रहा है, जो फाइनल मैच अभी होने वाला है पीछे बहुत ही शानदार मैच हमें देखने को मिलेगा। क्या पता या तो एमागाडन जो यहाँ पे इसी तरीके से गेम प्ले देकर 2-1 की तरफ से विक्ट्री ले जाए, या एसओपी वापस कम बैक करके एमागाडन को हरा के यहाँ पे 2-1 का विक्ट्री उनकी तरफ भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ गेम प्ले तो बहुत ही अच्छा था, इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि अभी जो फाइनल थर्ड मैच होने वाला है उसमें क्या होने वाला है पीछे मैम। डेफिनेटली देखने तो बहुत है, क्योंकि दोनों की दोनों टीम बहुत स्ट्रांग दिख रही है, एंड आर्मागेडन स्पोर्ट्स जी टाइम ग्रेंजर के साथ बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया इटो का मैंने गेम प्ले देखा है। वो जो ग्रेंजर लेते हैं ना पीछे में, लिटरली उनका जो सब कुछ चेंज होता है ना, दुनिया बदल गया, वक्त बदल गया, सब पलट गया, इस तरीके का होता है। तो अच्छा खासा गेम प्ले हमें देखने को मिला है, तो अब भी बस बेसब्री से इंतजार तो इस बात का है पीछे हम कि अभी जो मैच होने वाला है, अभी जो मुकाबला आखिरी मैच का जो अभी मुकाबला हुआ, इसमें कौन जो है फाइनली क्वार्टर फाइनल में जीत के सही फाइनल की तरफ आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आखिरी मैच आखिरी मुकाबला जो होने वाला है बहुत ही शानदार होगा। मैं उज्जैन मेरे साथ है पीछे में, हम लोग आते हैं कुछ देर में वापस।
इसी के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं क्वार्टर फाइनल जो है ओडीसी कप सीजन 1 का। और जो अमागडन स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे एक मैच जीत चुके हैं, सेम जो है स्पिरिट्स ऑप्स जिन्होंने एसओपी है जो इनका शॉर्ट फॉर्म है वो भी एक मैच जीत चुके हैं। ये फाइनल मैच यहाँ पे होने वाला है, जो मुकाबला है उसमें देखना पड़ेगा कि कौन जो है क्वार्टर फाइनल जीत के जाते सेमीफाइनल की तरफ। से मैं हूँ जय, मेरे साथ है मेरे को कास्ट है पीची मैम। हेलो जय, हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग ने अपने डिनर कर चुके हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। एंड इसके साथ हम फाइनल मैच ऑफ द डे बढ़ते हैं आगे, क्या होगा देखते हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ जो बैन होगा यहाँ पे हमें जो है फैनी बैन तो जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि फैनी जो यहाँ पे कहीं पे बख्शा जाता नहीं है। फैनी जो 99% टाइम जो है बैन देखने को मिलता है। इसलिए जॉय जो है उनको प्रायोरिटी देकर जॉय को भी बैन कर देगा। जो यहाँ पे पिछले 2 मैच से हम लोग देख रहे हैं जॉय बैन होते हैं, लुकास बैन होते हुए देख रहे हैं। इसके साथ जो यहाँ पे शायद लग रहा है कि गाटो जो है यहाँ पे गाटो को भी शायद यहाँ पे बैन कर दिया जाए, क्योंकि या तो हाइलोस को भी, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा इनिशिएट कर सकते हैं हाइलोस। और यहाँ पे हम कैसे भूल सकते हैं हमारी जो 900 साल की बुढ़ी अम्मा जोशी, उनको भी जो है ब्रांड लिस्ट में रखने की जो है सोच सकते हैं यहाँ पे दोनों टीम। डेफिनेटली यहाँ पर डैमेज की बात करें तो ये टाइम लुकस को हटाया गया है, क्योंकि अगर नी स्पोर्ट्स उन्हें पता है कि लुकस के पोटेंशियल क्या है, क्योंकि एसओपी फर्स्ट मैच उनके साथ ही जीत चुकी है। बट ये टाइम एसओपी क्या वो सिसिलियन बैन करेंगे, क्योंकि सिसिलियन बैकलाइन से बहुत डैमेज कर रहा था। जी बिल्कुल, सिसिलियन डैमेज तो बहुत कर रहा था, लेकिन जो स्लू लेने की वजह से या जो एसओपी का जो पिक था उसमें प्रॉपर बैकलाइन जो फिनिशर हीरो होते हैं वो थोड़ा सा मिसिंग था। स्लू कहने के डेस्क के प्रयोग करके सामने जाकर मार तो सकते हैं, लेकिन मुझे बैकलाइन हीरो प्रॉपर देखा नहीं। इसके साथ गैटो जो है, गैटो को यहाँ पे बैन कर दिया गया है, तो यहाँ पे एओजी का जो इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा नहीं। आर्मागेडन का बैन आ चुका है, तो क्या प्रायोरिटी देंगे? फेनी को या बैन करेंगे जुशिन को? यहाँ पे बैन करेंगे जो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हैरिथ को, क्योंकि हैरिथ जो है, अगर मैंने अभी तक जो गेम प्ले में 2 बार हैरिथ लिया गया है दोनों टीम की तरफ से, लेकिन हैरिथ का जो गेम प्ले है वो हमें जो जिस तरीके से डोमिनेट करते हुए अभी तक देखने को मिला नहीं पीछे में। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत जो डैमेज जा रहा है वो भी आर्मागेडन ईस्पोर्ट के हाथ में, क्योंकि उनका जो ग्रेंजर का जो पिक था काफी अच्छा रहा। एंड ग्रेंजर को जो अर्ली गेम का स्नोबॉल मिला उसकी वजह से बहुत अच्छे से उनका गेम स्मूथली चला गया। क्या टीम एसओपी वापस से बैन करेगी, क्योंकि ग्रेंजर भी काफी एक अच्छा बैन होगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, ईटो जिस तरीके से ग्रेंजर गेम प्ले दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रेंजर बैन कर दे तो कहीं ना कहीं उनको जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि यहाँ पे जुशिन फेनी जो है अभी भी ओपन है। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो लोग ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या बैन किया जाए। अभी जो विचार विमर्श चल रहा है तो यहाँ पे क्या यहाँ पे केलिया को उन्होंने बैन किया है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत की सामना ऐसे को करना पड़ सकता है अगर जो ईटो को यहाँ पे ग्रेंजर मिल गया तो। तो डेफिनेटली केलिया जो ओपन था, केलिया को कैसे भी बैन करना पड़ा ये टीम को। और देखा जाए तो थोड़ा बहुत फोर्स्ड बैन था। बट मटिल्डा जो ओपन है, वो मटिल्डा जो ले ले चुके हैं एसओपी ने, क्या करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि मटिल्डा जो ऐसा हीरो है कि बहुत सालों सालों से मेटा पे भी है और वो फाइटर जंगल के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। जी बिल्कुल, माटिल्डा और जो यहाँ पे अल्फा का कॉम्बो बहुत ही अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। प्लस माटिल्डा उड़न खटोला ऐसा हीरो है जो अपने टीम को भी साथ में उड़ा के लेके जा सकता है। जिन हीरो के पास मोबिलिटी होता नहीं उन हीरोज को भी वो मोबिलिटी दे सकते हैं, डैश दे सकते हैं, ताकि उनके जो कभी जो टीम फाइट में एग्रेसिव खेलने की वजह से उनको अंदर भी लेके जा सकते हैं, और अग्रेसिव ज्यादा टीम फाइट में कुछ दिक्कत हो तो उनको टीम को बाहर भी लेके जाने की क्षमता रखते हैं। तो माटिल्डा बहुत ही अच्छा हीरो है, बहुत ही रेयर दिखता है जो हमें देखने को मिलता है माटिल्डा बैन ना हो। और इसी के साथ जो हमें नौजवान की पूरी अमर जोशी फाइनली जो है यहाँ पे बैटलफील्ड पे एंटर करेंगे सुयू के साथ। तो यहाँ पे जो ग्रेंजर को ईटो ने प्रायोरिटी उतना दिया नहीं है, वो सोचे कि अगली जो पिक होगा उसमें वो ग्रेंजर उठा सकते हैं। यहाँ पे हैरिथ बचा है, यहाँ पे ग्रेंजर बचा है, यहाँ पे ईथल बचा है। एसओपी जो क्या है करेंगे अभी फोकस एमएम पे या अल्फा, जो मैं कह रहा था पीछे में अल्फा और ये माटिल्डा का जो कॉम्बो है बहुत ही बढ़िया है। तो हमें एक अच्छा खासा कॉम्बो यहाँ पे देखने को मिलेगा पीछे में। यू नो बैंस की जो बात कर रहे हैं तो काफी अच्छे कर चुके हैं। बट पिक्स की जो हम बात करेंगे, जूशिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम देगा ही। बट देखते हैं ये लोग कैसे काउंटर करते हैं ये जूशिन को, क्योंकि एक बात वो जो है कि एक बार उसकी अगर पकड़ में आ जाती है तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। बट अगर वो पकड़ में नहीं आती है तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आ जाती है।
जी बिल्कुल, दुष्यंत का जो सीसी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हर 2-3 सेकंड के बाद जो उठा उठा कर जो पछड़ मारते हैं तो बहुत ही दिक्कत होता है। इसी के साथ जो है ईटो की मुंह से निवाला छीन लिया गया। ग्रेंजर जो यहाँ पे सिल्वर क्लाउड ने पिक कर लिया, तो क्या लगता है बदले में ईटो जो है यहाँ पे पिक करेंगे विथल या पिक करेंगे यहाँ पे हैरिथ? क्योंकि यहाँ पे दोनों हीरो जो अच्छा खासा ग्रेंजर को डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका गेम प्ले अच्छा हुआ, आपका स्किल लेवल अच्छा हुआ, तो वो आप डोमिनेट कर सकते हैं। वरना ग्रेंजर को अगर स्नो बॉलिंग का मौका मिलता है जैसे कि लास्ट मैच में हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं। इसके बाद हैरिथ को जो है ईटो ने यहाँ पे उठा लिया गया। क्या इस बार ईटो जो है अच्छा खासा गेम प्ले दिखाएंगे इस जैसे पिछले बार दिखाए थे ग्रेंजर के साथ? तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा इस बार, स्पेशली माथिल्डा का साथ। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ माथिल्डा और अल्फा का कॉम्बो जो देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बैकलाइन के लिए उनको कुछ हीरो लेना चाहिए जो बैकलाइन में जुशिन को जाके पकड़ सके, वरना जुशिन जो है मिड टू लेट गेम तक, पूरा गेम तक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है अभी पीछे में। डेफिनेटली क्या होगा देखते हैं, क्योंकि पिक्स तभी अभी जैसे हम वापस बैन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर काउंटर्स तो ज्यादा है ऑन द साइड ऑफ टीम एसओपी, बट उसके साथ ही टीम अमेगन स्पोर्ट्स उन्हें अपना जो अनोइंग हीरोस है, जो गटुटका जो हाईलॉस है, गटुटका चलो निकाल दिया है टीम एसओपी ने, अभी हाईलॉस भी निकाल चुके हैं टीम आर्मेगेडोन स्पोर्ट्स ने। काफी अच्छी बैंस जा रही है, बट एक जो बैन है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही है। वो जो है बैन हो चुकी है वापस, काफी इंटरेस्टिंग बैन है ये तो। जी बिल्कुल, अगर जो है ड्रोन पे जाता है उनका डैमेज आउटपुट जो होता है सिंगल स्क्विशिलो को वजह अच्छा खासा यहाँ पे मार दे सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे आयरन जो लोहे मानव वाले भाई है यहाँ पे जो है बादाम, उनको भी जो है बैटलफील्ड से बाहर जो यहाँ पे रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बैन तो अच्छा देखने को मिला, कुछ अनकॉमन बैन भी देखने को मिला। फोबियस जो है उनको मौका दिया नहीं जाएगा, फोबियस को भी बैन कर दिया गया। आखिरी बैन बचा है यहाँ पे। तो आखिरी बैन की तरफ जैसे ही जाएंगे उसके बाद जो हीरो सिलेक्शन पिक होगा, उसके बाद हम लोग बैटलफील्ड में जाके देखेंगे जो लड़ाई होने वाला है पीछे। हम बहुत ही अच्छा खासा लड़ाई देखने को मिलेगा। इस तरफ ईटो जो है हैरिथ लेके जाएंगे ग्रेंजर की तरफ, ग्रेंजर जो है इस तरफ जाएंगे हैरिथ के ओपोनेंट होके। जो पिछला मैच में जो हुआ था उसका रिवर्स देखने को मिलेगा। सदस्य जो यहाँ पे हमारे जुशिन है बुढ़िया माँ, उनकी जो लेंटेन की जो यहाँ पे जादू जो है चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैच जो है काफी इंटरेस्टिंग तरफ जो एक मोड़ ले चुका है। और यहाँ पे काफी जो है सरामर्श विमर्श किया जा रहा है किसको बैन किया जाएगा। जो हमारे चिप्स वाले भैया है चिप, उनको बैन कर दिया गया है। और चिप जो है मैच की बाहर खाते हुए देखेंगे, मैच में तो बिल्कुल देखने का मौका मिलेगा नहीं। इसके बाद जो फोर्थ पिक है आर्मागेडन स्पोर्ट्स की तरफ से, वो पिक हमें देखने को मिलेगा। क्या लेना प्रायोरिटाइज करेंगे पीछे में, कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? थोड़ा बहुत तो चांसेस दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम तो है, पर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि दोनों साइड में से तो हमें ओ ब्रॉन्ज बाय सीसी के साइड पे थोड़ा बहुत जाते हुए डेफिनेटली अच्छा पिक है। बट एक प्रॉब्लम आता है कि उन्हें थोड़ा बहुत टैंक की पिक चाहिए या तो एक हीलर चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं जो मटिल्डा है, मटिल्डा अब मटिल्डा जो है काफी अच्छी हील करती है फेवर के साथ, और जो थोड़ा बहुत शील्ड रहता है वो बहुत टीम को अच्छी तरह से सपोर्ट मिलती है। तो ये काउंटर करने के लिए क्या ले सकती है टीम आवेगरनी स्पोर्ट्स? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे सीसी जो है हमारे विनिंग लेन हीरो जाना जाता है, तो बहुत ही अच्छा खासा अपनी पिक में कहना चाहूंगा। वो सस्टेन भी कर सकते हैं, उनके रीजन भी अच्छा है और डैमेज आउटपुट भी बहुत ही बढ़िया रहता है। साथ ही साथ जो उनका अल्टीमेट की वजह से दो हीरो को जिस तरीके से चिपक देते हैं रस्सी के साथ बांध के यो के साथ, तो काफी देखने के लायक बात होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अच्छा खासा बैकलाइन अगर जो डैमेज हीरो पिक नहीं हुआ या प्रॉपर एक सस्टेन हीरो पिक नहीं हुआ, तो यहाँ पे एसओपी को जो है थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो उनको अभी अच्छा खासा एक हीरो प्रॉपर लेना चाहिए। इसका जो सिसिलियन जो लेट गेम हीरो की मारा जो चमकादड़ वाले भैया, उनको पिक कर लेंगे। एडिट जो है वो जाएंगे एक्सपी लेन की तरफ। तो कहीं ना कहीं सीसी की अच्छा काउंटर यहाँ पे पिक कर लिया गया एडिट को, वो थोड़ा सस्टेन भी कर सकते हैं। उनके बाद जो है जब डैमेज लेते हैं उसके बाद उनका जब ग्रज फील होता है, उसके बाद जो डैमेज आउटपुट भी उनका मैजिक पेंट्रेशन हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दोनों टीम की तरफ से देखने को मिला। लास्ट पिक बचा है मगर की तरफ से यहाँ पे जे जो है जो जाएंगे आखिरी पिक की तरफ। यहाँ पे सब तो पिक हो चुका है, बच एमएम जो यहाँ पे एमएम का भी हो चुका है, हारिस जाएंगे गोल्डन की तरफ। तो यहाँ पे जो अभी जो है एक टैंक बचा हुआ है, तो टैंक की तरफ क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, ज्यादा कुछ ऑप्शन तो देखने को मिलता नहीं। क्या यहाँ पे जो है हमें शायद ये भी देखने को मिल जाए टिग्रियल, क्योंकि टिग्रियल का जो हीरो है वो चलता फिरता एक सीसी है। तो टिग्रियल पिक देखने को मिला तो एक बहुत ही अच्छा खासा ओम्बो कोम्बो जो हम लोग करते हुए देखने को मिला। लेकिन नहीं, वो जाएंगे यहाँ पे चो के साथ। तो यहाँ पे हमें जो है देखना पड़ेगा चो किस तरीके से जो यहाँ पे गेम को निकालते, किस तरीके से फोकस करते जाते हैं प्रॉपर टैंक बिल्ड। जय जय यहाँ जाएंगे डैमेज बिल्ड पे मार्क करेंगे ग्रेंजर को।
यस मार्क करेंगे सिसिलियन को, ताकि जो है यहाँ पे मार हीरो मार्क होने के बाद उनको डेथ देते तो कोई ना कहीं जो यहाँ पे आर्मागेडन स्पोर्ट्स की तरफ जो है थोड़ा सा गेम का पड़ना भारी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा सा कम आएगा। तो चो का रोमिंग जो है हमें देखने को मिलेगा, चो का जो यहाँ पे द वे ऑफ ड्रैगन जो है, जीत कॉन्डो, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा पिक मैं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे टिग्रियल भी एक छोटा अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता था, जो उनका कॉम्बो लगता तो बहुत ही बढ़िया होता। डेफिनेटली यहाँ पर जो जॉय जो है जे जो उठा चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि जॉहेड बैन हो चुका है, तो मतलब चाव तो ओपन ही था, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत इश्यू आएगा ही। बट देखते हैं, सिसिलियन तो ये टाइम एसओपी के हाथ पे है। जी बिल्कुल, लेट गेम की तरफ से इसलिए तो है, इसका चो जो है जाएंगे टैंक बिल्ड कर, हम लोग आ चुके हैं जो है बैटल लैंड ऑफ डॉन पे। यहाँ पे जो सब लोग जाएंगे अपने खेती बाड़ी की तरफ, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आखिरी जो इस टूर्नामेंट की जो क्वार्टर फाइनल की आखिरी मैच जो है यहाँ पे BO3 का मैच है, उसमें 2-1 जीत चुके हैं आर्मागेडन स्पोर्ट्स, 1 जीत चुके हैं एसओपी। तो आखिरी मैच जो है यहाँ पे डिसाइड करेगा जो कौन जाएंगे सेमीफाइनल की तरफ, कौन जाएगा अपने घर की तरफ। इस जगह सब लोग अपने चल जा चुके हैं अपने खेती बाड़ी की तरफ, स्यू जो है पे फार्म कर चुके हैं, ब्लू बाफ को जाएंगे रेड बाफ की तरफ। सेम देख सकते हैं अल्फा जो उन्होंने भी अपना ब्लू बाफ क्लियर करते हुए रेड बाफ की तरफ जा रहे हैं। इस जगह जो ग्रेंजर यहाँ पे घात बना के बैठे हुए, थोड़ा बहुत पोकिंग चलेगा यहाँ पे। और टॉप लाइन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फाइट हमें देखने को मिल रहा है सीसी और यहाँ पे एडिट के बीच में। जुशिन की जो हेल्थ थोड़ा कम तो है, जुशिन ने अच्छा खासा डैमेज प्रदान किया हुआ है, लेकिन सिसिलियन जो डैमेज की बादशाह है, उनका डैमेज क्या क्या ही कहना। चो की भी जो हेल्थ है यहाँ पे 30% बचा हुआ है, तो चो कहीं ना कहीं शायद पीछे की तरफ जाए तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, वरना अगर इनिशिएट करते हो किसी गलती की तरह से फंस जाता है तो कहीं ना कहीं चो को जो यहाँ पे फर्स्ट ब्लड जो यहाँ पे दे बैठेंगे यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि डैमेज जो आ रही है वो भी जूशिन के हाथ है, तो सिसिलियन को फार्म करने मिल ही नहीं रहा है, काफी अफसोस की बात है। बट चार्ली ब्राउन फर्स्ट ब्लड लेते हुए जी बिल्कुल, इसका जो गार्ड बना के बैठे हुए थे अल्फा, उन्होंने गए थे कोशिश किए थे, लेकिन फ्लिकर का यूज हो गया, तो यहाँ पे जो है बस तो जाएंगे। लेकिन अच्छा खासा इनिशिएटिव हमें देखने को मिला है, फ्लिकर का थोड़ा बहुत जो सॉरी रिकॉल का थोड़ा बहुत शो ऑफ देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट ब्लड लेके यहाँ पे जो गेम का पहला खून का मजा चख लिया गया, तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सुशिन पीछे की तरफ जाएंगे, चो जो है मिडलिन पे रह के कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत जो है मिडलिन को बचा लिया जाए, यहाँ पे जो ज्यादा गोल्ड सिसिलियन को फार्मिंग की मौका ना मिले। यहाँ पे अच्छा खासा गैंग जो है देखने में सीसी आए थे मिडलेन से, लेकिन रिवर कंट्रोल की वजह से उनको जो अपने टॉयलेट की तरफ वापस जाना पड़ेगा मिडलेन पे। सीयू जो टॉप लेन पे यहाँ पे फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो एडी थे वो भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई गैंग हो जाए। माद्रिल्डा फंस चुके थे, लेकिन वो पीछे की तरफ आएंगे। यहाँ पे टर्टल मारा आ चुके हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आर्मागेडन स्पोर्ट्स के पास जो थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि अभी अल्फा जो अपनी ब्लू बाफ की तरफ जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्मागेडन स्पोर्ट्स बिना कोई दिक्कत के टर्टल लेके जाएंगे। सुई को अगर ऐसे फार्मिंग मिलता रहा और स्नो बॉलिंग मिल जाए तो कहीं ना कहीं एसओपी को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे देखिए रिकॉल का जो है शो ऑफ देखने को मिला, अच्छा खासा हाइट जो डोमिनेट किए यहाँ पे रेंजर को, सिल्वर क्लाउड को पीछे बेस में वापस भेज दिया गया। मैं यही बोला था, मुझे यही देखना था कि किस तरीके से जो हेडी थे किस तरीके से गेम डोमिनेट करते हैं, वो जो देखने की मौका पिछले 2 मैच में मिला नहीं, शायद इस मैच में हमें ये चीज देखने को मिलेगा पीछे में। डेफिनेटली आर्मागेडन ईस्पोर्ट्स जो मोमेंटम ले चुकी है अर्ली गेम का, वो काफी अच्छी है, क्योंकि वो लोग अगर गेम मोमेंटम पे खेल रहे हैं तो डेफिनेटली गेम उनके हाथ पे जा सकती है। तो मतलब और जो बेस्ट ऑफ 3 है जीतने का हाई चांसेस है। बट देखते हैं क्या होगा, जस्ट दी अर्ली गेम है। अब तक तो टोटल भी नहीं आ चुका है, आई मीन टोटल हो चुका है, तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मैच तो काफी आर्मागेडन ईस्पोर्ट्स के हाथ पे जा रही है। जी बिल्कुल, अर्ली गेम तो आर्मागेडन स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा, लेकिन भूलिएगा हमारे चमकादड़ वाले भैया जो है लेट गेम के राजा है, उनका जो डैमेज है टैंक को भी 2 बार में जो है यहाँ पे हाफ एचपी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्मागेडन जो यहाँ पे एसओपी जो है उनके पास भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है। यहाँ पे गाद बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो एक अच्छा खासा छोटा मोटा फाइट हमें देखने को मिल सकता है। माद्रिल्डा यहाँ पे विजन दे रहे थे, उनको पता चल गया कि भाई जूशिन जो यहाँ पे आ रहे हैं, जे आ चुके हैं, तो बुश की तरफ जाएंगे नहीं। ग्रेंजर यहाँ पे अल्टी मार के जरूर देखना चाहेंगे कि कौन है बुश की तरफ। चौक है यहाँ पे जो यहाँ पे जीत को का कोशिश किया गया था, लेकिन पीछे की तरफ चले गए ग्रेंजर भाई। माद्रिल्डा पे धीरे धीरे बूस्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा खासा गेम प्ले में देखने को मिला। उनको पता लगा बूस्ट में है नहीं कोई, तो फाइनली बूस्ट में जाके रिवर कंट्रोल जो यहाँ पे अच्छा सा कंट्रोल देंगे यहाँ पे बूस्ट की तरफ जाके। यहाँ पे सुई को देखिए, वो अच्छा खासा यहाँ पे गोल्ड जो है ले चुका है टॉप लेन का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज सुई को बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। इसी तरीके से सुई को गेम मिल रहा है, लेवल 7 पे हो चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं यहाँ पे एसओपी को।
देखो दिक्कत तो है यहाँ पर इमकॉन्ग जो है उन्हें तो पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत और एक्सटेंड किया तो उन्हें पता है कि जो 2 किल्स है उसमें से 2 से 3 हो जाएगा। तो वही बात पे सिल्वर क्लाउड भी थोड़ा सेफ खेल रहा है, बट क्या ये टर्टल टीम एसओपी के हाथ में मिलेगी? कोशिश तो करेंगे यहाँ पे, चो जो है अच्छा खासा कोशिश करें, लेकिन जिस फाइट की हम बात करें, फाइट का आगाज हो चुका है। यहाँ पे अल्फा को जो टर्टल मिल चुका है, एक टर्टल इस तरफ एक टर्टल इस तरफ, दोनों टारगेट डिवाइड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो स्लू का जो स्नो बॉलिंग का इफेक्ट शुरू हो चुका है, डबल किल उन्होंने लिया है, जो फार्म का एडवांटेज है अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर गेम प्ले गया तो एसओपी को जो दबाव बन सकता है उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत मिलेगा। यहाँ पे शायद ट्रिपल किल भी मैं देखा मतलब देखने की मौका मिल सकता है, लेकिन पीछे की तरफ जाएंगे डैश की यूज करके मदरिंडा, उनको सुई को जो यहाँ पे रेड बाफ भी मिल गया, अल्फा को बुलेट टाइटल मिला, लेकिन 2 किल की जैक्सन जो है तो सुई को जो ज्यादा फार्म मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दिक्कत पैदा कर गया। हित का यहाँ पे जमान फोर्स का यूज हो चुका है, वो यहाँ पे टॉप लेन की गोल्ड भी ले रहे हैं। पूरा टॉप लेन की सॉरी बॉट लेन जो यहाँ पे शायद यहाँ पे हमें दे जाने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फॉर्म का डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा ना कहीं दिक्कत हो सकता है यहाँ पे एसओपी को। डेफिनेटली यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि काफी डैमेज आ चुकी है। और चार्ली ब्राउन वापस से और एक ओके स्टन पड़ा है ब्रॉन्ज बॉय के ऊपर, ब्रॉन्ज बॉय बच नहीं पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज थे, टरेट से भी डैमेज देखते हुए। बट टॉप लेन में जे लुक्स लाइक टीम यहाँ पर देखिए जी कितना अच्छा जो यहाँ पे जमान फोर्स का उसके काउंटर्स की वजह से जो ग्रेंजर को यहाँ से निकाल देगा। अल्फा पीछे की तरफ जाएंगे, उनको पता है अगर 1 वर्सेस 2 करते यहाँ पे तो जो है मौत के सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिट जो है यहाँ पे बूस्ट पे जो विजन प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन कहीं ना कहीं गेम जो है अभी बी अर्मागेडन स्पोर्ट्स के हाथ में है। अल्फा जो यहाँ पे अच्छा खासा कोशिश किया, जेजन है वो जो यहाँ पे इराकों जो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे किल लिए, टर्रेट भी निकाले। टर्रेट का बात करें तो दोनों तरफ से टर्रेट जो है एक और एक टर्रेट दोनों निकल चुके हैं। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मिड लेन का टर्रेट, क्योंकि मिड लेन का टर्रेट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्रेट होता है। जो जंगल होता है, जंगल जो स्पेस होता है ज्यादा खाता अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। यहाँ पे चेक किया जा रहा है बुश की तरफ से, सिग्नल की तरफ से कि भाई यहाँ पे कोई छुपा तो नहीं है। चौक हाथ बना के बैठे हुए यहाँ पे थोल लेन की तरफ की कोई आए और उनको पकड़, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत कहने का दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे अच्छा एडिट को अच्छा खासा पकड़ लिया गया, एडिट अपना अल्टीमेट यूज करेंगे। यहाँ पे सीसी जो अपना अल्टीमेट यूज से पकड़ चुके हैं, सीसी लिए सीसी को यहाँ पे किल मिलेगा एडिट का। चौक अच्छा खासा जो गेम प्ले हमें आउट प्ले देखने को मिला है। एडिट को मैंने लगाया था कि यहाँ पे जो एडिट कोई मतलब डेथ की सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मौत के सामना करना पड़ेगा को। इसका स्यू जो है फोकस करेंगे टर्टल की तरफ, क्योंकि इस बार उनको टर्टल चाहिए और टर्टल कोई बिना झिझक के भी ले भी लेंगे, क्योंकि अल्फा जो अभी बॉट लेन की तरफ जाके पुश की तरफ थोड़ा सा प्रायोरिटाइज देना चाहेंगे। काफी डैमेज है टीम आर्मागेडन नीड से, बट 1 for 1 ट्रेड जैसे हम जब देख पा रहे हैं। एंड बॉट लेन पे अल्फा आई थिंक टाइम पे रिकॉल मार देंगे, बट प्रॉब्लम है कि बॉट लेन थोड़ा बहुत अनअटेंडेड है, तो बॉट लेन का जाना काफी हाई चांसेस है। जी बिल्कुल, रिकॉल मारने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन रिकॉल जो मार के पीछे की तरफ चले तो गए, लेकिन बहुत ही अच्छा गेम प्ले सीसी की तरफ से देखने को मिला। मिड लेन का टर्रेट जो मैं बात कर रहा था, मिड लेन का स्तंभ जो है टूट चुका है। बॉट लेन पे उतना प्रायोरिटाइज रखता नहीं, आपको हमेशा प्रायोरिटाइज देना है मध्यम स्तंभ को। इसके बाद यहाँ पे जो है अल्फा पे जो गैंक होने वाला है, यहाँ पे पोक कर रहे हैं सीसी, तो अल्फा को पीछे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है अभी फाइट लेने जाएंगे तो यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। इसका जो ब्लू बफ पे यहाँ पे हल्ला बोल दिया गया है, अल्फा आएंगे कोशिश करेंगे ब्लू बफ को लेने की, लेकिन कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है की तरफ होने की वजह से थोड़ा सा फाइट में जो दिक्कत आ सकता है। सारे के सारे टीम मेंबर जा चुके हैं। यहाँ पे अल्फा को जो है बफ तो मिल गया है, जो जंगल फाइट था यहाँ पे ब्लू बफ का वो अल्फा जीत चुके हैं। जो फिर से उसी जगह पे जाके बैठे हुए कि कोई तो आए इधर से, कोई आएगा तो मैं यहाँ पे अपना जो है वे ऑफ द ड्रैगन का यूज करूंगा, इसका जो है कील जो है यहाँ पे टीम को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा खासा जो है जेजी की जो गेम प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिला है। दोनों टीम की जो है यहाँ पे गार्ड बना के बैठे हुए जो है अच्छा खासा प्रायोरिटाइज विजन दे रहे हैं यहाँ पे कि कौन किस तरफ से जा रहा है, किस तरफ से। इसका जो टॉप लेन का दूसरा स्तंभ वो भी टूट यहाँ पे हमें टूटने को देखने को मिल गया है। ग्रेंजर कोशिश कर रहे थे बॉट लेन की तरफ जाके जो है टार्ट को पुश करे, लेकिन सुयू जो यहाँ पे आकर रोक देंगे, मिनियंस क्लियर कर देंगे। तो बॉट लेन को अच्छा खासा यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं हमारा कि कोई भी जो टर्रेट है हमारे सब तरह से बचा रहे, ताकि हमारा मिनियंस का जो दबाव जो है वो हम पे कम रखे। इसका जुशिन का जो स्किल का प्रयोग मैं बोला था यूज हो गया है, यहाँ पे अल्टीमेट का यूज हुआ है, सीसी ने दोनों को फंसा लिया गया। तो यहाँ पे एक किल था देखने को मिला, अल्फा ने यहाँ पे सीसी का किल ले ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे सीसी। इसका जो यहाँ पे जो आपका हिसाब जो यहाँ पे देना पड़ेगा सीसी को। जुशिन का जो लाइफ कम है, उन्होंने अल्टीमेट का यूज करके पीछे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे 3 वर्सेस 4 होने की जो यहाँ पे देखने को मिला, जामन फोर्स का यूज हुआ है, लेकिन हाइट कुछ कर नहीं पाएंगे। पीछे की तरफ तो गए वापस, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है जो धीरे धीरे एसओपी जो वापसी आ रही है गेम पे, लॉर्ड शिप शंभू आ चुके हैं। इस बार अगर कोई जो भी टीम लॉर्ड लेगा थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा टर्रेट पुश करने का। अगर अनवर स्पोर्ट्स को लॉर्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं जो टर्रेट जो नीचे के बचे हुए हैं और मध्यम स्तंभ जो बचे हुए एक टर्रेट जो शायद यहाँ पे गंवाना पड़ सकता है पीछे मैम।
डेफिनेटली यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि आमेर स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत वो जो मोमेंटम था वो थोड़ी बहुत दे रही है थोड़ा थोड़ा, बट एट द सेम टाइम टीम एसओपी भी अपना टीम फाइट्स है थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि बॉटम लाइन में थोड़ा बहुत ज्यादा डैमेज है थैरेट बचते हुए। जी बिल्कुल, चो जो यहाँ पे जो है अच्छा खासा तो कोशिश करेंगे, लेकिन मथिल्डा उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं। वो गया था अपना अल्टीमेट केस करते, लेकिन ये इसका खामियाजा भुगतना ना पड़े, वो अपना डैश केस करते पीछे की तरफ आएंगे। लेकिन सुई को देखिए, चार्ली ब्राउन का गेम प्ले देखिए, वो जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो छोड़ नहीं रहे, कंटिन्यूसली पुश कर अपने टारगेट बचा रहे हैं। टीम फाइट में पार्टिसिपेंट कम जरूर करे, लेकिन उनका जो माइक्रो गेम प्ले हमें बहुत ही अच्छा खासा, उनका जो डिसीजन जो है देखने को मिल रहा है कि भाई कुछ भी टारगेट जाने मत, टारगेट रहेगा तो हमारा एडवांटेज बहुत ही ज्यादा होगा। इसका शिव शंभू जो अभी आगमन होने वाला है बॉट लाइन की तरफ से, शिव शंभू आएंगे तो कहीं ना कहीं एसओपी को जो है यहाँ पे भारी जो यहाँ पे मुकाबला जो है भारी मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ उनको अगर सेफ खेले नहीं, या फिर अगर ग्रेंजर को जैसे पहला मैच में स्नोबॉलिंग ईटो ने दिखाया था वो मौका मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमें एसओपी की तरफ से दिखने को मिल रहा है। मिड लेन की तरफ हाईली जो यहाँ पे जो हैरी जो जाएंगे, मिड लेन के स्टंप बचने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। इसके साथ मिड लेन का स्टंप जो है डैमेज लेते हुए भी यहाँ पे तो तोड़ गया है। और लॉर्ड बॉट लेन की तरफ से प्रधान रहे, तो टॉप लेन पे सूर्य जो फोकस करेंगे, ताकि बॉट लेन से लॉर्ड आए तो सारे के सारे लोगों को बॉट लेन की तरफ जाकर लॉर्ड को बचाना पड़ेगा। इसी का जो फायदा लेके यहाँ पे मध्यम स्तंभ या जो बॉट लेन का जो टॉप लेन का जो टर्रेट है उसको भी यहाँ पे तोड़ने की जो चांसेस ज्यादा बन चुका है। यहाँ पे एक अच्छा खासा गैंग जो है शायद हमें देखने को मिल सकता है अगर कोई हीरो अंदर की तरफ जाए। इसके बाद लॉर्ड जो हमें जा चुके हैं वापस, वो आएंगे कुछ देर में फिर से अपना रुद्र रूप लेके, तो यहाँ पे एसओपी जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे डिपेंड होने में जो सक्षम हो चुके हैं बेस को, लेकिन दबाव जो है अभी कम हुआ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे डेफिनेटली डैमेज तो बहुत है बॉट लेन में, थोड़ा बहुत प्रेशर हमें दिखते हुए यहाँ पर वेंजेंस भी हो चुका है अपने सीसी के हाथ से। अभी देखा जाए तो प्रेशर तो ज्यादा ही है, नहीं तो बिल्कुल। इसके साथ जो धीरे धीरे ग्रेंजर का गेम प्ले हमें देखने को मिला, जिस तरह से पोकर है डबल किल को मिल रहा है, वही ग्रेंजर का गेम प्ले में बोल रहा था कि जो ग्रेंजर जो उनको प्रॉपर मिलता है, लेकिन सू कहीं पीछे नहीं है, उन्होंने मेगा किल उठाया लेकिन वो कोई दिक्कत में ना था, डबल किल मिला है उनको। अगर स्नोबॉलिंग का जो मौका मिला उसके वजह से शायद हमें ट्रिपल किल या मैनियक भी देखने को मिल सकता है। आगे तक जाएंगे, या तो सीसी ने किल ले लिया, लेकिन शू को शायद ट्रिपल किल मिलेगा जी, बिल्कुल शू को ट्रिपल किल मिला। चो का जो गेम प्ले है वो अच्छा खासा सपोर्ट करे, लेकिन सुई का गेम प्ले का क्या ही करना। चार्ली ब्राउन जो यहाँ पे अपने आप को चार्ली का जो है बादशाह बनाते हुए यहाँ पे गेम प्ले दिखाई, इसका जो टर्रेट है यहाँ पे बेस है उस पर हमला बोल दिया गया है। जो गए थे अग्रेसिव करने, ट्रैच की डैमेज की वजह से जो है उनको जो है मौत का सामना करना पड़ा। यहाँ पे देखिए अपने बेस की तरफ से बाहर फेंक के एडिट को जहाँ पे मौत की जो है यहाँ पे मुकाबला करना, मौत की सामना करना पड़ा। यहाँ पे बेस की तरफ नहीं, बेस के बाहर फेंक देगा। किस तरीके से कॉन्फिडेंट जो चार्ली ब्राउन का यहाँ पे देखने को मिला। ग्रेंजर यहाँ पे किल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीसी अल्टीमेट केस करके पीछे की तरफ जाएंगे तो अच्छा खासा जो ग्रेंजर गेम पे दिखा, लेकिन जो सपोर्ट हमें प्रॉपर देखने को मिल नहीं रहा। कहना कि जो है टीम फाइट जो हो रहा है उसमें ज्यादा एडवांटेज आर्मगेडन स्पोर्ट्स की तरफ से, क्योंकि सुई को प्रॉपर स्नोबॉलिंग मिल चुका है, तो उनका डैमेज आउटपुट जो बहुत ही ज्यादा होने वाला है अभी। That's true. यहाँ पर जैसे हम देखा जा रहा है कि बेस की तरफ बहुत क्लोज है, बट बहुत दूर भी है। अभी जो लॉर्ड आने वाली है बहुत बॉटम लेन से तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि बॉटम लेन का जो इनहिबिटर है वो तो हमें दिख नहीं रहा है। क्योंकि एक बात है कि आर्मगेडन स्पोर्ट्स जो मोमेंटम अपने हाथ पे रखी है ना, वो मोमेंटम के साथ काफी अच्छे से खेल रही है। बट चार्ली ब्राउन उसका जो स्कोर है 7-0-1, इसे कौन शट डाउन करेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बोलता ही रहता हूँ हमेशा कि सुई को स्नोबॉलिंग का मौका मत दो। सुई को स्नोबॉलिंग का मौका दिया तो स्नोबॉल करते करते तुम्हें फ्रीज करके जो गेम खत्म करने की कैपेसिटी पेज का लॉर्ड भी ले लेगा। शिव वो फिर से आ रहे हैं बॉट लेन की तरफ से, तो यह जो मुकाबला है थोड़ा सा टफ पड़ने वाला। अगर वाइप आउट होते या 3 हीरो भी उनका जो है एसओपी का डेथ हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होना। लेकिन आप ये भी देखिए 13 मिनट हो चुका है, अभी जो है मुझे लगता है यहाँ पे सिसिलियन का स्टैक अच्छा खासा हो गया होगा, उनका डैमेज आ जाना चाहिए। अगर अभी सिसिलियन कुछ कर नहीं पाते तो गेम रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है एसओपी के लिए। इसके बाद जो मिनियंस है तो दोनों तरफ से आ रहे हैं, लॉर्ड आ रहे हैं जो बॉट लेन की तरफ से, यहाँ पे एक फाइट देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जावन फोर्स का यूज कर लिया गया। यहाँ पे एडिट का जो है मौत का सामना करना है, बेस की तरफ वापस भेज देगा। यहाँ पे शायद जो है चोक को फ्लिकर मार के पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन बेस को बचाना मुश्किल नामुमकिन है। इसके साथ जो है मगर इस पे ले गए अपने दूसरे मैच। एक मैच से भले हारे, लेकिन 2 मैच में ऐसा गेम प्ले दिखाया कि क्लियर जीत के ले गए। इसका जो एमागोडन स्पोर्ट्स है वो जाएंगे सेमीफाइनल की तरफ। एसओपी को इस मैच में जो है करना पड़ेगा अलविदा। अगले टूर्नामेंट पे आएंगे, अगले टूर्नामेंट अच्छे से गेम प्ले उनको देखने को मिलेगा। इसके बाद कांग्रेचुलेशंस एमागोडन स्पोर्ट्स, आप जा रहे हैं सेमीफाइनल की तरफ से। कुछ कहना चाहेंगे पीछे में इस बारे में? क्या ही मैच देखने मिला,
दोनों के दोनों तरफ से बहुत अच्छे से खेला गया है, बट इतना आगे बढ़ते हुए भी, लाइक डैमेज देते हुए भी टेसासिलियन और ग्रेंजर को फार्म नहीं मिला। वो एक अच्छी बात है जो हमें देखने मिला, एंड इसी कारण टीम आर्मेगेडॉन ई-स्पोर्ट्स जीत चुकी है। जी बिल्कुल, इसके साथ मैं उज्जैन, मेरे साथ थे मेरे को कास्ट है पीछे में, हम लोग लेंगे विदा, मिलेंगे फिर से अगले तो इस टूर्नामेंट के अगले मैच में। और आप लोग ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, इस टूर्नामेंट पे आइए, हम लोग को ढेर सारा प्यार दीजिए और लेते हैं हम लोग विदा। गुड नाइट।